होगी होगी। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? गाइस एक्चुअली आप लोग कह रहे हो मैं लेट हुआ, लेट नहीं हुआ। मेरा पता नहीं स्ट्रीम स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। मैं कम से कम 15-20 मिनट से ट्राई कर रहा हूँ, क्या दिक्कत आ रही है, बट स्टार्ट ही नहीं हो रही थी स्ट्रीम। पता नहीं क्या रीजन था, कोई नहीं, बट आ गए हैं गाइस फाइनली। बिक्सी भाई मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, थैंक यू आरिफ भाई। तो गाइस आज मैं आप लोगों को बता दूं, इंडिया के फाइनल से स्टार्ट हो चुके हैं। मतलब ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप चल रहा है, अभी तुम्हें पता ही होगा। तो उसमें इंडिया की 2 टीम्स थी, दोनों की दोनों फाइनल्स में क्वालिफाई हो गई हैं। और अभी आज डे 1 है, 3 दिन तक ये टूर्नामेंट चलने वाला है। और 14, 15, 16 तो देखना है कि गाइस हमारी जो टीम है वो डे 1 में कैसा परफॉर्म करती है। और मैं तो चाहता हूं भाई इस बार इंडियन टीम ही जीते। चलो But that's fine. Glitter, with our CC update, is going to interrupt and on standby to bring us the club championship update. मैक्स भाई, हितेन भाई बताओ As यार, we head into क्या finals for लगता है Pubg Mobile, इंडियन टीम and as जीतेगी we कि नहीं prepare for the जीतेगी? penultimate जीतेगी। championship weekend जीतेगी here ना? at EWC, as is 100% tradition, जीतेगी। it's time for another club championship update because this is what all of our Guys, clubs Discord की are आवाज आ रही है ना आप fighting लोगों for. को? The title, OG gold the like. honor, the ability to etch their names in the history books of EWC. Guys, let's आप लोगों को talk Discord about की what आवाज आ that रही है कि नहीं आ रही है? means for Chat. this weekend. Over on the Allianz Vault, Chat we आवाज आ have रही the है, likes बताओ। of Liquid, Falcons, कितने मैच होंगे? AGAL, हर दिन all 6 मैच होते fighting हैं। for points in their respective games, and honestly, they're going into semifinals today. Whittling it down to top 4, it's going to be a big one. Then at the STC Arena, a little bit of a repeat here because we also have Falcons in the running, and we're also keeping our eyes on Vitality, which could be a big one, as Vitality is in 4th overall in our STC leaderboard. But as we take a look towards our stage at Pubg Mobile, we get Vitality yet again. They are one of our big teams expected to Recharge do में well, but the real question is, खत्म होगा? will the likes Recharge of में खत्म होगा? Fortress, क्या कह रहे हो? Orangutan, समझा or नहीं even मतलब। Tiamba take those points away from them? Will Vitality be able to usurp Falcons or AGAL? This is the perfect कितने देर weekend में होगा ये? opportunity Start? for them to हो do so. जाएगा, We're अभी going to start have हो a lot जाएगा। of updates coming your way जल्दी हो over the next जाएगा। couple days, and as we know 15-20 more, मिनट of में हो course, जाएगा we'll make start। sure to let you know. Thank you to our special reporting, being able to cut class and just do that CC update. Thank you, Glitter. But we gotta talk about Sony's story of the day here because this is the finals, and there's some teams, Lace, that have just been outperforming like crazy. Vitality being one of those. Of course, मैं आपकी पुराने वाली अपडेट की ही वीडियो देख रहा था तब तक कि आपकी नोटिफिकेशन आ गई। मैंने आपकी स्ट्रीम खोलकर आपको मैसेज किया। ओके नाइस यार, मतलब नई वीडियो नहीं आई तो पुरानी भी देख रहे हो। नाइस। वैसे यार देखो, मेरी पुरानी वीडियोस भी अच्छी है। मैंने हमेशा से वीडियो ऐसी बनाई है कि तुम अगर 1-2 साल पुरानी भी देखोगे ना, तुम्हें 1-2 साल पुरानी वीडियो में भी मजा आएगा, बल्कि 3 साल पुरानी वीडियो में भी मजा आएगा। मेहनत ऐसी करी है वीडियो में हर बार, तो तुम देख सकते हो, मजा पूरा आएगा तुम्हें वीडियो में। Maybe we'll get a chance to talk to him later on, but we do have some more special reporters, none other than Maxman and Aventura. Let's see what they're up to. And here we have it. We are here at the Analyst Corner for some good old PMWC 2026 at EWC 2026 breakdown. And I'm going to be joined by some co-analysts here to break down everything that might be happening this fall. भाई वो लड़का तो पीछे पेन लेके खड़ा है भाई। Michael Niptura Jackson right here Strike at the stage. How are we doing, Niptura? Very well indeed. I'm not going to do what you wanted me to do. I'll save that for later. I'll save that for later. But for now, yeah, we're looking very good. Excited for the finals. We all dressed up for the occasion. We are ready to go. Yeah, with that said, looking at the teams, I know that Niptura, you really want to jump in on. पेम को पेलोगे की हो गया। देखो यार, मेरे को किसी को पेलना मिलना नहीं है। बात ये है कि मेरे को बस अपना पॉइंट रखना था। सामने वाले ने बहुत फालतू बातें करी थी अपनी वीडियो में, मैनिपुलेट किया था, तो मैंने आप लोगों को जो था वो दिखा दिया। अब मैं फालतू चीजों पे ध्यान नहीं देने वाला। मैं अगली वीडियो भाई डालूंगा गेम प्ले की। अब सामने वाला अगली वीडियो में फिर कुछ झूठ वूठ बोलता है तो तुम लोग समझ जाना भाई। तुम लोगों को मैंने पिछली वीडियो में भी दिखा दिया था। अब मेरे पे इतना टाइम नहीं है कि भाई मैं वीडियो खेलूं, राइट? And the back-to-back wins on Miramar and Rondo over the span of both days was just really nice. I really enjoyed how they've been playing. मेन चीज गाइस अपना काम है गेम प्ले वीडियो डालना, क्लचेस डालना, उसी में हम अच्छे हैं, वही चीज करेंगे। फालतू हेट पे, फालतू लोगों पे ध्यान नहीं देना गाइस। सेम ड्रॉप ऑन मिरामार, ओजी और गोडल। यार दोनों ही टीम को बराबर
सपोर्ट है यार। फेवरेटिज्म यहाँ पे नहीं करेंगे गाइस। Oh no! Oh, didn't work. Okay, wait. Right, time to. Okay, wait. We're gonna do it one more time. Yeah. Vitality! Hey! So Vitality, what are we thinking, Blank? Hi there, my name is Blank, special reporter coming in for Vitality so far, doing incredibly well. Razy and Razak, my boy Ray, as well as Federales and Axel, looking fantastic at the moment. I think Axel's been in a huge... भाई ये टूर्नामेंट के बारे में बताओ कितने मैचेस होंगे, विनर्स कैसे डिसाइड होगा और कितने पॉइंट्स चाहिए। देखो पॉइंट्स के लिए ऐसा होता है जो सबसे ज्यादा पॉइंट स्कोर करेगा ऑब्वियसली वो जीतेगा। तो ऐसा कुछ ये नहीं है कि इतने पॉइंट कर लिए तो जीत गया, ऐसा नहीं है। और मैचेस इसमें पर डे 6 होते हैं, 3 दिन का टूर्नामेंट हो गए, तो टोटल 18 मैचेस। Can we see something similar going into this one, Black Mr. Vitality? 18 मैचेस होंगे ना मैक्स भाई? Yeah, I do think that bigger. I mean, Vitality is going to do. अबे वाइटैलिटी भाई बहुत खतरनाक टीम है भाई। गाइस वाइटैलिटी जो टीम है ना भाई, इन्होंने एक मैच में 29 किल निकाले थे सिंगल मैच में भाई। भाई वो वाला मैच काफी क्रेजी था भाई। बहुत खतरनाक टीम है भाई ये वाइटैलिटी। एक दिन में इतने पॉइंट्स कर लिए कि सेकंड डे भाई कोई कमबैक ही नहीं कर सकता। हाँ इन्होंने फर्स्ट डे में ही इतने पॉइंट कर लिए थे कि सेकंड डे भी कोई नहीं कर पाया था भाई। जो इनका ये रेज़ाक करके बंदा है ना, रेज़ाक करके जो इसमें नंबर 2 है, ये बहुत खतरनाक प्लेयर है ये, जो सबसे लेफ्ट वाला है। वो तब भी क्वालीफाई वाले मैचेस थे, आज देखना है भाई। हाँ भाई आज देखना है भाई, आज देखना है भाई। आज तो मेन मैचेस है यार। 16 में से 2 टीम्स भाई अपनी इंडिया की टीम्स हैं। ये सबसे प्राउड मोमेंट है भाई। कुछ भी हो जाए इंडिया में ही ट्रॉफी आनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। टोटल कितने मैचेस है? 18 मैच होंगे टोटल। PMWC 2026 champions. Now, we already talked about one of the Indian teams. I think it's time to focus on the other Indian team, which is going to be Orangutan. बढ़िया बनाया भाई। You already talked about them for Blank. What are we thinking today? You know what? I think Orangutan for them. I think right now they're looking very, very good. I think a lot of the emphasis though has to be on Aru though. I got to talk to him a fair few times this event. Lovely guy, by the way. Really, really lovely guy. Great chatter. I mean, I talk a lot. I talk a lot, you see. And I think that's sometimes a problem for other people. But for Aru, क्या होता है? I could just sit बहुत बढ़िया and होता listen to है। him all day. But he's bringing a lot of the eliminations. He's also bringing a lot of the guidance to the squad. Now, there were a couple of moments. I think we're actually seeing on screen now one of those moments, which was a little bit difficult right now for Orangutan. They moved up on this. हैप्पी बर्थडे बिक्सी ब्रो। मेरा बर्थडे कब आ गया भाई? कब आ गया मेरा बर्थडे? अभी अगले महीने है यार, अगले महीने बोलना। I think that they solved a lot of the issues coming after that. But yeah, I do think the rest of the team needs to develop around Aru, essentially. Yeah, I think Aru's got some great ideas and he's got some great direction. It's just that synergy that has to come through. I think probably there's a little bit of, I don't want to say the word panic, that's a very strong word, but when you are in these high pressure situations, it's your first PMWC, whatever, you are going to go, oh my god, they're everywhere, and you're going to have a little bit of a freak out, and they've really मैच टाइमिंग क्या है? अभी स्टार्ट होने वाला है ब्रो, स्टार्ट होने वाला है। Yeah, it is looking really, 5-10 really मिनट nice वेट for कर them. लो। So very, very hopeful for this squad to actually do big things here. Yeah, very hopeful. We'll see how high they can actually rank up in the finals. But with that said, a final team I'd like to talk about here, which is actually the team I predicted to be the champion. So I'm sorry guys, but I'm going to go for Team Flash. Team Flash, I think, is a team that has been getting better. Spidey भाई stream पे आवाज आएगा, ठीक है ना? Every time we see them play, and I feel like now they're level, Black, where maybe the trophy is in the cards for these guys. Womp womp. Wait. Predicted by Max. Womp womp. Sorry. So they're going to be in 16th place. Yeah, probably. To be fair though, for Flash, I think that they did quite well, all things considered, because last time we saw them this year, they looked fairly unconvincing. They looked scared. They looked like they didn't have it in them from what was basically a rookie upstart squad who were testing a lot of other squads, right? Poking at them, nipping at their heels. They suddenly play this really passive game. I think some of that aggression's coming back now, and that's good news going in towards the finals. Yeah. यार बस दोनों टीम्स आपस में ना भिड़ जाए भाई। देखो इसमें ऐसा होता है, इसमें ना जब फाइट चल रही होती है ना, दिखाता नहीं है कि सामने कौन सी टीम है, समझ रहे हो? टीम के नाम नहीं दिखाता वहाँ पे, टीम XYZ, प्लेयर XYZ ऐसे आता है, समझ रहे हो? कॉम्पी में ऐसा होता है। तो अगर वो दोनों आपस में फाइट करेंगे भी तो उनको पता नहीं चलेगा।
जब वो बंदे फिनिश कर देंगे उसके बाद पता चलेगा। तो टेंशन मत लो यार, फाइट हो ही जाती है। अब सेम मैच में हो भी जाएगी फाइट, क्या दिक्कत है, कोई नहीं। Every player has that clutch factor, and it's especially interesting. They go from PMGC last year to qualifying because of an airdrop on Miramar, barely able to squeak their way into the finals. So now, actually being a team that consistently are able to qualify straight into the finals of these big international events. So Flash, I feel like, could be a big surprise, especially as they picked up the mantle of Deep Xavier earlier this year, right? Yeah. Could be. Could be happening. Also, last thing, chicken. Whoa, chicken right there. There you go. Check him out. He's very cool. Check out the booth right here at EWC 2026. With that said, thanks so much for joining the analyst corner here for PMWC 2026. We'll throw it right back to Lace and 7WG. Yes, thank you so much to our special reporters, Max and Neptura. I don't know where we got the budget to fit Blank in there. I thought we spent it on him saying vitality 100 times. Bro, आपकी क्या prediction है? मुझे लग रहा है गॉडेल और ओजी इन दोनों में से एक टीम टॉप 5 तो कंफर्म है, कंफर्म बता रहा हूँ मैं तुम्हें। टॉप 5 या टॉप 3 भी आ सकती है। टॉप 5 तो बट कंफर्म लिख के ले लो तुम मुझसे, मैं तो बता रहा हूँ। फर्स्ट भी आ सकते हैं, जीत भी सकते हैं, लेकिन मैच देखे बिना बता रहा हूँ मैं तुम्हें, टॉप 5 तो आके ही रहेंगी, ओजी या गॉडेल में से कोई भी एक। For PUBG Mobile here at PMWC, and a major problem has occurred. It seems we've let one of our commentators out in the wild here, and we've got to actually wrangle him and get him back in. So it looks like maybe a little bit of movements going on here actually. क्या चल रहा है भाई ये? Going to be able to capture him. This is the problem with पता नहीं भाई, इनका तो लगे commentators. A lot of चलता the है। times they just go wild. पता मैं स्ट्रीम पे आवाज आ रही है। He's on the move. He's on the move. Okay. No, we've actually got to be able to try and find him as quickly as possible here. ये क्या चल रहा है भाई? I'm not exactly sure if we're going to be able to. मुझे भाई भी ऐसे ही कर रहे थे भाई। पकड़ लिया भाई बेचारे को। You can see. बस गया वो। He's dangerous. ये अपना ही खेल रहे हैं। He has a microphone already. That means he's actually ripe for the commentator desk already. They might be able to actually catch पीछे him. नारुतो है भाई, नारुतो। A little bit. I don't think he's very interested in it, but he might take to it. Let's see if we can place down बस गया भाई। or something like सासुके that. बचाएगा इसको, Something सासुके। actually might be able to work. साइड में खड़ा है सासुके। Usually chicken dinners are the prime meal of a commentator here for PUBG वाइटलिटी Mobile. कहाँ की टीम है? वाइटलिटी रशियन टीम है शायद ना? कहाँ की टीम है गाइस? चैट बताना। कहाँ की टीम है वाइटलिटी? It looks रशिया या फिर यूक्रेन की है शायद They से। might have it. They might have the John Allen. It looks like पकड़ लिया भाई इसको Did तो। you see that? Get a close पकड़ लिया। 1v2 हो गया, 1v2 हो गया भाई। अरे भयंकर उठा दिया बे। Unbelievable scenes here at पूरा PMWC. 2v1 हो रहा है। Oh, that was close. नॉक कर दिया यार इसको तो। As an Australian, I would have caught him a lot faster. आई थिंक रशियन टीम है भाई, मुझे भी वही लगा, रशियन या फिर यूक्रेन की टीम है। This man was on a lose. We weren't able to find him yesterday during the day off. इंडोनेशिया And I'm की है just भाई। not able to अच्छा set अच्छा the अच्छा bait to अच्छा, actually इंडोनेशिया की है। ओके Absolutely, ओके he ओके। needs to lock in just as much as our players, 7. They really do, because there is an alert right now going on, and that is that the players are ready. We are ready to rock and roll here at PMWC at EWC 26. Ladies and gentlemen, this is the finals, baby. बालक I'm बुद्धि ready. कहाँ गया? मुझे क्या पता यार कहाँ गया यार। मत लिखो भाई ये सब, छोड़ो। इग्नोर गाइस, इग्नोर। ऐसे लोगों को इग्नोर। मैंने आप लोगों को वीडियो के लास्ट में यही बोला था कि छोटी मोटी चीजें होती रहती है, छोड़ो, इग्नोर मारो। हो गया भाई, हो गया, मैच स्टार्ट हो गया। 20 सेकंड में मैच स्टार्ट है। 20 सेकंड। Let's go guys. स्टार्ट हुआ नहीं है क्या भाई? इन्होंने टाइमर तो ऐसे चलाया जैसे होने वाला हो। मैं रेडी हो गया भाई। ये किस चीज का टाइमर चल रहा था? आई गेस अभी प्लेयर्स के नाम है, अभी प्लेयर्स टीम्स वगैरह का आएगा। वो तो आ गया ना, बट वो तो पहले आ दिखा गया दिया है। है। हाँ क्योंकि सामने बैठे हुए दिख तो नहीं रहे प्लेयर्स। हाँ कोई प्लेयर्स आ ही नहीं है, प्लेयर एंट्री होगी शायद से। Barney, I think we don't have to wait. The players looks really ready, and it is time for us to welcome our finalists on the Guinea City grid, starting with Arena. अभी होगा स्टार्ट। वो भाई ऐसा कर दिखा रहे थे, स्टार्ट हो गया लग रहा है।
किसके डिस्कॉर्ड पे हो? अपने डिस्कॉर्ड पे ही हूँ पल्लव भाई। पल्लव तुम एक काम करो, किसी भी डिस्कॉर्ड पे मेरे डिस्कॉर्ड में किसी भी वॉइस चैट में आ जाओ, मैं तुम्हें ड्रैग कर लूंगा। S2G Esports. Enigma Galaxy. स्ट्रीम की साउंड बढ़ाओ प्लीज एंड अपनी माइक की थोड़ी धीमी करो। ऐसा है क्या? एक सेकंड रुकना फिर। Team Flash. Godlike Esports. देखो अभी आवाज ठीक है क्या? Aurora Gaming. Ida Esports. Orangutan. चल क्या रहा है ये चल रहा है भाई टूर्नामेंट, ई-स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप। Team Vitality. And finally, 4Thrives Esports. We can't emphasize enough the importance of the next 3 days. On Sunday, we will crown the greatest team in the world. So start as you mean to go on. Absolutely no room for mistake. If you want to be the best team in the world, you need to prove it from the very first day. The PMWC finals at EWC 2026. मैंने किया हुआ है ब्रो, किया हुआ है। आज मैं थोड़ा अलग लेंस यूज कर रहा हूँ कैमरे में, पहले अलग लेंस था तो भाई Players from बहुत तगड़ी all फाइट्स होने वाली है corners आज of the तो। world laser focused on one thing: the title of PMWC champion. भैया स्ट्रीम में Fight साउंड कम smarter, है, साउंड तो adapt बढ़ाया था यार faster, मैंने। and deliver अभी भी when the कैसे pressure कम is at its peak. That is what it takes to keep this dream alive. So welcome to the PMWC at EWC 2026. And RRQ are looking to do it here. Pushing up close and personal. Milo with the nade! Turning the tables! And he's doing this all by himself! It's Oh, the भाई क्या मारा है बे इसने मिलू ने? 1v4 from Milu! Let's put the 11th on the board. Looking for TZ. Is it a self-denial? It might be. Get to double digits on the And elims that's and it. burn yourself down to the ground. What a shutdown. 108 points in 6 matches. Nate misses, Darkin peaks. That's on target. Headshot. Good shot. Follow up there. Oh. HG takes him away as Turney K falls. Mormon closes भाई the ये gap तो with the 1v3 करा था ना इस बंदे ने। standoff, but will he win it? बहुत क्रेजी 1v3 था वो। Are you kidding me? What a finish! किससे मिलेगी इसको? S-Power is just insane. He's been throwing heat-seeking missiles all game long and opening the fight for his team. A full 4v4. S2G tried to catch a couple of their players off guard, but it's S-Power, baby. You can't shut him down that easy. You can't stop S-Power, and you cannot silence Godlike in this moment. Adamino for the closing play as Godlike take this chicken dinner with ease! That is how Hello, Bixi bhai, you kaise do ho aap? it मैं here, बिल्कुल बढ़िया folks. मेरे And भाई। you can see the look on their faces. Say, give me Bixi bhai, some कौन noise, जीतेगा Paris. ट्रॉफी It's इंडिया वाला? Godlike's time अरे to इंडिया की कोई भी shine. टीम जीत जाए ब्रो। You
see on Rondo. It is madness in Neox Factory. A big nade threaded on up, and it's finding 1 and 2. Falak charges on forwards, and they're cutting the rosters in half. कितने मैचेस होंगे? आज 6 मैच होंगे, कल भी 6 मैच होंगे, परसों आखिरी डे है, परसों भी 6 मैच होंगे, टोटल 18 मैचेस हैं। इसलिए बिग फैन आलू खाओगे? आलू नहीं है। The run coming through from India, but it's not happening. They will not be silenced. They will not be shut up here. Aru still going strong. A tanky underneath, looking to get the shots in. But Flash moves around the side. He's whipping the shots, unfortunately. But finally, they will hit the last shot. India grabs the back-to-back. From day 1 to day 2, this team looks clean. It's time to पॉइंट टेबल थोड़ा बताओ। पॉइंट अभी पॉइंट टेबल नहीं आई है ब्रो, अभी पहला मैच स्टार्ट होगा। Oh, with a bit of vigor, I like it. I'd like you to pull on this in 3, 2, 1. Send them home. Let's go on, they're gone. I don't think we could have set the stage better ourselves. So Start it's ironic that we were match. featured in that nice little collection of replays there, Blank. An incredible way to give you a glimpse into what's gone on over the past couple days. But it's going to get even more climactic here. The best of the best return to the lobby, and this is where dreams truly do become reality. I'm slouching, but hopefully the players aren't, because this is a day, right? Day 1 always gives you the most freedom, the most chance to get a big buffer online पहला मैच हुआ भी नहीं है, because we saw that come through in survival stage. Yeah, teams were sweating, teams were shaking in their boots. But it's time to get boots on the ground over on Rondo very, very soon for our first match of the day. Who's going to grab that gargantuan point total? Final कब है? Final परसों। Try and repeat something similar to Irina. Rondo है भाई पहला मैच तो यार। हाँ रोंडो होता है, फिर लगातार 3 एरेंगल होंगे, फिर लास्ट में मैच मेरा। भाई वो तीसरे प्लेयर को तो नींद आ रही है। Hey man, there's no better stage for रात को सोया नहीं क्या वो? रात को ग्राइंड कर रहा था भाई वो। right now, live from the जैसे तुम लोग रात भर ग्राइंड करते हो ना? वैसे ही ग्राइंड है। 2026. 3 years of intense competition. Twice we've had. ये लोगों ने स्क्रीन खोली होगी। यहाँ पे देख रहे होंगे भाई, स्ट्रेटजी बना रहे होंगे भाई। समझ रहे हो ना? It is time to crown a new victor. Who's going to be the defending champion? ये किस कंट्री में खेल रहे हैं? ये भी फ्रांस में। Now all that matters is getting those points online. Playing path is in चलो the चलो air चलो भाई, स्टार्ट हो गया गाइस। Match 1, Rondo. Let's get it started. Let's go. Energy in the region. She can't go gold like to hear you, Paris. Let's keep that energy going throughout the day. We'll set the stage for you as we get our playing path on board for this one. We've had some pretty good games of Rondo, mate. You touched on E-Arena there. That was something to be remembered. But the consistency and the level of aggression we've seen from these teams back पता नहीं कहाँ से आ रहा है भाई, बहुत लोग बोल रहे थे, मेरे लाइव में भी आज बोल रहे थे, पता नहीं कुछ लोग। all together. A big पता नहीं कहाँ से आ रहा है ये न्यूज़। भाई आना होगा तो आ जाएगा। I mean they will have. या तो ऑफिशियल्स ने बोला हो। अभी ये यूट्यूबर लोग क्या है भाई, उनको व्यूज आ रहे हैं, वो लोग बोल देंगे कि आएगा, बट नहीं आना। E-Arena here though, teams do need to be worried. They've been. तुम देखो BGMI की ऑडियंस कितनी कम हो गई है। अभी इसमें भी अगर 2 गेम में बढ़ गई ऑडियंस, तो मैच ही स्टार्ट नहीं होगा, मैच मेकिंग ही लेगी भाई 5-10 मिनट। Now, if you are remembering our game versus Alpha 7 just the other day, on survival stage day 2, they had a real tough time of it. They were able to hold out, but E-Arena made their lives extremely difficult. But it wasn't just them. So let's see what E-Arena can get done, because a lot of teams will be taking those लग रहा है कि गॉड लाइक किल निकाल के खेलेगी भाई। This playing path as the fights do open up towards वैसे डे 1 है, मे बी ना खेले आज। just how किल निकाल के बट बहुत aggression एग्रेशन के साथ खेली भाई गॉड लाइक। is going to come out instantly. We see that opening knock from the side of 4-5 as Razy on Vitality starts the लड़ाई players on Orangutan instantly being knocked off their feet as well. That's 3 points achieved for Tiamba in a matter of seconds here, Blank. QZZ already hitting the knocks left, right, center. Milu. 6 किल उठा लिया। 6 eliminations in 1 minute 47. That is an incredible result already for Tiamba. And they should be able to get the easy res peak, and they've already cleared out most of the damn teams in that position. Yeah, that's an unbelievable start for Tiamba.
a powerhouse in the survival stage, and again delivering early into Rondo. Orangutan being forced out as well as Hora look to try and claim a few more points for themselves. 3 points for Hora, 3 in the back pocket for Non-Shin Red Force, and that big 6 total for Tiamba already. Oh my days! I mean, just coming through. छोटी के बंदों को तो चाकू से काटा है भाई मीनू ने यार. He pretty much cut through the entirety of 4 thrives there, left them in ribbons by the end of it. I'm pretty sure he was up against guns as well, but he just brought the knife close quarters outside the pagoda. Real samurai here on Rondo. Start as you mean to proceed, it seems, then for Tiamba on today's games. Sleepy taking the clash. Going to be able to force him out early. Nice. Oh, that's a great lineup, bud. Noah coming swiftly in with that one onto S2G. Gorgeous stuff here. But for S2G, got to chat with him for a little bit. My boy was actually getting a haircut when I was talking to him, but they were saying that they have the aggression, and that's what they're bringing here in the finals. It's what Ulf kind of lacked a little bit of. But for their Turkish team, they were looking to bring that aggression over in the group stages. They're looking to bring it again here. They've had a lot of time to study those teams, but Lost moves up and already is down. It's Kamikaze. भाई ये जो गन है ना ये जो भी है GS9 बहुत तगड़ी चिपकती है इसलिए. अरे. Good damn. Yeah, it's nice bit of chip damage on the peak. क्या मारा है? Lord trying to lean into it, but the pre-fire back from Kamikaze on low HP will at least secure that one. चलो. ट्रेड में ले गया. An absolute. भाई NGX अगर यहाँ फाइट हार जाती ना, इनका टीममेट रिकॉर्ड पे भी लेगा. Starting is able to recall the team back into action. We do have a Western circle. We didn't get to talk about too much. Flash already has tops in that region, so Jiao Ting currently covered, but that place can hold a lot of teams late game. Aaron now coming against Win, bears them off HP, but at distance it's Milu once again. Tiamba up to 8 probably after this. ये वाले मैच के बाद खोलते हैं वर्मा भाई. This is the dream start for जब इस वाले मैच के बाद वो होता है ना थोड़ा next match starting से पहले थोड़ा time individual eliminations alone, mate. He was just popping off back in the games we'd seen previously. If he feeds the hot hand and can keep this going throughout the whole day, it's the buffer that we were talking about. And there's no luck involved, but there is luck involved over on the lucky spin, which you can join in with us in-game for the 2026 PMWC tournament set, which you can see on screen regularly in-game. इसको पता है बंदा अंदर है. इसको पता है. You try your chances just like QZC. क्या गन पावर है भाई? With the S12K, we are looking at 2 eliminations per minute. Unreal reactions as well. Coming out swinging today. We know mechanically they're very gifted as individuals, but they're putting it all on the line. And hey man, that's the way to do it, right? We were touching on the fact if you can have a huge pop-off game on Rondo, the extra buffer of points from the sheer quantity of additional eliminations you can garner from this battleground, it's worth its weight in gold, especially in a 3-day finals environment like this. You gotta get in there and get stuck into the thick of it, and Tiamba are doing just that. Again, for Tiamba, their biggest success in the survival stage was the fact that they started out so incredibly hot, where it felt like all the weight was off them a lot of times. At Milu making that 1v4 look real easy, I think that came from the fact that they had nothing to lose at that point. They were already in. ये अपनी टीम बहुत नीचे चालू है. अरे first match है bro, first match है ये. We haven't talked about it too much so far on the cast, but we do have Smash ruling this event. And not only does that mean that, yes, you can win technically, game 2, but it also means the further you are ahead, the harder it is for teams to catch up to also get into that Smash ruling. So we are looking for more similar result to 4 Thrives as well as Vitality in terms of how far they sent themselves ahead in those rankings to make it difficult for any team to catch up to really engage that Smash ruling on the final day. Might be coming down to match 6, honestly. Yeah, it will be a fun little storyline to see how that affects things going into the last day of competition. How big of a barrier that'll be. Really, if other teams will have to rise up to the occasion for it to even be a potential pipeline for them.
That's one for the future, though, but now it's in the back of your mind. You have that context with just how much these early points matter for some of our squads. Two sides that you touched on there, though, of course, being Vitality and 4 Thrives. They were dominant in both of their respective groups. Easily the best squads we saw when it came to how consistent they looked and how aggressive they were. Yeah. Vitality even kind of completely blowing away what we thought was the upper limit when they then played their group, right? I think they knocked it out by 1 point, but even that 1 point is a hard point to squeeze out in such a short amount of games. For Tiamba, it's a little less impressive, I would say, just because you are playing with the dregs coming through from the group stage. We already did send what we assume to be our best 10 teams forward there. Yeah. Even so, Tiamba still looked very thank you for strong. mango lassi yaar, kya baat hai? Case of switching guys, aap log ke paas bhi jewels वगैरह हैं तो send करो यार अपने भाई को. And they've done exactly that. It looks like all the lights are on at home right now for Tiamba. They are burning the midnight fuel. पूरे भाई स्किल निकाल दिए इस ब्लॉन्ड ने. Actually, wow. इनको बेनिफिट मिल गया पता है ड्रॉप क्लैश का. गन पहले हाथ लग गई, उस चीज का फायदा उठा लिया. The speed at which he was like. Was that Soul Catcher YT, thank you so much for samosa yaar. Technically, Ranveer bhai, thank you so much for bada pav. Especially when you then factor in we had the one clean 1v4 he won. We then had a 1v4 attempt towards the end of the love you too mere bhai, love you too yaar. Vishu bhai, love you too. 3 elims to going out as the last guy. Yeah, like the conversion rate we've had on raw 1v4s from him has actually been unbelievable. I think we're more astonished that that might be a 1v4. I mean, we didn't even clock it because it's like, is he just doing हमें 1 million subscribers करने हैं जल्दी से. आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी कर लेना. Oh, zone क्या कटा है? हार्ट शूट दे दिया पूरा. Circle goes over towards that northern side. OG zone के center में. This one as well, down towards the lake. Definitely possible to go for, but you get caught out on the bridges coming out from that area fair few times. गॉडल भी दे रहा है, गॉडल का भी एक प्लेयर है वहाँ पे. हाँ, गॉडल. But OG के लिए तो बहुत बढ़िया zone है. मारने गया है पूरा. Nice rotate on the north side. ओमकार भाई, thank you so much for chai toast. क्या बात है भाई. Tiamba Vitality on the back foot here as well. Rudra, thank you for jamming. Aurora holding a 2-2 Aditya split. I think bhai, Soul Catcher bhai, thank you so much for samosa yaar. Likely better just try and clear their back angles and then look for maybe a major rotate on the west. था उस पर रिकॉल था, हो गया रिकॉल वो. हाँ, सारे रिकॉल हो गए. 64 बनते हैं भाई. OG पे रश आ गया. Arena, a position they'd love to play towards in a final. See if they can win out versus Orangutan. नहीं. And it's easy clean up on the opening 2 players. Aaron Wisgard down in a matter of seconds. नहीं है इन पे शायद. नहीं down to a duo once again. अरे नहीं है शायद. नहीं है ना, मर गए थे उससे. स्टार्टिंग में फाइट हुई थी. हाँ हुई थी. एक ही प्लेयर होता है. For a res beacon. I think he might go far Bailey on this actually, Jackie. I don't think he's going to stop off early over towards the lake like we said before. You get a res off there. Mingo ने नेट कैंसिल कर दिया, उसको फेंक देना था कहीं भी. अंदर घर में जब घुसा वो फेंक देना था उसको. Rotate. But honestly, for Orangutan, it's not terrible because they could just swing back in from that northern side, and it's fairly free with where most of the teams dropped off down towards the south. Thank you so much for finger heart यार. क्या बात है guys? क्या बात है भाई? Guys, आप लोग अगर jewels वगैरह हैं तो send करो यार. Slightly further out as well. Hedges his bets. He goes up towards the top of the north side. Going to get that recall in. See Vitality on screen here as well. Just the one elim to start us off with, Razy. I mean, you said it yourself, mate, doing your little special report on Vitality. Razak and Razy, that's been a hell of a duo. They're like the Cray twins, bro. You're just terrified when you see them coming up. Yeah, you are. I mean, one of them bringing the double hammers as well. It's a bit of a nightmare, honestly, and they are always looking for a proper shootout. इनको थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड कम करना चाहिए. OG का एक ही बंदा वो है. एक ही बंदा रिकॉर्ड हुआ है. हाँ, एक ही बंदा रिकॉर्ड हुआ, 2 पे नहीं था. Federales has also had थोड़ा गलत हो गया यार. amount of tenure throughout the entirety of PUBG Mobile, but Axel was just Santosh Roy, thank you so much for hiding. Not missing. So that's what gives me a lot of hope, and I'm very, very excited to see this team perform as this tournament goes on, just because of how good all of them have been playing individually and as a unit. सबसे बड़ी बात रोंडो में ना यार रिकॉल रहता है ना, तो उसमें तुम हाई किल ट्राई कर सकते हो. और वही अगर खराब चला जाए तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है यार. Their region, honestly, they had some. रोंडो ना एक लीड मैप पे लीड ले सकते हो किसी टीम से ना, अच्छा खासा वो. रोंडो एक्सप्लोर विद रुद्रा, थैंक यू सो मच फॉर हाइडिंग ब्रो. We're impressive. They were second best inside of their group, only beat out by Vitality. मैं बिल्कुल मैप पे बाहर ही हुए हैं रिकॉल. Fair play.
Vitality really did get in there, mate. You got a little crunch down the zone. Antya bhai, thank you so much for hiding. A couple big names amongst Explore the with Rudra, thank you so much for gold. You gold touched on 4 Thrives, Vitality, Nigma Galaxy as well. The representation from Taslim bhai, thank you so much for mango lassi yaar. Surprises in Gold like भी center पे है. this one goes on. Yeah. Gold like के भी 4 बंदे हैं. ये निकाल सकते हैं this. अरे इनका HP कैसे कम हो गया वो जी वालों को इतना कम. Yeah, that's fair. That's their issue. Every single player on that team has greatness inside of them. It just seems to dwindle a little bit once we get to a final. And we've been asking for that not to be the case for the longest time. And to get to the point now where I just don't believe in it, which is sad. But they are consistently always here, and you can't really put them down too much for that. The fact they're in most of the finals is like that's already a big achievement. Reefus though opening up over towards Yasser from Alula. Tiamba's cut out on that eastern edge. Now there's a lot of these big pillars involved inside the circle, as well as stadium over towards that northeast side, which is a bit open on the outer edges. It slopes down into it, so if you are E-Arena, you can kind of swing past here. They also know this area very well. It is their drop spot, but 4 Thrives have beaten them to the punch here down towards their southwest from stadium. Excited to see what the form of Fury is going to be looking like in a final situation again as well. They were थोड़ा बैकग्राउंड साउंड इनको कम करना चाहिए था बहुत ज़्यादा यार. in terms of the decision making, the communication. इनका बहुत ज़्यादा ही हो रहा है. थोड़ा कम कर देना चाहिए था. Igor as well, just playing so brilliantly with some of the individual plays. Feel like a whole new man showed up. We spoke about this big man though, and he's back on our screens again. Milu scouting around, seeing if he can get a line of sight potentially. Just playing close towards the geometry here at the cliff face. It's Ulf that aren't too far away. हाँ खुल रहा है उसमें सब कुछ आ रहा है. Eagle and Ake desperate to get some elims on board. I mean, man, every single one over on Milu and QZZ, but these guys are the fraggers on side. Aking a lot of times playing off the back of him. Eagle very, very good at playing that anchor style. तो OG के लिए टफ हो गया रे. The last player to go down. बट कोई नहीं, अभी हैं मैचेस हैं अभी. 17 मैच हो रहा है अभी, रिकवर हो जाएगा. Yeah, you're right. Fury are looking good. Igor's, I think, was a big surprise. Yeah, they've got big names on that team like Chief. Big fan Bixi भैया ऐसी शायद भी कोई वीडियो होगी जो मैंने ना देखी हो. Love from Indore. Love you too मेरे भाई. Thank you so much. आप getting in towards. आपने मेरी सारी वीडियोस देखी हैं. मतलब समझ आ रहा है उससे यार आप कितने बड़े. Quite a lot of them teams still involved. Means a lot. Thank you so much for 200 super chat. Devendra bhai. A ton of teams. It is uncomfortable to play in, and swinging from apartment to apartment. Bhai background sound बहुत irritating है. क्या कर सकते हैं? Windows and little places to pitch nades in. We can't quite get those full finishes on. So I'm curious to see how this will play out. It's a little bit of a passive game going towards. उसमें नहीं आ रहा background sound. Do have to get in towards Jaltin. हिंदी वाले में नहीं आ रहा background sound. See over on the side of the stage, the Nick Galaxy. रुको लड़ाई हुई. S2G versus NS. Battleground, it's S2G that feel the hammer crash down on top of them from Nonshin Red Force. The hero of Hyunbin starting it out well. And only one man in last, forced to bail out and try and keep their dreams alive as he breezes out of action. भाई खतरनाक लड़ाई हो रही है. Clashing against Ida Blank. सर्कल छोटा हो रहा है. I mean, Ida tried to get on the northeast side, which I think is at this point a little bit too late. They got crunched in by Vitality as well as Aurora. I think you somewhat deserve that coming into this stage of the game. Jaltin's still far on the western side, but because it's such a big amount of landmass with a lot of places to play, you do see a lot of teams confirming here early, but you sort of want to be on that end where Aurora is Vitality, where there is those clear exit points across the road. ऊपर से आ गया. To take something a little bit more unfortunate. वो नेट करते रहेगा. Joker stepping up the plate. He's spraying through the smoke. There's one close. He's giving himself away though, Jackie. Yeah, this is risky. IQ had to be so swift with the shotgun here. It's Joker just teasing भाई क्या cover to cover मार रहा है ये Joker. On top of the rocks. So much damage already done to 4 Friday. भाई. Eliminate to go down. And that's how they fall in our opening game. E-Arena. E-Arena down, but back on ball. Aaron भी गिर सकता है. Milu finding the first as per usual. Tian का एक knock हो गया. Tian वालों को zone भी तो नहीं है. Pushing up. Aking will find another shot. Solus is down. This is looking very bad. क्या fight निकाल ले Tian वाले. Tiamba puts up more points. भाई revive भी दे दिया bro. ये इनको भी उतारेगा I guess.
Aaron's not going to stop either. Aaron बच गया तो बड़ी बात है. Squeeze one out of this one. Aaron had to tuck his tail and absolutely bolt it. Finds a lone rock in a field and gets his head down. Turns his attention. Aaron दिक्कत ही कहीं को शायद से. But तू ये देखना Aaron भी मर ही जाएगा यार अकेले ही बचा है वो. Someone needs to zone के बाहर है सबसे बड़ी बात है. मुश्किल है इसका. It's just out of control this game. You're उसकी right. गाड़ी भी फोड़ दी वो पैदल ही आना पड़ेगा. क्या ही करेगा वो बेचारा अकेला. Out of his fury, you're actually taking a couple of pot shots over towards them. Aaron not letting up, just about press. Which side? They're going to take the move for a little bit to try and deny those sightlines. They make their way over towards the pagoda. Just about in. 10 big zone heavy. Jackie. Difficult spot to play. Curious to see how it does work out. Both them and Vitality have been tossing a couple of curveballs at one another. But everyone does find Eagle. Goodness me, still being a nuisance on that east side. भाई OG को तो पूरा survival point ही लेने पड़ेंगे पता है. दो बंदे क्या ही किल निकाल देंगे. He's thinking you want to try and ruin this for us on game one. We'll at least make it OG ने एक knock किया है. Force out the utility, see what he can scrap through onto them. Can't really make a move towards that recall. The zone coming in, and that's going to really crunch up away from all of them. Still dead center for Vitality. OG कहाँ है? दिख क्यों नहीं रही? OG इधर ही center में है. Center मतलब ये left वाली city के center में. Northeast side of Nice. हाँ दिखे दो बंदे दिखे. Every single team on that western side. There was one player left remaining from EDA. Shout out to Titan. He's over on the eastern side of. ये NS ऊपर तो नहीं आ रही है नहीं. But that does kind of save grace for Vitality because they'll hear the shots immediately. If someone tries to rock up over towards Darkin, just give them a brief opportunity to reassemble and reassess how they want to play up on that eastern side. Quick replay here from Federales, just instant shots. I think this has been a key factor for Federales throughout the entire tournament as well. Reaction speed. He is quick with it. It was quick. Ravnoor bhai, thank you so much for riding यार. क्या बात है? कल आप लोगों के पास भी jewels वगैरह हैं तो भेजो यार. Hello. वो गान वाले को गंदा मार रहे हैं. Vitality वालों को पकड़ के मार रहे हैं. Federales falls. What's gone Full on form में there? भाई ये मैच तो full form में है भाई This is an insane push from Tiamba, by the way. नहीं बचा पाया अपने बंदे को. वो क्या नेड कर रहा है उसने? क्या नेड कर रहा है भाई? वहीं से नेड करके फोड़ दिया भाई. Scarpered from that south side. I think भाई बहुत तगड़ा खेल रही है टीम भाई ये मैच. Full form में भाई लोग full form में. सच में यार 14 finishes निकाल दिए भाई. Tiamba of all teams. Mate, this is lunacy. Milu's looking for the nade as well, wants to really commit to this. Meanwhile, the last man from Ulf goes down. They fall second into our first game. Milu prime in the nades. Good nade from them. Hits it back. Axel and Razak still up and kicking. That nade looked dangerous. Milu's brought his way back in towards the smoke to mask his presence here. QZZ still alive. Last of a player up, probably the one you want to see as well here for Tiamba. 14 eliminations this game so far, though still decent. That is greedy. Vitality's gonna let it happen. Oh, mate. revive होगा इन्होंने He's किल gonna नहीं पड़ा. get it in. The res is going to get him back up. The insane bit was as well, it was the nades from Aurora from all the way in the back line that got that initial knock back over onto Milu. Vitality have just been caught in the middle of it all. Most aggressive game of badminton with nades being bounced over the top of their heads. एक फटेगा. Around the corner, QZZ with a nade back. He's just going for it. Angle, good. ले कर गया 1v2 कर गया वो बंदा. 1v2 कर गया वो बंदा. I've run out of grenades. You see so many players just step back and be like, that's it. I'm fully facing. Now Aurora, they're pushing on the sidelines. Can Tiamba 2 versus 4 here. It's a tough one. The opening grenade is not good, but Reapers has taken a ton of damage. Top will at least find QCC, and it seems like Milu will also go down. But 16 eliminations. Even going out in 11th. भाई वाइटलिटी वालों ने उस टाइम पे हगा है लिटरली पता है वो जब नॉक था ना रश करना था The entirety of the arena here in Paris lighting up. A spectacle to start here on game one of Rondo, and it's Tiamba that lead the charge. Now out of the running, let's see if anyone else can try and mirror their success with what remains. Flash moving over towards Aura. He's on the south side. They're kind of fighting for nothing on this one as well because they need to leave at some point in the near future. Jiggle
Fair bit of damage. Flash still got bows in the back line here, lining up a grenade inside the warehouse. Hard to pop these off the wall though because of all the concrete inside. Gordel admin ने knock दिया, Power ने भी knock दिया. Gordel की भी fight हो गई. Tizzy just lets him run straight into the barrel. Finish हो गया. Shotgun straight to the cranium. अरे सौम्य को दूर से पड़ गई यार. Godlike back upon from Schweppes in the distance as well. Gets an angle onto him. दूर से पड़ गई. This is looking tiresome for both teams. I mean, Nonshin down to just the duo. Godlike with only one man left remaining. And Alula, they've seen the blood in the water. They want to see if they can roam over. They smell potential points here. Knock पड़े ना सारे knock पड़े. एक finish हो गया, एक finish हो गया. ये खत्म है. NS वालों का खत्म. Has not got the reset online at all. Still priming nades upstairs. There's going to have to be a big hole. Tizzy on the outside. जले भाई. Molotov is not on target. Tizzy is going down. No, खत्म. NS खत्म. What are we doing? जाते जाते Godlike का एक बंदा पीछे से मार दिया इन्होंने. Wait, this is nutty out there. Tried to drop off the top of the rafters, spamming the shots. It's all gone. Finish हो गए सारे Godlike का एक ही बचा है में बचा. कौन बचा last? मान्य खत्म. नेट में कैसे बच जाएगा यार. Hats off to these guys. They currently control the entirety of the northern side to themselves. Arena looking to put up another good point here. Aurora playing with our hearts right now. Opening up with maybe a gargantuan game. Leading them to believe it is possible once again for Aurora. Galaxy coming out swinging as well. Might have been a bit quiet in terms of the overall aggregate elims we've seen. It's a team that can deliver with some consistency late game. They've got nades as well. Oh, the on top of the arena. Thankfully for them, a little bit of deployable cover will make all the difference. Turney K in the back trying to keep his eyes on what's going on, but if you flick to the elim feed, you can see Doc's doing damage. The scalpels come back out for Aurora. And blank, it was 16 for Tiamba, but Aurora now on 14 elims. They might be able to lap them. Aurora have been just stamping away here. Reefus again does find Aru, leaving AKOP inside. Will be able to grab win. Actually, didn't even grab that. Top was able to steal it. But for OG, they did a lot longer than expected. With 0 eliminations, they will not get a huge amount off this game other than the place of points involved. AKOP inside. उसको जोन से ही मरना चाहिए, पता किल नहीं देना चाहिए इनको. Aurora पे ऑलरेडी बहुत किल है. कोई नहीं सर, पॉइंट तो ले ले कम से कम एटी जितने फ्रस्ट्रेट हो उस पर. Akop just trying to keep himself sustained and run the clock down on this one as long as possible. See if he can deny it out to the blue potentially. If he goes running in there, that's just another point for Aurora. Get an extra placing on this one. I think anyone else anytime soon. Still more. Yeah, unfortunate. I think he thought that the angle was bad for him, so pulls off the first take here. Not able to rank up once again. If he waited a little bit longer, maybe Arena here, who will go down shortly, I imagine. Turney K not able to weather the pressure here from Alula, who have been impressive this tournament for a team that was kind of down on their luck last year. I don't think a lot of people had high hopes for this squad. They have come into EWC looking fairly decent, like a lot of work's been going on for this squad. A lot of practice in the time. But Enigma Galaxy up in top 3. A rocky group stage for them, but we're still able to grab those points, and I do attribute some of that to Coops. He is a nuts player on side. He's been a big King Cooper for this team, bro. Wearing that crown with some of the plays he's making. He wants to slam down on the off-angle peak behind the vehicle here. Alila trapped, cowering. One by one, they eat the bullets and they fall. Huge step up for Enigma Galaxy. And enough time to fix their HP as well before any other fights are forced. The only solo player from Furia, Igor, just trapped in the ditch between our two teams that are going to scrap for the dinner. And Top finds that one for an extra elim. Just instantaneous shots coming through. So we're down to Aurora. Reefer swings very wide here over towards the northern edge. And hold both positions. An awkward angle like that could make them very worried. Has a little bit of hard cover here, but it is outside the zone. Going to wrap back, but at least got the info on side. Coops tries to hit the shots, has to go for the reload here. Going to go for another as he passes on by.
Again, I do think for Enigma Galaxy, Coops is a really big deal. Not just on his own, though. It's the fact that Lord has someone to play off. Yeah. Lord is also a very aggressive player, but Ralph and Satan, they like to take it slow, and that's great, and it works out, but you do need someone else to move forward and bank off of one another. So for Enigma Galaxy, I do think this is the perfect setup right now for them. Zol will move forward into the smoke line. 17 eliminations on the game. A teaser, potentially, from Aurora. And we'll hold इतने पैसिव क्यों खेल रहे हैं ओजी एंड गोडल बिक्सी भाई? भाई देखो ऐसा होता है ना, डिपेंड करता है जोन कैसा बना है। It's greatly timed from Joel. अगर जोन आपकी फेवर में है तो आप किल निकाल के खेल सकते हो, बट अगर आपकी पोजीशन ही ऐसी है कि आप अगर किल निकालने जाओगे आप थर्ड पार्टी को भी आप मारोगे तो फायदा नहीं है ना। देखना पड़ता है जोन कैसा बना है। Coops on half HP. Molly could be good. This is ये चीज समझा करो। This is very frustrating for Coops. It's really slowing them down. Giving quite a bit of time for Aurora to reposition off the back of this as well, because both the front targets have been distracted, discombobulated in the chaos. Thought it might be a little harder for Aurora to get back into the circle. They also know the north side's free after that original rotate from Reavers. Ralph had to go back up that angle. 4v4 की फाइट बची है, NGX all versus the Aurora. knowledge in the world going forward here. They've opened up the full library on this game. क्या लगता है चैट कौन जीतेगा, Aurora की NGX? Out here by Coops as well. He's down to 2 nades and 1 Molotov. Ralph actually being isolated from his off-angle peek round the backside. That's half his HP gone. The vehicle detonates in front of him. One Blessing's got a little bit more cover to try and peek off of, but no easy rotation. Cover है. Still the 4v4 here. Utility down to nothing. On side of most of these players. It will just be a dry gunfight, and honestly, on top form, I do think Aurora beats them out on that. 4v4 है. Coops and Lord though, deadly duo. Don't cut the front. Is this the docketing once again? Takes 2 nades. Just will tank. There's 2 more coming. I'm not sure he'll be able to do the same on the next. They both go wide. He's going to push forward into the smoke. Play going down the back line. It is top, and now Aurora's down to 2. पोजीशन अच्छी है भाई NGX वालों की ना. Making this happen. They're standing tall right now. They want to convert this one into a chicken dinner win on game 1 as 2 of Aurora's players buckle under the pressure. It's over. Ruthless falls. It's all down to the last man in Joel. They need to isolate because he hits Lord heavy, but he's gone. Cut short. मुझे लग ही रहा था कि इसमें निगमा वालों की पोजीशन अच्छी थी ना भाई. That is insane, Jackie. सारा पोजीशन का I'm खेल going to eat my है. words on that one as well. I mean, for Enigma Galaxy, what a good game. Did say though, Aurora do like to choke. The crazy thing is, it was probably the most fitting head-to-head. First position पे आ गई तुम्हारी Enigma. Similar contrast Second to पे आ गई play तुम्हारी styles, the Aurora. way they split Third में आ off, गई constant तुम्हारी their Tiana. 2v2s, the off-angle aggression, but I started to get worried, man. Pointing to the map feed, seeing Dog charging in. Slight timing on the nades, it all collapses. It's the docketing. It's And happening Nick again. McBride, bro, just absolutely come alive on that one. Yeah, wonderful stuff. Actually wonderful stuff. अरे वो कर दो, हिंदी कर दो. गए नहीं, आखिर में फिनिशेस पे निकले और उसके बाद ऐसे निकले कि चिकन डिनर के साथ यहाँ से इस रोंडो को अलविदा करते हैं. बट अरोरा दूसरी तरफ फिनिशेस बहुत ज्यादा निकाले गए हैं. डबल डिजिट 20 से भी ज्यादा पॉइंट एक सिंगल. सिंजो भाई थैंक यू सो मच फॉर हाइडिंग यार. क्या बात है गाइस, आप लोगों के पास भी अगर ज्वेल्स वगैरह हैं तो सेंड करो यार अपने भाई को. ग्रैंड फाइनल की जो स्टोरी लाइन ये लिखना ज्वेल्स भेजो यार. उसका पहला हिस्सा इन्हें मिल चुका है. अब जो यहाँ से इस चीज को मेंटेन करेंगे एट द एंड फायदा उन्हें जरूर होने वाला है, बट चेहरे में स्माइल सेलिब्रेशन बनता भी है क्योंकि स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. क्या कमाल का ये गेम. वी सेंटर भाई थैंक यू सो मच फॉर मैंगो लस्सी. शुरुआत से लिखते हैं इंटेंट दिखाते हुए निग्मा गैलेक्सी. अच्छा ऑल्सो गाइस, मेरे को आपको बतानी है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात. ये है स्वैग जीजी, ठीक है. अब ये स्वैग जीजी जो है क्राफ्टन का ट्रस्टेड यूसी स्टोर है नया. और ये जो स्वैग जीजी से अगर आप लोग बीजीएमआई के यूसी ले सकते हो, और जो ये यूसी होंगे ना, ये मतलब आपको जितने भी यूसी स्टोर्स होंगे उनमें सबसे बेस्ट यहाँ पे आपको वो मिलने वाला है, यूसी टू रुपीज रेशियो. मैं आप लोगों को दिखा देता हूं. ये देखो, ये जितने भी पैक्स आपको मिल रहे हैं, सबसे पहले तो भाई इसमें एक्सक्लूसिव पैक है सबसे, जो ये आपको दिख रहा होगा 13,040 रुपए का. इसमें आपको 5,140 का बोनस यूसी मिलेगा. तो आपको देख रहे हो एक्सक्लूसिव पैक्स तो मिल रही है, साथ में यहाँ पे आपको यूसी का रेशियो बहुत अच्छा मिल रहा है. जितना पैसा दोगे उसके बदले में यूसी बहुत ज्यादा मिल रहे हैं,
ठीक है, रिटर्न में। और उसके बाद गेम में अभी यूसी अप इवेंट चल रहा है, तो उससे तो आपको एक्स्ट्रा यूसी मिलेंगे ही। तो अगर आप क्रेट ओपनिंग वगैरह करते हो, स्वैग जीजी से यूसी लेते हो, तो आपको बहुत ही तगड़ा कैशबैक वगैरह ये सब मिलने वाला है, ठीक है। और ये तो है ही, साथ में भाई यहाँ पे ना आप अगर कुछ और भी करते हो, जैसे वैलोरेंट के लेते हो, स्टारबक्स, ब्लिंकिट वगैरह सब है ब्रो यहाँ पे, समझ रहे हो, ग्रोसरीज वगैरह इन हर चीज पे मिल रहा है ब्रो आपको यहाँ पे। के भी कोड्स है। हाँ, ज़ेप्टो वगैरह की सब है। मान लो कि भाई आप जा रहे हो भाई अपनी बंदी के साथ मूवी देखने जा रहे हो, बुक माई शो पे जाओ भाई, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। आपकी बंदी नहीं है तो टिंडर पे जाओ, यहाँ पे मिल जाएगा। क्या पिज्जा खाना है तो यहाँ पे चले जाओ, ठीक है, पिज्जा खाना है तो पिज्जा खाना है तो उसके लिए भी कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे सारे आपको मिल जाएंगे। क्या बात कर रहे हो, बस क्या सब है ब्रो, हर चीज के यहाँ पे आपको कैशबैक वगैरह सब मिलेगा। और ये तो है ही गाइस, अगर आपको और ज्यादा डिस्काउंट चाहिए ना, तो आप यहाँ पे स्वैग जीजी के वाउचर्स ले सकते हो। अब वाउचर्स के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप वाउचर्स ले सकते हो रूटर शॉप से, पेटीएम से वाउचर ले सकते हो आप, Amazon, फ्लिपकार्ट, ठीक है, इतने सारी जगह हैं, आप वहां से इसके वाउचर्स ले सकते हो एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए। तो सबसे चीपेस्ट यूसी मिलती है गाइस यहाँ पे आपको। क्राफ्टन का बिल्कुल ट्रस्टेड वो है, ये स्टोर है। अब नो चिंता, swag.gg से स्वैग से लो यार गाइस, स्वैग से लो यार। क्रेट ओपनिंग करोगे तो स्वैग से करना, समझ रहे हो। मैक्स भाई आप भी करोगे क्या स्वैग से क्रेट ओपनिंग? आप स्वैग से करेंगे? अरे मैक्स भाई गरीब है भाई, मैं करूंगा। पैसे नहीं है अरे एपेक्स भाई, तुम्हारे जिस दोस्त के पास पैसे हैं उसको बोलो, जो तुम्हारा दोस्त क्रेट ओपनिंग करता है उसको बोलो कि भाई यहाँ से ले यूसी, पैसा ही पैसा। एम के भाई जाओ अभी करो, अभी 1-2 पैक डालो, करो क्रेट ओपनिंग। और उसको यूसी कैशबैक भी मिलता है, मैंने सुना है इस पे सम अमाउंट कैशबैक। अरे बहुत तगड़ा कैशबैक मिल रहा है यार, तुम देखो ना भाई। मेरे को तो यार ये वाला जो पैक है ना, ये मेरा फेवरेट है भाई। ये जो है ना 13,040 वाला, इसमें 5,140 का बोनस मिल रहा है। एक सीक्रेट बताऊं बिक्सी भाई? बताओ। ये जो 16,300 का है ना, ये 14,700 का मिलता है पेटीएम से वाउचर खरीदोगे तो। अच्छा, पेटीएम से वाउचर, हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, पेटीएम से वाउचर लो गाइस, स्वैग जीजी का एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। और ये जो 6,000 यूसी वाला है ना भाई, इसमें 2,400 का बोनस है, वरना नॉर्मली 2,100 यूसी का होता है, इसमें 300 यूसी एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तुम्हें। और वो जो है वो भी कम पैसों में मिल रहा है, सबसे 6,700 में मिलता है ये वाला। हाँ 6,700 में, वही तो भाई बहुत सस्ता पड़ जाता है भाई स्वैग जीजी से, बहुत ज्यादा सस्ता। गाइस मैं इसी से लेता हूँ, पता है, स्वैग जीजी से ही लेता हूँ मैं, जो यूसी वगैरह होते हैं। और इसका वो भी है यार, इसमें एक जैकेट भी तो आई है, वो तो आप लोगों को मैंने दिखाया नहीं, वो दिखाता हूँ यार, कहाँ है? दिखा नहीं रहा यार, मतलब 5th एनिवर्सरी पे इसमें गिव अवे चल रहा था कुछ, तो अभी मेरे को शो नहीं हो रहा है, बट शायद रिफ्रेश करूंगा मतलब दिखा देगा ये। अभी कुछ तो गिव अवे चल रहा है गाइस इसमें, तो आप गिव अवे के लिए रिवॉर्ड्स वगैरह क्लेम कर सकते हो। बाकी गाइस यही था इसका। अभी इस पे चलते हैं। They play more in pressure and yeah, that's it. गाइस मैंने लिंक ना पिन किया हुआ है, हाँ मैं आपको बता दूं, जो ये स्वैग जीजी है ना, ये स्वैग जीजी का मैंने लिंक चैट में पिन किया हुआ है। अच्छा है स्वैग बीस्ट भाई, स्वैग बेस्ट है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जो स्वैग है ना, वो इंडिया में सबसे सस्ती यूसी दे रहा है, मतलब। और यूसी के साथ साथ आप देखो बाकी जो चीजें हैं उसमें भी आप अगर कुछ खर्च वगैरह करते हो तो स्वैग जीजी के थ्रू करोगे तो आपको उसमें भी डिस्काउंट मिलेगा। मेरे हिसाब से स्वैग जीजी इज बेस्ट ब्रो, सबसे सस्ती यूसी मिल रही है, सबसे ज्यादा यूसी मिल रही है सेम पैसे पे, समझ रहे हो गाइस। और इसमें अगर आप वो खरीदोगे, स्वैग जीजी के वाउचर खरीदते हो, Amazon, फ्लिपकार्ट, पेटीएम या फिर रूटर शॉप से, स्टैम से खरीद सकते हो, बहुत सारे ऐप हैं, उनसे अगर आप इसके वाउचर खरीदोगे तो और सस्ता पड़ेगा, एक्स्ट्रा डिस्काउंट, समझ रहे हो। लिंक गाइस मैंने यहाँ पे चैट में पिन किया हुआ है, तो ये पिन्ड लिंक पर क्लिक करके एक बार ये वेबसाइट को विजिट कर लो, आपको आइडिया लग जाएगा कि कितनी मस्त वेबसाइट है ये। और ये बिल्कुल ट्रस्टेड है, सबसे बड़ी बात ये क्राफ्टन से वेरीफाइड है, बिल्कुल ट्रस्टेड है ये। All right, so I wanted to actually ask a bit of a fun question. Inside the game, then we are definitely going to perform well as well. Gentlemen, thank you very much for joining me, and best of luck today.
Thank you, Kalaris, for that amazing interview there with Admino and none other than Aru. But it does end up coming down to Aurora at the end. Even though Enigma Galaxy won, congratulations, Enigma Galaxy. I gotta give this team some props because we're finally seeing the MVPs show up for that squad. But Enigma Galaxy, Coops, especially at the end, what a surprise for them being able to come out with the win. It's so nice. Just in my notes, I just have Coops because that's all you gotta say, really. I do. Can confirm. Yeah, see that? Yeah. I can't read that. Yeah, my handwriting's not great. But Coops was awesome. I really love the jump that they're coming through throughout that game, right? They played on that edge side. They waited for their moment. They bided their time. And what I loved particularly here, Max, was their push onto EA was not super aggressive. All they wanted was space inside the zone. They didn't go for that full push and that full clear of the team. They're just like, hey, we want some space. We're going to take it from you, take a couple of points as well, and then wait some more. I really liked that from them. I have an idea, but this is just pure speculation. Maybe I'm reading too much into it, but I'm like, maybe they slowed down the fight into E-Arena, hoping Ula would go for a third party, and then they could let them fight each other and pick off the rest. I don't know if that was the actual reasoning, but it's how it worked out in the end, and because of that fight in particular, they get a 23-pointer. और गॉड लाइक जहां तक मैंने देखा है वो मरी है जोन के उससे, वो जोन में एंटर हुए, वहां उनकी फाइट हुई, थर्ड पार्टी हुई पीछे से, फाइट में ऑब्वियसली थर्ड पार्टी होगी तो मरोगे यार। वो chaos आता है, कवर नहीं मिला ना, जल्दी हार मान ली। हमने एंड तक दोनों टीम्स ने अपने अपने तरीके से फाइट्स करी हैं। एक तरफ मान्या बचे थे तो उन्होंने करी है, एक ही ओपी की तो मैं दाद देना चाहूंगा, बचे थे तो उसको ऑब्वियसली वो रिकॉल करने गए, फिर उस रिकॉल के बाद वापस भी आए तो भी अपनी टीम को रिस्पेक्टेबल एटलीस्ट प्लेसमेंट पॉइंट्स तो दिलवाए, क्योंकि उन्हें पता था मैन एडवांटेज नहीं है। सो they're still playing with their mindset, जो एक अच्छी चीज है। हिंदी कर दिया भाई, हिंदी यार तुम लोग इतनी देर से कह रहे थे। रावण, आपके थॉट्स जानना चाहूंगा ऑन दिस गेम वन, जैसा मिस्टर शर्मा ने कहा अभी तो बस शुरुआत हुई है और यहाँ पे अगर पैर डगमगा गए, संभलने का मौका अभी भी है। एरंगल के 3 मुकाबले बचे हैं अभी। देखिए जॉनी, मैं एग्जाम्पल के साथ थोड़ी बातचीत रखना चाहूँगा। ये अरीना याद ही होगा कि स्टेडियम में कितना बड़ा चिकन डिनर उन्होंने निकाला था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्हें सर्वाइवल स्टेज की तरफ अपनी कहानी को लेके जाने की जरूरत पड़ी। तो आई मीन इट्स टू सून टू से, जैसा हम लोग हमेशा बात करते हैं। तो अभी पहला ही मैच हुआ है, उसमें जितनी भी गलतियां हुई, जितनी भी ये चीजें हुई है, आई थिंक आने वाले मैच में जरूर संभाल लिया जाएगा। शर्मा जी नजर नहीं आ रहा है, पढ़ के बता दीजिए क्या लिखा है आपने। मैं क्या लाडले में थैंक यू सो मच। आपको हम गेम पे बुलाएंगे, वरना आप फिर से कुछ दिखा देंगे हमें। थैंक यू सो मच कास्टर्स। बट चलिए, अभी फिलहाल इन्होंने तो बताया और इनफैक्ट काफी सही बात कही कि आगे के मैचेस पे थोड़ा ध्यान देना होगा, बट ये जो हेड स्टार्ट भाई मैं नहीं बनाने वाला यार उस पर अरोरा की तरफ से, ठीक है, उसको रोकना मैं बता रहा हूं आपको पहले, और मैंने जो वीडियो सेकंड डाली है उस पे कमेंट में मैंने चीज मेंशन की थी गैलेक्सी के द्वारा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द बस यार इतना फालतू टाइम नहीं है कि क्या उम्मीद है ड्रॉप क्लैशेस के चांसेस हैं। कोई बंदा बार-बार वीडियो बनाए उसका रिप्लाई करने के लिए बहुत सारे ऐसे अच्छे ड्रॉप्स थे। गॉड लाइक ओजी का बहुत एक क्लोज कंटेंशन होने का चांस है, बिकॉज़ वो ऑलमोस्ट एक सेम टर्रेन को शेयर कर रहे हैं, बट वी आपका एज क्या है? 22 भी देखा है, बहुत सारे रिपरकशंस होते हैं। गॉड लाइक ने खुद फेस किया है इस PMWC में आके कि ड्रॉप क्लैशेस में क्या होता है। अब तो मुझे लगता है वो अवॉइड करेंगे एंड दे विल लुक फॉरवर्ड फॉर अ ग्रेट मैच। जी बिल्कुल, बट चलिए ग्रैंड फाइनल चल रहा है और यहाँ पे बातचीत लोगों से करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, और इसी के लिए स्पेरो पेरिस में उनके साथ इस समय जुड़े हैं जी गॉड। अबे यार क्या, वो तो है वही हंसने वाला मटेरियल, वो तो है यार था, वो तो कुछ क्रेजी सीन था यार। Everything. I'm still on top. Happy if you're a Fourth Rise fan, Fourth Rise, so it's looking for a comeback here. Same with OG, but let's see what's going to be happening here on the second game of PMWC at EWC 26 Finals. Thank you, Seven. Great breakdown there, recap of what we saw on our screens live in game 1 of Rondo. Starting to get a little bit louder in here, but Paris, I want to know how loud can you get? Big fan. Thank you so much, BK Gaming bhai. Start again, match.
It's a good crowd. It's a real good crowd here we got here in Paris. इसमें भी तो आ ही रहा है आवाज यार. Supporting all their teams. I mean, the Enigma Galaxy crowd, they've been loud. I'm We'll see if still they on get board. louder. As Enigma Galaxy are doing fairly well Everyone here so far. everything. It's really, really nice to see. I think again, mad props to Coops. First of all, mad props to actually being here. The guy's dodged so many events at this point. Finally gets to play. Ignore guys, ignore. But yeah, the rest of the team's also looking fantastic. Ralph looking a little bit more reserved, I would say, in the gameplay, which is good to see. Holding those angles. I actually liked where he set himself up. Became a real nuisance. Bixi bhai, मेरा नाम ले लो please. I think Shindo bhai, big shout to you. क्या बात है यार all Shindo he bhai? needs to do, because he knows the layout of the land. He knows क्या चल where रहा he है needs to Shindo be bhai? आप playing. बताओ. It's just sometimes he'll play पहली those बार आए हो spots and stream then पे शायद से. and that's bang. So Yeah, he's just letting the rest of his team work those angles whilst he plays that off angle in a really, really strong and quite frustrating spot to deal with. But we're heading over to our angle now, so probably a little less action involved, a little bit more. I have watched most of your videos, but I have never watched your live stream before. Fury at last game did come down to Igor once again. Yeah. And honestly, mate, you know, normally I think you'd favour kind of positions like that, where if he had to step up as a solo, it's just how late in the game it was and how strong everyone else he was up against was looking, right? Uncomfortable position to be left in, but hey, they still squeeze some extra points out of it. So it's better than it could have been. For some of our other talented squads, they're far down the standings, but like you touched on, Rondo is Rondo, and now we get something a little bit more normal. Opening playing path established here, whole way down the middle. Down on that eastern side, Yaz. Opening here for teams to move into. Gatka a little bit harder to get towards on that western side. North George, well as South George, probably possible. It's just going to be a little bit more of a long approach on that one. Vital is just out early. I don't really ever mind the Kameshki split, honestly, over towards Stalbert on that eastern side. You have a lot of position to loot. Most of the time you're not having a second team come over here, so it's just a really good position to get set up in the early game. But man, Tiamba, we didn't talk about them too much at the end of that game, but there is definitely fire. चलो भाई start हो गया अपना एंगल वाला मैच. Because to make that push, to make that decision, to just be like, let's have a straight fight on the central compound when we're playing Edge, I don't know what's gotten into them, but I love it. It is so good. So many. Oh, you guys won the just go, I like the look of that position. Let's take it off. बिल्कुल hard shot. Having that fairly watery circle, mate. Starting off one of these. This has been a VID तो भाई कमेंट्री चली गई है. We had quite a few very similar to this. हाँ भाई कमेंट्री आके लूट रहे हो. Obviously a little bit worse for भाई कुछ ज़्यादा ही गलत हो गया इनके all the way साथ. down from Stalber with their instant drop from the plane. Yeah. It's going to be a little bit more difficult. A lot of the rotational tools will probably be removed as well, so it is going to be a long rotate for Vitality. You are correct. That might end up, or probably will end up, creating a little bit more of a passive game for them, a slower game for them. इंडिया की टीम कौन सी है? Borderland हो चुकी. Eastern side, there's no one around here. It's chilled out. It's peaceful. You get yourself set up nice and early on one of the prior compounds as we head into Zone 2. I think the scary thing about this one is it does eke in a little bit of Sosnovka, and there isn't a 0% possibility that this doesn't go down towards Sosnovka in the future. It still can. It could even center up around Bridge. Satan on our screens. You know what, the last game, first time I've seen Satan smile this tournament, by the way. Even when they win, he usually looks like something's gone wrong. He enjoyed that one. He did like that. That was a nice win for him. Yeah, they were chuffed to bits. And to be fair, it was great. You know, nice head-to-head. भाई MGX अगर मर जाए यहाँ पे मजा आ जाएगा ना. Of play styles, the Galaxy proving that it was on the money today in that first. MGX, they are low on on utility, but made every bit count. तो अगर वो लोग मरते हैं तो सही रहेगा. Well on Rondo, how does it look? He's point है भाई in here to Arangao. Another chicken dinner, big placements. What are we looking at from them? That will be a nice, I suppose, a litmus test of what the quality of this team's going to be looking like throughout the next 2 days here. Heat up. This guy's kind of Borderland OG का drop किया. Godlike का तो यही था यार स्कूल के just सामने वाला. I think what Tiamba did very दो चार घर differently होते हैं ना वहाँ पे isolated कोचिंग की तरफ आते the समय compound वाले. away from Aurora, whereas And Edith मेरे हिसाब से वो kind of अच्छा came drop from है that क्योंकि वहाँ पे north तुम्हें गाड़ी भी side मिल जाएगी और and loot भी just मिल जाएगी. sandwiched themselves. I thought that was a very strange play for Ida to make. वैसे Godlike का तो कुछ fix नहीं है यार. वो लोग random ही खेल रहे हैं.
probably don't want to place yourself between those two squads. ये वाले मैच में or those two buildings. They're very popular in that location on Rondo. But I don't think either of them had them badly. क्या आइडिया रीटा लड़की है? नहीं लड़का होगा I guess. Clutch moments, some super awesome 1v3s right at the end of the games. Like they have what it India takes में to be a रीटा champion. लड़कियों का नाम होता है, but not like that. ऐसा जरूरी नहीं है कि बाहर भी वही हो, समझ रहे हो? तुझे एस पावर अकेले लूट रहा है। Obviously, we touched on Vitality going down kind of early into that one. Two other squads, क्या I'm assuming towards the end of the day will be in a very क्या बज रहा है अभी बैकग्राउंड में? बस सच में यार मतलब इरिटेट हो गया भाई। That's how serious it is. I mean, come on, it's the World Cup. मौका यहाँ पे मिलता है थोड़ा एक्स्ट्रा टीम को वो ना फिर कास्टर्स की माइक से आ रहा है, मतलब कॉन्वर्सेशन होती है। हालांकि गॉडलाइक ने थोड़ा इंटरेस्टिंग मूव यहाँ पे अभी के लिए दिखाई गई इनकी तरफ से। बोट यार्ड में जो ये ड्रॉप लेते हैं वहाँ पे बेसिक्स जो तो राइस में वैसे यार थोड़ा की गई और अब गटका के आसपास आ चुके हैं। गटका में एक बहुत बड़ा स्प्लिट बनाया जा चुका है। इनफैक्ट पूरा गटका से क्वेरी तक का इलाका खाली है। राइस में भी सेम ऐसे में गॉडलाइक ये जो अर्ली रोटेशन करके सर्कल के सेंटर की तरफ जाने का जो ये प्लान बनाया गया है वो काफी ज्यादा अभी के लिए परफेक्ट मैं देख पा रहा हूँ। कोई चैलेंजेस उन्हें फेस नहीं करने पड़ेगा। एट द सेम टाइम जस्ट उनके जो बगल में उतरते ओजी वो रिजॉर्ट में अभी भी स्टिक किए हुए, थोड़ा और बेहतर लूट की तरफ वो जाने की कोशिश में लगे हुए और उसके बाद रोटेशन होगा तो देखते हैं कि किन्हें ज्यादा फायदा होगा एट द एंड, क्योंकि ईस्टर्न साइड से ही मल्टीपल टीम्स की एंट्री आ रही है। हालांकि पोजिंकी में ये जो ड्रॉप क्लैश हमने देखा था बहुत पहले उसका कोई रिजल्ट तो नहीं आ रहा है। इसका मतलब साफ है कि वो डिले कर रहे हैं और इसका फायदा उन टीम्स को होने वाली है जो लेट रोटेट करके आएंगे। एट द सेम टाइम 40 इनके पास भी सर्कल का बहुत अच्छा हिस्सा आ चुका है। ओशन कहीं जाने की आवश्यकता इन्हें भी नहीं पड़ने वाली। 5 मिनट का समय हो चुका है इस पूरे गेम को शुरू हुए और बिक्सी ब्रो रूल्स भी है क्या? कुछ रूल्स यही है भाई, पकड़ के मारो सबको जो भी दिख रहा है और चिकन निकालो। दोनों टीम्स की मानसिकता देखिए, ईडा लास्ट पोजीशन पर है, निग्मा गैलेक्सी फर्स्ट पोजीशन पर है। दोनों एक दूसरे की गोदी में उतरे हैं और वो लड़ना चाहते हैं। इतनी ज्यादा बड़ी मुश्किल सोचिए एक बॉटम वाली टीम पहली वाली टीम को दे सकती है। हालांकि अब टीम्स ने अपनी रोटेशंस करनी शुरू कर दी और जोन को प्राथमिकता अच्छे से दी जा रही है। ऑरोरा अगेन टीम विद इनफाइनाइट ऑरा प्रोबेबली मिलिट्री बेस। इनको तो कोई नहीं करता, इनको कोई चैलेंज भी नहीं करता। बराबर है एनजीएक्स के ना एंड ये जाना चाहेंगे अपनी सही जबकि एनजीएक्स ने चिकन मारा है। चिकन निकाल लेती ना ऑरोरा, बहुत मुश्किल हो जाता। ये मैं इसलिए भी बात कर रहा हूँ क्योंकि ऑरोरा के एक प्लेयर 4 थ्राइव्स के काफी ज्यादा करीब आ चुके हैं। टॉप की मैं बात कर रहा हूँ जो ब्रिज को ऑलमोस्ट क्रॉस कर ही चुके हैं लगभग। क्या कर रहे थे डाउन करके खत्म भी कर दिया गया आईक्यू की तरफ से। और इन्होंने भी तो रीड किया होगा कि अगर सर्कल इस तरीके से बना है तो ऑरोरा वो ब्रिज को क्रॉस करने के लिए आएंगे और अगर हम अपनी लूट बेहतर करके अगर ब्रिज के अराउंड आ जाएंगे तो फिर वो एक मौका हमें मिल सकता है और काफी अच्छा लीड की तरफ से एक फिनिश पॉइंट निकाला जा चुका है। ऐसे में अब बचे हुए प्लेयर्स के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस ब्रिज की तरफ वो आ नहीं सकते, दूसरे ब्रिज की तरफ उल्फ की रोटेशन वहाँ पे चल रही है, डिले हो सकते हैं आप बहुत ज्यादा अगर उस ब्रिज की तरफ गए तो। बट सेफर साइड तो यही बोलती है कि आप उस दूसरे ब्रिज की तरफ जाना स्टार्ट कर दे और एग्जैक्टली गाड़ी स्टार्ट तो की गई है, क्या समझेंगे बटोजी। इसमें क्या लगता है ऑरोरा या कोई भी इंडियन टीम या फिर को सही वक्त में छोड़ा गया? अल्लाह भाई ने मैसेज उड़ा दिया के आसपास वाले इलाके से अभी के लिए। इसमें क्या लगता है ऑरोरा या कोई भी इंडियन टीम की तरफ कौन सी टीम एग्रेसिव खेल सकती है भाई? मुझे नहीं पता, बट जरूरी नहीं होता एग्रेसिव खेलना भाई। मेन पॉइंट होता है चिकन निकालना भाई, किल्स निकाल के चिकन निकालो। जरूरी थोड़ी है कि जो टीम एग्रेसिव खेल रही है वही अच्छा खेल रही है। अभी के लिए एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। अगर वो क्लासिक थोड़ी है यार, ये क्लासिक नहीं है ब्रो। कि मैक्सिमम टीम्स सेंटर ऑफ द सर्कल क्लासिक थोड़ी है भाई, 50 किल चिकन लेना है। अब भाई मैं 4 बंदे लेके एग्रेसिव खेल रहा हूं, हम लोगों को मैं जाके मर जाऊं क्या फायदा भाई? मैं मान लो मैंने मान लो 2 स्क्वाड मार दी एग्रेसिव खेल के, बट मैं 14 13 50 इस पोजीशन पे आके मर गया। मैं मेरे को 0 प्लेसमेंट पॉइंट मिले, क्या फायदा भाई? हमारा एनालिस्ट पैसिव खेल के टीम चिकन मार लेगी, उसको 10 एक्स्ट्रा पॉइंट वैसे मिल जाएंगे। तो अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। मीनवाइल अगेन इफ यू गाइस आर न्यू आउट हियर, जरूरी नहीं कि जो टीम एग्रेसिव खेल रही है वो अच्छा खेल रही है। और
बस ये है कि एग्रेसिव खेलने वाले को थोड़ा ये फायदा है कि अगर उसने हर फाइट अपना कोई भी प्लेयर बिना गवाए निकाल ली तो उनको थोड़ा एक्स्ट्रा किल मिल जाएंगे। बट एग्रेसिव खेलने का माइनस पॉइंट ये रहता है कि तुम्हारे प्लेयर्स के मरने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जी हाँ, जोन ब्रिज के एरिया के ऊपर आता हुआ और मुश्किलें अब टीम्स को बनेंगी। आप ब्रिज एरिया को अगर देख रहे हैं लगभग 30% पानी का एरिया है, 30 से भी थोड़ा ज्यादा कहा जा सकता है इसको। तो टीम्स को एग्रेसिव में रिस्क है भाई, तो रिस्क है ब्रो। नॉर्दर्न साइड पॉपुलस होगा, सदर्न साइड पर भी पॉपुलेशन होगी। मैं तो नीचे सदर्न साइड में उल्फ को देख रहा था, 2 प्लेयर बिल्कुल वेस्टर्न साइड चले गए, 2 प्लेयर अभी भी ब्रिज पे रुके हुए। करना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे? थोड़ी अलग बाकी लोग ना ये एग्रेसिव खेल भी इसीलिए पा रहे हैं, पता है क्योंकि सामने चले गए तो ये लोग इस लॉबी को 4-5 साल से खेल रहे हैं। हमारा गेम बैन पड़ा है 4-5 पहले ही बैन हो गया था, समझ रहे हो? हम लोग खेले नहीं है उतना इन टीम्स के अगेंस्ट में। ज्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं, बट उल्फ जो कि ब्रिज पे थे, ईस्टर्न ब्रिज गेम बैन ना होता तो बात अलग थी। अरोरा की तरफ आना स्टार्ट तुम कंपेयर नहीं कर सकते ब्रो इसको हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि अरोरा पिछले मैच में जो डोमिनेशन उनकी तरफ से आया था फिनिश के लिहाज से एक इंटरेस्टिंग बैटल वहां पे जरूर होने वाली है। बट जोकर एक अच्छा मौका कि इस रोटेशन को रोका जा, बट टाइमिंग आप देखिए, स्काई पीछे से आए, अपने टीममेट को उठाया और निकल भी गए। जोकर इस मंजर को देख भी नहीं पाए कि हुआ तो हुआ क्या, क्योंकि वहां स्मोक हो रखा था इसलिए वो देख नहीं पाया। बट कोई दिक्कत की बात नहीं, हालांकि इस समय हो सकता है बहुत कम एचपी के साथ लेफ्ट एंड राइट। क्या बचा है वेव स्क्वाड, क्या बात है, बाल बचे हैं। एकेओपी रुक के रश कर दिया, फाइट के लिए तैयार है। चेस9 के इस्तेमाल अरे नहीं, वो जरूर वो अंदर घुस उनको टेक डाउन किया जा चुका है टीवीएस के द्वारा। विल ओरंगुटान कम हियर एंड एवेंजर्ड, इसको निकल जाना चाहिए था यार, रुका क्यों पता नहीं। ग्रुप स्टेज के ये तो उसको ऐसा लगा होगा उस साइड गेम ज्यादा खतरनाक दिखे थे और अब पहले गेम के अंदर पोजीशन पॉइंट्स के लिए तो गए, बट दूसरे गेम के अंदर वो कहानी नहीं हो पाई। एंड व्हाट्स हैपनिंग आरू? पिछले गेम में भी एरिना के अगेंस्ट इनकी फाइट आई थी, इस गेम के अंदर भी चलिए साथ के साथ टेक डाउन किया गया। आतंकी वो घर के अंदर गए जरूर, एक अच्छी बचा है, वो डैमेज उतना नहीं दे पाए। बेस्कॉट उसके काफी करीब खिलाड़ी आ चुके हैं, लीडर जरूर, लेकिन क्या वो वेपन उनके हाथ में है? जी नहीं, वेपन नहीं आ पाया, जिसके कारण ओरंगुटान दिक्कतों के अंदर आई है। बैकएंड से भी शॉट्स मार रहे थे ओरंगुटान। अरे यार, पहला नाम इस गेम से बाहर होता हुआ। इंडिया में पबजी वापस आए तो क्रेजी हो जाएगा, मुझे लगता नहीं आएगा। चाह रहे थे वो अभी तक बिल्कुल भी उन्हें मिला नहीं है। पॉइंट्स की बहुत ज्यादा कमी होने वाली, आने वाले मैच में चीजों को बेहतर करने की, शुरुआत करने की बहुत ज्यादा जरूरत। बट आई नो आरू अभी बिल्कुल मेंटली उतना ज्यादा गिव अप करने की तो बात ही नहीं हो, और ज्यादा यहाँ पे सोचना स्टार्ट कर दिए होंगे कि क्या मिस्टेक यहाँ पे हुआ है, तो आने वाले मैच में हम क्या और बेटर कर सकते हैं। बस सर्वाइवल स्टेज से पहले उसमें भी आ रहा है, बात सही है, सही नहीं है, इसमें ज्यादा है बस थोड़ा। हाँ, इसमें कुछ ज्यादा ही है, उसमें कुछ ज्यादा ही है। कौन सा रखना चाहिए, इसमें क्वालिटी अच्छी आ रही है लेकिन और बैकग्राउंड साउंड से मिलू ने नॉक दिया, पावर ने फिनिश ही दे दिया। लेट्स गो, ट्रेड में ले गया इस पावर, कंप्लीट किया भाई। एनजीएक्स वाले एक स्प्रे में उतरेंगे भाई। QZZ with a nade into the ditch. Manya very low, but backpedals into safety with cover to play with. First nade goes long here. As Power holding down the fortress, keeping that drawbridge pulled up. Takes a fair bit of damage here, but he's refusing to move. Manya will reinforce the front gates. Actually, he goes for a swing by, try and get some information on that. So Eagle's going to move round, understanding the position has been compromised. यान वालों को भगा दिया भाई। भाई लेट्स गो, slowly trying to take some space. एक फिनिश कर दिया ध्यान वालों का। Faint smoke wall goes up. भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है ढोल बजा क्यों रहे भाई। That's quick from Alula. अबे मैं तो सोच रहा हूँ प्लेयर्स को कितनी दिक्कत हो रही होगी, वो जो वहाँ बैठ के खेल रहे हैं। भाई वो कुछ भी लगा रहे होंगे हेडफोन, वो नॉइस कैंसलेशन वाला, तब भी आ रही होगी। आता है बहुत ज्यादा ही है। एडमिनो ने एक और को दिया, उसका पूरा मशीन लगा हुआ है पता है, इक्वलाइजर के साथ। Turns into a third party fight. Forgot like that, quick swing around, take shots over towards Ulf. For them, Ulf should be able to pick the players back up. They've got a good spot right now.
भाई इतना तो शादियों में नहीं आता भाई छोड़ तो भाई शादी में भी नहीं होता शादी में भी नहीं होता Feels like the circle's peeling away from Sosnovka at this point. Yeah, very limited space to work. WWE चल रहा है भाई Cross S2G at distance. We'll find a shot over towards Aurora there, leaving them at 0. Out of the game early, 23 points is where they'll end. On a single point earned on this one. So a great start on Rondo, but a bitter taste left in their mouths off the back of the Erangel performance. These guys have been playing the same game. I think it's the first time they've been inside the circle since the beginning. How does their entry? Aurora starting में eliminate हो गई क्या? Yeah, this is kind of unreal. At some point, I thought we'd move. We're still here. I mean, Sosnovka is still in as well. I cannot believe this. Luna also took another casualty from STG on a backside. Noise cancellation works still extend. वर्मा भाई देखो अगर वैसा होता ना मशीन वाला अगर हुआ तो फिर काम करेगा वो पूरा करता है तो मेरी एयरपोर्ट्स है ना मैं इनमें अगर नॉइस कैंसलेशन ऑन करता हूँ तुम मेरे साइड में खड़े हो तो चिल्लाओ तो मुझे आवाज नहीं आएगी तुम्हें पता है तो अगर मशीन के थ्रू है तो फिर तो करेगा काम पूरा नहीं आएगा Coop's taking hell of a lot of damage. Slowly careening back in towards his team. And lock it down. They have lost one off the back of that. Vehicles are smoking, flaming. Flashes dash with Galna. I mean, that's 3 eliminations potential there for them, but they're worried about these sightlines to the side. Furia. Ooh. Go on. Give it some welly. निगमा गैलेक्सी और तियानबा भी अर्ली एलिमिनेट होते हैं वो शायद टॉप पोजीशन की जो जद्दोजहद है वो टीम्स के मन में रहेगी क्योंकि आपको याद दिला दे तीसरे दिन स्मैश रूल लागू हो जाएगा और वो स्मैश रूल सर्कल हो रहा है छोटा सारी चीजें बदल सकता है अगर पहले पोजीशन वाली टीम एक बहुत बड़े गैप के साथ हुई उनके तो पॉइंट्स में केवल 10 पॉइंट को ऐड किया जाएगा और उनको वहां से पार पाना होगा तो अगर टीम्स एक दूसरे के करीब रहती हैं विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट्स टेबल तभी जाकर के स्मैश रूल का और ज्यादा बेनिफिट मल्टीपल टीम्स के हिस्से में आ सकेगा कॉन्वर्सेशन रहेगी डे 3 से बट तियानबा उन्होंने सीधा यहाँ पे स्लैम इन कर दिया इनिशियल नॉक उन्हीं के ऊपर आता हुआ ईगल उन्हें टेक डाउन किया गया काउंटर में जरूर यहाँ पे कहानी बदली जा रही है तियानबा पिछले मैच में इन्होंने भी फिनिशेस काफी अच्छे तरीके से बट हो रहा था लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम इनके लिए बढ़ता हुआ ई अरीना भी फाइट बैक करने की कोशिश में मल्टीपल यूटिलिटीज का इस्तेमाल किया जा रहा है बट मान्या उनकी एंट्री यहाँ पे होती हुई स्प्रे करके सरप्राइज पे करने का प्रयास बट थर्ड पार्टी समझ के यहाँ पे रहने की जरूरत मान्या उनकी एचपी बहुत ज्यादा कम है लेट्स गो यहाँ पे करना पड़ेगा 100 में एडमिनो एस पावर सभी की एंट्री होती है अगर नंबर वाइज बात करें तो गॉडलाइक के पास पूरा नंबर है यहाँ पे इन दोनों ही टीम को यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं लेकिन सरप्राइज लेके आप देखिए तियानबा के एक प्लेयर बिल्कुल कॉर्नर पे जाके बैठ चुके वो अपनी पोजीशन रिवील नहीं करने वाले और इस बात में अगर हल्की सी भी चूक हुई नुकसान हो सकता है जो कि शुरुआत होता हुआ मान्या उन्हें टेक डाउन किया गया और ये मान्या का पहला नहीं है दूसरा नॉक इसके पहले वो थोड़ी देर पहले नॉक हुए थे जब उन्हें रिवाइवल दिया गया था ये अरीना के प्लेयर्स अभी क्या हुआ अरे क्या हो गया कुछ करा करके ग्रेनेड डालना चाहते थे एक और खिलाड़ी को टेक डाउन किया गया एडमिनो बट लुक एट मोरमन अच्छा मार गया सामने लोग नॉक हुज देयर थ्रू द स्मोक ये काम कर रहे थे बट सो में स्टिल भाई वो 1v3 कर गया हां 1v3 कर गया वो सर्वाइव कर पाएंगे दोनों टीम मर गई भाई सौम्य अकेला बचा है इस अरे पर इनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए था कि अकेला बंदा ऊपर अरे नहीं ब्रो वहां वो लास्ट होने तो देख ले कितने बंदे जिंदा है फायरिंग के साउंड में कहां आता है कुछ टाइम वो स्मोक करके आया ना करके बैठ चुके हैं नहीं आता कुछ टाइम ब्रो इतना मे बी अनलीश देयर ब्रूटैलिटी गलती भी नहीं है वो अच्छा खेला सामने वाला एक्सेल आगे की तरफ को आ रहे हैं सौम्य की तरफ से भी ग्रेनेड्स आ रहे हैं सौम्य के पास मल्टीपल ग्रेनेड्स है लेकिन ये अगला ग्रेनेड रिकोशे होकर के शायद खराब कर सकता था अपर एरिया पर जा चुके हैं सौम्य अपने आप को वहीं रखना देखते हैं भाई डिफेंड हो पाता है क्या शायद इस चीज का इन्फो नहीं मिल पाया है 4 बंदे पुश कर रहे हैं वाइटलिटी को भी क्लैरिटी नहीं है कितने नेड से बचना पड़ेगा अगर आप देखिए सारे विंडो से सारे कॉर्नर पे वो ग्रेनेड एक ही नेड है भाई इस पे और आके तरफ से आप देखिए वो शॉट
नॉक निकाला गया एक्सेल के ऊपर और सर्कल का श्रिंक भी आ रहा है एक्सेल वो भाई अगर क्लच आ गया ना सौम्य का मजा आ जाएगा। अगर यहाँ पे एंट्री बनाने की कोशिश की गई तो बहुत इफेक्टिव साबित होने वाले, बट सौम्य क्या वो इंपैक्टफुल ग्रेनेड कर पाएंगे? सामने से ग्रेनेड करने की नीचे आते लेकिन लेके गया, अटैक किया गया और इसी के साथ सौम्य उनका खेला ही बचा था इस पर्टिकुलर रैंकल से 11वें स्थान पे गए। पॉइंट्स हाँ फिनिशर्स के रूप में आए, लेकिन इतने से काम नहीं चलने वाला। क्लाइम करने की इन्हें जरूर जरूरत पड़ेगी। वो अकेला बंदा जो बिल्ली कर गया ना भाई, वो बहुत ये लेफ्ट खराब हो गया की शुरुआत हुई है। टोलेस उनकी दिक्कतें काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ाई जा चुकी है। आउट नंबर यहाँ पे निकाल चुके हैं। स्कारफेस पीछे से बस एक और अच्छी ओपनिंग की दरकार में मानो बैठे हुए हैं और अब सर्कल वो भी चैलेंज बढ़ाने के लिए तैयार है। अगला शिफ्ट बहुत जल्दी आने वाला है, तो इस फाइट को जल्द से जल्द समाप्त करने की भी जरूरत पड़ने वाली है। अगर आप ज्यादा डिले करेंगे मल्टीपल टीम्स जिन्हें उसका फायदा हो सकता है और इन सारी चीजों के बीच में वो स्मोक के सहारे कॉर्नर लेके बैठे हुए कि कोई इधर नहीं आ पाएंगे और वो रिवाइवल देने की कोशिश थी, हालांकि उस रिवाइवल को रोका गया, लेकिन ये रैंडम शॉट्स भी काफी अच्छे तरीके से कनेक्ट करा के जाएंगे। एक बेहतर कनेक्शन उनके तरफ से। वाइटालिटी के प्लेयर्स भी कोशिश करेंगे फाइट लेने की, हालांकि मुश्किलें काफी ज्यादा होती है। वुल्फ के प्लेयर्स स्कारफेस ये पकड़न पकड़ाई के खेल के अंदर आ चुके थे, लेकिन बैकएंड पर और भी तो खिलाड़ी हैं जो ऑब्वियसली टेक डाउन करने की कोशिश करेंगे। और उल्फ ये भी एक नाम जिन्होंने अपने खिलाड़ियों को गवा दिया, बट वाइटालिटी ये तो हर जगह पर घुस-घुस के मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर दिन वैसा नहीं होता जैसा इन्होंने कुछ दिनों पहले अपना प्रदर्शन निकाला था। फेडरलिस्ट क्या मैं फिर से वो पीक्स देखने की को मिलने वाली है जो इन्होंने सबसे पहले दिन दिखाए थे, सबसे पहले गेम में। उल्फ अबे ये क्या हेयर स्टाइल करवा ली बिक्सी भाई, अच्छा नहीं लग रहा है क्या? बेकार लग रहा है क्या हेयर स्टाइल? क्रेजी को पता है कि वहां पर प्लेयर्स होने वाले हैं, मौजूद होंगे, बट अभी भी वो हरी झंडी नहीं दी गई है कि आप जाइए बाहर आगे जाकर के रश कीजिए। लॉबी में अगर आप देखिए बहुत ज्यादा स्पेस है 5वें स्टेज के अनुसार और टीम थोड़ी सी कम हो गई है, इसी की वजह से ज्यादा जल्दबाजी अब यहाँ पे नहीं हो रही। टीम्स पूरा टाइम ले रहे हैं फाइट करने से पहले और ये बेहतर भी है। वो जल्दबाजी में हमने रिजल्ट्स कई बार आपके अगेंस्ट भी जाते हुए देखे। एनएसआर कॉर्नर लेके बस कर रहे हैं इंतजार कि सामने से कुछ गलतियां हो और उसमें थर्ड पार्टी के माध्यम से वो फिनिशर निकाल के जाए। ग्रेनेड का आदान प्रदान, बट कुछ भी फायदा हो नहीं रहा है। कॉपीराइट नहीं लगता क्या बिक्सी भाई? मैंने परमिशन ली हुई है ना वॉच पार्टी की, तो मुझे नहीं आएगा। और अभी तक तो सही भी साबित हुए। देखो तीनों कैसे बैठे हैं नीचे कोने में एक कोशिश में, बट आप एनएसआर को देखिए फील्डिंग नीचे देखो ना वो कैसे बैठे हैं वो, है कि ये दो टीम्स के बीच में जब भिड़ंत होगी तो हमारी भी एंट्री होगी। उसको पढ़ के इनिशियल नॉक विटालिटी काफी आसानी से निकालेंगे। कंफर्मेशन भी यहाँ पे निकाला जा चुका है और बस मैं वेट कर रहा हूं कि एनएसआर क्या अटैक करेंगे या फिर करेंगे इंतजार। विटालिटी वेटिंग ऑन इट। ह्यूनबिन हाथ लगाया हुआ एक शेर पीछे मुड़ गया। वो इंफॉर्मेशन लेकर के आना चाहते थे एंड सो इजी। ह्यूनबिन एक ऐसी मछली बने थे जो उस जगह पर अपने आप को बस टिका के रखना चाहते थे और सो इजी की वो गोलियां थी जो आकर के छूने वाली थी। टीजी एक प्लेयर को उन्होंने भी टेक डाउन किया है। सो इजी अब आगे की तरफ को मूव करना चाहेंगे। दिस इज द ग्रीन सिग्नल, दिस इज द ग्रीन लाइट, लेकिन सो इजी के ऊपर का डैमेज चाहिए थोड़ी देर के लिए खिलाड़ी को रोक सकता है, लेकिन देखिए रेज़ाक इंस्टेंट नॉक, इंस्टेंट फिनिश। क्या परफेक्ट रेड था बे, काश के पत्तों की तरह बिखरती हुई नजर आ रही है। एक और थ्रोएबल का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन फेडरलिस्ट उनका रिवाइवल वो नीचे के एरिया पर थे इसलिए उन्हें दिया जा सका। फेडरलिस्ट को हमने देखा था लास्ट टाइम क्या कमाल खेल रहे थे। एक्सेल को हमने देखा था लास्ट टाइम क्या कमाल खेल रहे थे। ये ग्रेनेड थोड़ा सा पीछे की तरफ को रह चुका है, बट अब लो ग्राउंड हाई ग्राउंड उसी चीज की पूरी नहीं बस फर्स्ट पॉइंट पे ग्रेनेड की टाइमिंग प्लेसमेंट इतनी लाजवाब थी। 2 बार वो ग्रेनेड इसलिए बचे क्योंकि गाड़ी के पीछे वो अपने आप को रखे थे, बट एक ग्रेनेड जब गाड़ी के पीछे गया वो अपने आप को संभाल नहीं पाई। टीजी इतने ज्यादा ओपन से एआर से मारते तो मर जाता लेते हुए आगे बढ़े और एनएसआर जिनकी फाइट जीतने के चांसेस हम मान के चल रहे थे, एलिमिनेशन होता हुआ और वाइटालिटी करने की शुरुआत कर चुके ओवरऑल स्टैंडिंग में। इस रश में, इस फाइट में, इस अंडरस्टैंडिंग में एनएसआर कितनी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही थी। वाइटालिटी ने अपने घर को डिफेंड किया, वाइटालिटी ने और रिसोर्सेज ले लिए। वाइटालिटी ब्रीदिंग स्पेस ब्रीदर के अराउंड आ चुकी है खेलने। अरे ये कहां बैठे हैं हवर क्राफ्ट्स लेकर के आए हैं आप, मल्टीपल।
ये पिछले कुछ मिनटों से हवरक्राफ्ट के साथ पानी में ही है, वो सरफेस की तरफ आए ही नहीं थे अभी तक। सब लड़ रहे हैं, ये घूमी घूमी कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से करके जा रहे हैं क्योंकि प्लेसमेंट पॉइंट एट द एंड पॉइंट कमाना वो मुद्दा है, पॉइंट कमा रहे हैं और अब जब फिनिशेस में निकालेंगे क्योंकि S2G इन्हें कम मत हाकिएगा। इन्होंने भी लॉबी को काफी अच्छे तरीके से डोमिनेट करके सीधा ग्रैंड फाइनल में अपनी क्वालिफिकेशन को तय किया था। लॉस्ट ग्रेनेड के साथ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, अगर वो नॉक निकला तो फिर फाइनल अटैक भी कर सकते हैं। जितने भी लोग स्ट्रीम देख रहे हो ना, उसके साथ चाहे स्ट्रीम को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार गाइस, हमें 1 मिलियन सब्सक्राइबर करने हैं यार, बचा के रखना चाहते हैं। नेक्स्ट मंथ मेरा बर्थडे है गाइस, मेरे बर्थडे से पहले क्या आप लोग करा सकते हो? की बारी आएगी, इन्हीं हवरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाएगा S2G की तरफ से, मेरा बर्थडे आता है, उससे पहले करा सकते हो। अपोनेंट को टेक डाउन करने की जरूरत 40 पलक उन्हें वहां पे बस टेक डाउन किया गया। 18,000 की बैटल की शुरुआत देखते हैं किस तरफ ये बैटल जाएगी क्योंकि चीजें अभी भी संभली जा सकती है। रोंडो लो ग्राउंड टू हाई ग्राउंड 40 टेक डाउन हुई थी, हमने देखा था वो फाइट। इस बार फिर से एक लो ग्राउंड टू हाई ग्राउंड फाइट है, खैर उसके बारे में बात करेंगे। बट S2G अरे कहां फटेगी निकल करके लड़ लीजिए थोड़ा सा, लेकिन जब निकले मुश्किलें बहुत ज्यादा बनी है खत्म हुई प्लेयर्स के लिए। They were taken down. Call an ambulance, but not for me. Meanwhile, Vitality उनके 2 प्लेयर्स पिक हो चुके हैं। फेडरलिस्ट आखिरी खिलाड़ी बचे हुए हैं। How is it going? How is our team playing? अभी तो यार फिलहाल 17 खिलाड़ी ज्यादा अच्छी किस्मत रही नहीं है। We move forward slowly to the 2 ही मैच हुए हैं, निकाल लेंगे, आगे निकाल लेंगे, अभी उतना बढ़िया नहीं अभी फाइट्स काफी ज्यादा हुए हैं, ये तो मानना पड़ेगा क्योंकि आप देखिए वो खूब स्कोर भी गिराएंगे, भी मैच से बाहर भी करेंगे। काफी बेहतर वहां पे क्लाइम उनके तरफ से भी होती हुई। हाँ वो गलतियां हुई पहले मैच में, लेकिन इस मैच में आप देखिए 6 एलिमिनेशन ऑलरेडी निकाला जा चुका है उनके तरफ से। बट बोलते ही IQ उन्हें वहां पे टेक डाउन किया गया। रिवाइवल की बर्थडे स्ट्रीम करना भाई, बर्थडे के दिन IRL स्ट्रीम करूंगा भाई। एक चीज और बस हाईलाइट करना चाहूंगा, NGX जो पिछले मैच में चिकन निकाले थे, इकलौती टीम है उस पोडियम इनफैक्ट टॉप 5 में जो सर्वाइव कर रहे हैं। बाकी सारी की सारी टीम 9वें से 14वें स्थान वाली बची हुई है। मैं समझ गया, बट वो टॉप 8 में इकलौती टीम है। थिंक अबाउट इट, टॉप 5 की आपने बात करी, टॉप 8 में देन कम्स फ्लैश, 4th राइव्स, S2G, होरा के प्लेयर्स, उनको भी फिनिश पॉइंट चाहिए। लॉस्ट उन्होंने निग्मा गैलेक्सी के रॉफ को टेक डाउन किया। आपने बोला सिवाय अपने घर आ गए क्या? हां घर पे हूं, 3-4 दिन पहले आया। के भी प्लेयर्स इस समय के लिए उनको खुद को सर्कल में आना है। जोन का डैमेज 7 सर्कल है, एक्सपोनेंशियली डैमेज बढ़ता है एंड होरा के प्लेयर्स के साथ उनकी फाइट है। अब 4th राइव्स खुद को अलग-अलग स्प्लिट्स के अंदर रखी हुई है, बट होरा के जो प्लेयर्स हैं वो 2-1 का स्प्लिट करके रखे हुए हैं। ऐसे में जोन पहले आप प्रायोरिटाइज करेंगे, आप पहले फाइट लेंगे क्योंकि आप फाइट लेते हैं सर्कल आएगा, ब्रीदर नहीं मिलेगा। कामिकाज़े S2G आगे आई तो थी बट दिक्कतों के अंदर उनके ओपोनेंट्स आए हैं। 6 एलिमिनेशंस हैं इस टीम के पास, जस्ट डूइंग बॉन्कर्स स्टफ। हालांकि 4th राइव्स IQ को टेक डाउन किया जा चुका है। होरा अपने 3 प्लेयर के साथ है, उन्हें अटैक अभी के अभी करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर वो रिवाइवल अपोनेंट यहाँ पे कर लेते हैं तो फिर नंबर गेम का एडवांटेज उनकी तरफ चले जाने वाला है। S2G वालों का किल निकाल सकते हैं। एक प्लेयर सर्कल के अंदर आ चुके हैं, लेकिन बचे हुए प्लेयर को अब दौड़ के जाने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि उनके वर्कक्राफ्ट को वहाँ पे डिस्ट्रॉय किया जा चुका है। होरा थोड़ा फंसते हुए यहाँ पे जरूर दिख रहे हैं, एक प्लेयर यहाँ पे मौजूद नहीं है मिनिमम में, आप देख सकते हैं थोड़ा पीछे वो चल रहे थे, इसी के कारण वो फाइट करने की शुरुआत की गई और T24 उन्हें यहाँ पे टेक डाउन कर दिया जाएगा। लग तो रहा है कि होरा यहाँ पे फाइट करना चाहते हैं। IQ अपने नंबर्स को यहाँ पे संभालते हैं, अपनी टीम को यहाँ पे संभालते हैं। अरे भाई नाइस है, अच्छा खेला, अच्छा खेला। रिकवर करने का मौका दिया नहीं गया। आखिरी प्लेयर वो अब सीन में आते हुए क्या यहाँ पे 40 को एलिमिनेट कर पाएंगे IQ? वो रिवाइवल की तरफ जाने के बारे में सोच रहे थे, नो फियर, एग्जैक्टली नो फियर। IQ रिवाइवल करे, फाइट करे, सोच विचार अभी बहुत ज्यादा उनकी चलती है। अगर नो फियर ये फाइनल अटैक करेंगे 40 उनका एलिमिनेशन हो सकता है। आसानी से इस आखिरी फाइट को जीतेंगे और एलिमिनेट करेंगे। क्या मार दिया नो फियर ने, मुझे तो लगा था निकाल लिया 14 फाइट करते हुए। कोई डर नहीं इस प्लेयर को और इसी की वजह से 1v2 निकालेगा। क्या मारा है भाई, क्या मारा है भाई, क्या मारा खिलाड़ी विद द नेम ऑफ नो फियर, विल टॉक अबाउट हिम बट द शो गोस ऑन। कामिकाज़े JS9 का इस्तेमाल करेंगे, टॉप को टेक डाउन किया। JS9 भी तगड़ी गन है, 2 खिलाड़ी सर्वाइव करते हुए। भाई साहब क्या मारा है, एलिमिनेशंस नहीं है, बहुत तगड़ा मार दिया भाई। बट नाउ वी आर डाउन टू 3 टीम्स। इस गेम का पोडियम फ्लैश के एक खिलाड़ी के हिस्से में आ सकता है या S2G के 2 और विल इट बी नो फियर जो बैक एंड से आप देखिए वो फिनिशेस बटोर रहे हैं। क्या कमाल के तरीके से वो फिनिशेस अपने हिस्से में लेकर के आते हुए। कामिकाज़े
Still trying to survive. Zeus उनके सामने information मिल चुकी है. Helmet, vest, सब चीजें damaged हैं, but फर्क नहीं पड़ता. Will this be the need of fate? थोड़ा सा डैमेज जरूर दिया गया. 31 बुलेट्स उनके पास. एप्पल का हो सकता है कुछ. नेड नहीं है इन पे. For a fight. सोल के वो बैक एंगल पर S2G के 3 है. S2G भी निकाल सकती है. पूरी बैटल्स में कि अब हम फाइनल फाइट्स पर आए हैं. उसके लिए फिलहाल यहाँ पे नंबर्स अगर आप देखें भाई ये तो 1v1 की फाइट हो गई. S2G अपने आखिरी प्लेयर के साथ क्या चल रहा है. 1v1 की फाइट हो गई के साथ हो रहा अपने आखिरी प्लेयर के साथ. हालांकि रिवाइवल अगर वहां पे S2G देने में कामयाब हो जाते हैं तो स्टिल उनके पास नंबर रहेगा. बट जी नहीं, 1v1 की ये बैटल होने वाली है. किसने इमेजिन किया था कि दूसरे इरांगल में जाने के बाद दिन का ये पहला मैच इरांगल के रूप में, दूसरा मैच हमारे दिन का ये चलता हुआ, और किसने उम्मीद की थी कि इसी मैच में आने के बाद 1v1 की यहाँ पे कहानी आके रुक जाएगी. डिसाइडर फाइट देवियर सज्जनों. और अब देखते हैं कि किन के खेमे में हमें वो चिकन जाता हुआ देखने को मिल जाएगा. There are no second chances. कोई revivals नहीं है. Every man for themselves in a triple threat. No fear. Last time होरा ने जो चिकन निकाला वो नेम्सदाई को ट्रिब्यूट दिया था. इस बार they have to try to go for a fight, but they could not. बहुत ओपन था. S2G सोल के 1v1 की फाइट. 1 versus 1. सबसे बड़ी बात S2G के बंदे के पास नेड मोली दोनों है. लेवल 3 हेलमेट, लेवल 3 वेस्ट यूज के पास. एफएल वाले पे कुछ नहीं है. एक बार एफएल वाले की पोजीशन पता चली, केवल एक पेड़ उनका कवर है. सोल के एक स्मोक, एक मोलोटॉव, एक ग्रेनेड, लेकिन क्या उन्हें उस पेड़ का अंदाजा है? दोनों का पर्सपेक्टिव आप देख सकते हैं. सर्कल आ चुका है. ज़्यूस ही नीड्स टू मूव फॉरवर्ड. ज़्यूस ओपन में आ चुके हैं. सोल के उन्होंने देखा, जाकर के देखा थोड़ा बहुत शॉट. S2G निकाल लेगा. एक बैटल होगी S2G का चिकन. काफी आराम से क्या बात है भाई, क्या बात है. जाती हुई. They are just getting better at getting better. बुरी खबर यहाँ पे सारी टीम्स के लिए, क्योंकि S2G ऑलरेडी ओवरऑल स्टैंडिंग में क्लाइम कर रहे थे और भाई क्या निकाल दिया में और खूबसूरती बढ़ जाने वाली है. ओके, सेकंड मैच के बाद काफी कमाल का सेलिब्रेशन हमें देखने को मिल रहा है. बट कहानी अभी समाप्त तो हुई नहीं है. इसी तरीके का परफॉर्मेंस मेंटेन करना होगा. हालांकि फैन जो वहाँ पे सपोर्ट करने आए उन्हें पूरे तरीके से मोटिवेट कर रहे. कोच साहब सारी चीजें बहुत ही क्लोजली सुने होंगे और उन्हें भी लग रहा होगा कि काम बेहतर हुआ है. बट अगेन भाई इंग्लिश वाला लगाओ. भाई मैं हिंदी लगाता हूँ तो तुम कहते हो इंग्लिश लगाओ. इंग्लिश लगाता हूँ तो बोलते हो हिंदी लगाओ. क्या सीन है? They have been both electric. I mean, this shot from Zeus. Oh, the quick reactions, dude. That sent me. His eyes must be going two different directions, man. He'd be seeing everything. He was so locked in for an S2G fight. I don't even know how he clocked him, but instantly. He said it. Lightning flash reactions. That's what it is. I mean, so good from this team so far. I mean, they were involved in everything. Yeah. I think Horror, honestly, for them, yeah, it's a tough fight versus 4 tries, but you've got to be happy with the way that No Fear clutched up there. That is an incredible finish of those guys. Yes, Horror had a good spot on the sideline, but it's so many teams constantly pouring in, cycling out time and time again. I don't think that was an easy game whatsoever. भाई हमारी टीम कौन सी है? A little bit different with this lobby compared to what we had in isolation. Background noise ठीक हो गया शायद. Yeah, everyone's so much more. मेरे ख्याल से ना वो जब मैच चल रहा है उस टाइम पे वो बजा रहे हैं वो लोग उस चीज को. And it feels like sometimes we were seeing maybe a bit too much respect for the big dogs. Now everyone's playing on the same level. It feels like we're all on an equal footing here, and they're giving it their best. It really has changed the dynamic. But let's get down हिंदी वाले में ना क्वालिटी थोड़ी लो आ रही है, पता नहीं क्यों, और उसमें थोड़ा डिले चल रहा है. मतलब कम से कम 10-15 सेकंड का डिले आ रहा है. With a knife here at the moment for our first two games. And I'm here with our winners from game 1, of course. Ralph from Nigma Galaxy to talk about them. Some of the games that have happened so far. So let's talk about that first game in that late game against Aurora there. What was your anticipation as a team? Did you think Aurora had maybe moved a little bit earlier? Or talk to me about the late game and what you guys were experiencing. I mean, we didn't really know. We didn't have much info. But we just played it slow. We took our fights that we need to take, and we just secured the win at the end. I mean, it looks good at the end, right? Of course, getting that many points off of a Rondo. Not a bad start at all for a grand final like this. That second game, a bit harder, I think. Yeah, second game was a bit harder. I mean, we have a team hard dropping us, but they're scared to fight. I don't know they're camping. So we'll see next games what they do. I was going to say, were you surprised by that? Because it was in the back, we were a little surprised that they were going to come your way. Spanish language, भाई मेरे को नहीं आती यार.
it's your समझ नहीं आती territory. भाई So मुझे। what are they doing? They know we won't change, so they're just wasting their time. And they're coming to fight, but they don't want to fight, so I'm really confused right now. All right, well, thank you very much for joining me here, Ralph. You heard it out there. Ida, he's got his eyes on you. My name's Blank, and I've had 4 coffees, and I'm testing my reaction time right now. I'm Hot Jukes. I just had a massage, and this is my reaction time. Let's get it. जो इमेजिन करो वो क्रिएट करने की टेक्नोलॉजी बदल रही है पर इंडिया के एक्शन टाइम टेस्ट की आजादी सिर्फ देश को नहीं क्रिएटिविटी को भी तो इस इंडिपेंडेंस डे क्रिएट विदाउट लिमिट्स दैट साउंड्स अगेंस्ट गैलेक्सी 1946 स्क्वाड के लिए लोग नहीं मिल रहे भाई। स्क्वाड के लिए अगर लोग नहीं मिल रहे हैं तो ढूंढो यार रैंडम ग्लोबल चैट से आगे। अभी ये क्या कैसे कर रहा है? कुछ तो कर रहा है भाई। ये तो नींद में लग रहा है भाई मेरे को। तो भाई लग रहा है बहुत इजी है। ये तो आंख बंद करके कर रहा है यार। इसको हो क्या गया है? Yes, my reaction score is pretty damn good. I actually don't think it has something to do with anything else or anything like that. But what about you, Dukes? I don't care. Cut. बिक्सी भाई कौन सा मैप होगा अभी? अभी भी एरेंगल ही होगा। देखो पहला जो दिन का पहला मैच होता है वो होता है रोंडो, सेकंड मैच, थर्ड मैच और फोर्थ मैच होता है एरेंगल, फिर फिफ्थ और सिक्स्थ मैच होता है मीरामार। आई एम द विनर ऑफ PMGC। अच्छा भाई कितनी मैचेस होते हैं टोटल? टोटल 18 मैच होंगे। अभी 2 ही मैच हुए हैं, अभी तो 16 मैच बचे हैं। भाई जो बीच में वेट करना पड़ता है ना, इस टाइम में नींद आने लगती है, पता है। यार मैं नरूटो देख रहा था, नरूटो देख लूं क्या इसमें? नरूटो से आ जाएगा कॉपीराइट, प्ले कर दिया। बिक्सी भाई आप घर में ही अच्छे लगते हो, ऐसा है क्या भाई? वो कैमरा एंगल की बात होती है, कैमरा एंगल, कैमरा क्वालिटी। लगाओ मैच स्टार्ट होने तक आ जाएगा कॉपीराइट, आ जाएगा भाई, वो नहीं लगा सकता मैं। फोन पे फोन पे देख लूं तब आता लगे। अरे 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 आईपेक्स की रील देख रहा था भाई। अबे आईपेक्स क्या मार दिया भाई, कुछ तो गलत ही मार दिया आईपेक्स ने। ये क्या देख रहा हूं मैं? कुछ तो कंटेंट निकाला है भाई आईपेक्स ने। 24 वाला देख रहे हो क्या? अबे क्या मारा है भाई? सही मारा है। आईपेक्स ने लोल्स को 1v4 करा है, कुछ ज्यादा ही गंदा मारा है। और अच्छा खेल गया भाई। अच्छा खेला भाई, अच्छा खेला भाई, बहुत अच्छा खेला है। इज आईपेक्स योर फ्रेंड? हाँ, अभी आईपेक्स की मैंने वीडियो पे रिएक्ट किया था एंड अच्छा खेलता है, फिर मैंने भाई को अपना टीममेट बना लिया। अच्छा बंदा है यार, बहुत अच्छा बंदा है आईपेक्स। ही इज अ गुड गाय। मतलब गेम प्ले से तो अच्छा ही है, गेम प्ले से तो आईपेक्स अच्छा है ही। उसका जो नेचर है ना आईपेक्स का, नेचर भी बहुत अच्छा है आईपेक्स का, बढ़िया बंदा है वो। तो कुछ लोगों का होता है कि उनका गेम अच्छा होता है बट बाय नेचर उतना अच्छे नहीं होते, वो नेचर से भी बहुत प्यारा बंदा है आईपेक्स। क्यों मैक्स भाई? हम्बल है, यस यस हम्बल है, और हम्बल कर भी देता है सामने वालों को, है गेम में।
खुद हम्बल है और सामने गेम में हम्बल कर देता है सामने वालों को। स्ट्रीमर गॉट हम्बल। बस वो चेंज ना हो जाए, हमेशा साथ ही रहे। Was the biggest feedback that we gave this squad during groups and also survival. Puchu Puchu and Ipex. finally starting to put up those eliminations. As you can see, Nongshim Red Force right now with 9. Yeah, absolutely 7. I mean, they're finding आपका घर important कहाँ है? fights from their हल्द्वानी। rotation to solidify that position, especially on that northern side. They were able to sort of catch Furia off guard, and now I do want to kind of segue into Furia and to why I need to highlight this. But one of our most भाई आपके aggressive दूसरे घर का playstyle माइक अच्छा नहीं teams आता भाई। 26,000 का माइक खरीदा है यहाँ पे मैंने, घर पे मेरा जो है माइक है, तो ऑब्वियसली क्वालिटी कहाँ कंपेयर कर रहे हो भाई, ये बहुत अच्छा माइक है। कैमरा जो है ना मेरा, जो मैंने ये मेरा जो सेटअप है, मतलब मैं इधर का बता रहा हूँ घर का, ये कैमरा 180 का है, इसके लेंसेज वगैरह मिला के मैं तो बता रहा हूँ 3 लाख से ऊपर का है वो कैमरा टोटल वर्थ उसकी। तो भाई सेटअप मैंने बहुत तगड़ा बना रखा है, तो घर पे इसलिए मेरी जो स्ट्रीम की क्वालिटी होती है ना वो बहुत सेक्सी आती है। 3.5-4 लाख का पीसी है मेरा, मतलब मेरे टोटल सेटअप की वर्थ बताऊं तो 10-15 लाख है भाई, सारी चीजों को अगर मिला दूं मैं। क्वालिटी तो टॉप नॉच आनी ही है। They're all right. They are supposed to be that aggressive team, and they're currently not showcasing that. In the opposite, like you just mentioned, and I was mentioning too, Nongshim is putting up those eliminations. But something happened at the end of that last game. With the hovercrafts and S2G, that was a little bit sketchy. तुझे सुपर चैट का रिप्लाई देना आता है, हमारा नहीं भाई। मुझे नितिन भाई एक बात बताओ, मैं तब से किन लोगों की चैट पढ़ रहा हूँ, मुझे एक बात बताओ नितिन भाई, ये जितने भी लोगों की मैं चैट स्टार्टिंग से पढ़ रहा हूँ, मेरे को शायद अभी तक एक ही सुपर चैट आई है, मैंने सिर्फ एक सुपर चैट की पढ़ी है, तब से 2 घंटे से कौन सी चैट पढ़ रहा हूँ। पहले बोलने से पहले देख तो लिया करो यार, क्या बोल रहे हो। As many of those sight lines abolished as possible with those hovercrafts, and to be honest, S2G with those hovercrafts have been actually insane. It feels like because they take more damage to explode, and they have it's just a tank, and so they are able to just run with it. They were making crazy rotations from the very beginning of the game. They had those positions on the rocks in the middle of the water, which are normally inaccessible. But having 2 hovercrafts, I wonder if other teams are going to start picking up on that, because that was an insane game from S2G. I mean, we've seen it happen in the past. Max plays you just sounded like Max there for a second. I have to double check to make sure it was Michael Natura Jackson or if it was Max, man. But we're looking at the overall rating here. Nick McGalaxy is currently in first place with those 26 points. Aurora, top. What happened at the top of that bridge? That man ended up falling down, and he actually ended up hurting Aurora with the rotation that they were looking to do. भाई Aurora ने पहले ही मैच में इतनी किल निकाल दी कि इस मैच में बिना किल के मरे, तब भी भाई सेकंड में। भाई सच में 4 points on the board, you can't shake your head at. You know, same निगम आ भाई। Being able to get that win, push themselves up to 3rd place. You know, I like what we were talking about there about Nongshim a little bit earlier, right? They just look at the elements. Yeah, I mean, look at that, 18 eliminations, and they would have gotten even more if it wasn't for those clutch plays from Vitality right there, because we saw absolute Hyunbin in action making some serious plays. But big fan, Sergi. Super clutch moments here. Shout out to Mohammad Ashraf, मेरे भाई, big shout to you. PMWC at EWC 26. भाई आपका सेटअप दिखाओ, सेटअप वीडियो बनाएंगे भाई कभी। अभी मेरे को थोड़ा रूम में ना चेंजेस कर रहे हैं, मतलब रूम में बैकग्राउंड थोड़ा और इम्प्रूव करना है। अभी क्या हुआ था, मैंने पहले थोड़ा मतलब पहले जब रूम में पेंट कराया था 1-2 साल पहले, वो पेंट खराब हो गया था, अभी मैंने दोबारा नया कराया। तुम्हें दिख रहा होगा पूरा बॉल अभी एकदम बढ़िया लग रही है। अभी मेरे को यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐड करनी है, एक्शन फिगर्स ऐड करने हैं, बहुत सारी चीजें, लाइट्स वगैरह लगाऊंगा। जब पूरा प्रॉपर बन जाएगा ना मेरा सेटअप, फिर सेटअप वीडियो बनाऊंगा भाई। भाई विनर कैसे डिसाइड होगा? विनर डिसाइड होगा 18 मैचेस होंगे, उन 18 मैचेस में से जिस टीम के सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो टीम होगी विनर। Strategies convert into points, so that's what we need to see there. And India, if I have learned anything about OG, it is they need their 3rd game. So don't count them out yet. I've learned my lesson. Don't you stress. Orangutan in their 3rd match, what they tend to do is actually prioritize just kind of scoping what the rest of the teams are doing, making their game plan,
Game 3, 4 is where they set their sights on fire. Oh, I like that one. Now this is the group of death. This is the group of death, and this does feel like a finals right now with the way that some of these teams are playing. One man that I know is happy because he ended up picking that team that was in the top 3 here. None other than Team Flash. Maxman is looking to make sure he reverses curse. So let's send it over to Maxman and Kalaris. खतौली में कई बार आया हूँ भाई, बहुत बार आया हूँ. Very, very serious indeed. But of course, we take a look at how things have gone down so far here in these 2 games. And we did have that interview just with Ralph, who's also a little bit confused about said hot drop. I saw the hot drop that could happen on the map before this event. I'm like, they're not going to go for it because Nigma Galaxy has been dropping in Pachinki before I was even born. And yet, a team is trying to contest it away from them. And as he said, they're going for the hot drop, but they're not fighting, and they're confused, and they just see. नेक्स्ट मैच कितने बजे स्टार्ट होगा? होने वाला है, हो गया आई गेस. रूम ज्वाइन करके बैठे हैं लोग. स्टार्ट हो चुका है मैच. हो गया शायद सब. अभी 30-40 सेकंड रुक जाओ बस. थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स. कोई नहीं ब्रो. पॉइंट के रोल समझाओ भाइयों. किसमें कितने पॉइंट्स मिलेंगे चिकन और सर्वाइव ज्यादा मारने? देखो, चिकन पे मिलेंगे 10 पॉइंट्स, #2 आने पे मिलते हैं 6 पॉइंट, #3 पे 5 पॉइंट, #4 पे आई गेस 4 पॉइंट मिलते हैं कि 3 मिलते हैं? कितने मिलते हैं? शायद से 4 ही मिलते हैं. 4 ना, शायद 4 ही मिलते हैं. मतलब ऐसे ही कुछ है, ठीक है. और पर किल का 1 पॉइंट मिलता है. When it comes to the bridge as well, we're having kind of conversations in the back about this is a military island kind of heavy team, and yet the bridge बना लो seems like भाई, a conundrum to them. भैया They can't चैट solve कर like लो a एक Rubik's बार. cube. Vortex भाई मैं सोलो वर्सेस It was a स्क्वाड bit खेलता हूं weird, यार. especially because Top was on top of the bridge itself, and I think the player 4 Thrive's got an angle onto him, so he goes down. बट आप मेरा इंस्टाग्राम पॉडकास्ट चेक कर लो. अगर मेरे को कभी भी टीममेट चाहिए होते हैं लाइव स्ट्रीम वगैरह के लिए, तो मैं अपने इंस्टाग्राम के पॉडकास्ट में डाल देता हूं चीज. भाई मेरे को अभी टीममेट चाहिए, आ जाओ कोई खेलने. मैं टीम कोड दे देता हूं. ऐसा कई बार मैंने बंदे ऐड किए हैं, तो आप मेरे इंस्टा ज्वाइन कर लो. But the next wrangle, they need to show up. All right, well, thank you very much, Maxman. It is time to head on over to the commentator team once again for game number 3 of the finals. Let's do it. There we go. We'll pick up that throw. Thank you very much, James. There's a good arc on that one. Swift, great elbow on you. You can tell he used to be a drummer. In the drums of absolute anticipation and excitement here, Blank, as our 3rd game of the day is about to get underway. Yeah, national guns as well as we get into this game, because it is going to be a lot to talk about going so far. I mean, even from watching the desk to watching the stage hits to watching the interviews, there's a lot to break down over the last match, and even just the 2 games we've had so far. There's been a lot going on. 4 tries on the first game, having a little bit of a misstep, and then coming to the second one, looking a lot better. But so many good scenes. शेयर कितने की है बिक्सी भाई? ये मैंने शायद 18 या 20,000 की competitive as it gets. मैंने ना पता नहीं right now, I think we have the right teams here with us. शेयर ही करी थी. We go into our 3rd match of the day as we get towards our halfway point. चलो हो गया, नेक्स्ट मैच स्टार्ट हो गया. लेट्स गो. Shooting range to start off down towards Novo. Straight through the center, really easy one here, Jackie, very nice. I think most people can get exactly where they need to go. Aurora, last game, like you said before, looked a little bit weakened, right? I mean, even Max picked up on it. He was saying that, hey, as the team's very experienced around this area of the map, should not be going down so early like this. It should be a game that you are a bit more in control of. Wasn't the case here. Tiamba, भाई जोन बताओ किस साइड बनेगा? मुझे लग रहा है क्वेरी का साइड बन सकता है. South side of the map on the west. क्वेरी साइड, क्वेरी फेरिपियर या मिलिट्री साइड. Yeah, you'd hope they'd be able to bounce back from that one here. बताओ चैट आप लोगों को क्या लग रहा है, कहाँ बनेगा game 1, but that didn't really translate over. मैक्स भाई, हितेन भाई तुम बताओ. Has meant there was a little bit more fluctuation in the standings. याशना साइड as well. Far quieter. It was 16 eliminations on मुझे लग रहा है क्वेरी फेरिपियर साइड बन only सकता है. 2 added to that. याशना बनेगा मेरे हिसाब लग भी जहां तक लग रहा है. जिनकी साइड भी बन सकता है. Individual plays. मैं पहले कॉम्पी खेलता था यार, मेरे हिसाब से तो याशना बनेगा जहां से भाई खेलता तो मैं भी था यार, पर देखते हैं यार. We'll have something early here from Aura and Aurora. And where's that zone going to go? We've had some wacky zones this LAN. It's been kind of crazy. Yeah, most circles have just been very strange so far. बनने वाला है, सर्कल बनने वाला है. We had a couple towards the end of survival stage. अरे I बैंक was quite grateful for. अरे बैंक बन गया भाई. Teams can actually play. भाई मैं आईजीएल नहीं था ना यार. Nigma Galaxy. मैं आईजीएल हूँ ना भाई. Ida. No idea why this is happening, by the way. It's actually very strange.
I'll explain once it's done. I mean, Kalaris already went over it in the interview, but the context is crazy on it. With the M249, there's some good shots done. Actually, it does feel bad it being cooked is even worse. Same on side, launches some shots with Abacan. It's back and forth here. Swain last left to face. He's screaming. He's up. He's standing up. He's absolutely insane. For context, Enigma Galaxy has dropped in this location for years. Years of Watchparty एक और टीम आ गई यहाँ पे एक टीम एक और एक्स्ट्रा ये 40. They actually say it to the crowd and to all the players. 40 नहीं आई थी पिछली बार. Switch our hot drops. So it's never worth it to fight Enigma Galaxy. अरे MGX वालों को पता ही नहीं है 40 यहाँ पे. Sadly for them, Fourth Rise feels like we can get some easy points off the back of this one. You guys just MGX का बंदा पूरा This is a great read from Fourth Rise. I actually love this. On the angle. Spotting Lords. So as much as there was a pop-off of them defending their home turf on the hot drop, like you say, Fourth Rise know slightly weak. They'll look to get in there, twist the knife, and completely knock them out of the game, denying any more points on this. I mean, to be honest, you do wonder if Fourth Rise boys, they see a big hubbub go over by the Enigma Galaxy camp and they're like, they've just won that fight. We should get involved. We should fly over. Oh, cheeky work, but you got to make the point somehow. Ralph the M249 looking for some good damage, but the shouts from the crowd start to ring out. Fourth Rise might look to back away from this one, allowing Ralph as well as Satan to live another day. Circle did move up towards the northeast side. I don't know what Ida's doing, man. It's akin to throwing away all of your angles. Yeah, it feels like one of those where it's kind of cutting your nose off to spite भाई मेरा नाम भी अभिजीत शर्मा है. तुम्हारा नाम भी अभिजीत है क्या? Your spot too. If it's not working, you got to adapt. Gigantic prize pool on the line. You fought this hard to be. Bixi भाई मैं 20 minutes में आ रहा हूँ, ठीक है? मैं उस तरह बाहर जाना है. मैं just 20 minutes में आ रहा है ना? Discord पे हूँ. 20 minutes में. Can they find those elims? Okay, लड़ाई हो गई. 40 versus MGX. Counterplay. T24 spotted on the drop. उसको पता नहीं है. Let's see if he can go for the peak off this. वो बेट कर रहा है. वो बेट कर रहा है. T24 बेट कर रहा है. उसको पता है बंदा है यहाँ. बेट कर रहा है वो. तभी पूरा अंदर नहीं आया वो. 40 up top. T24, he's got an inkling. Smells him out on this one. इसने अगर पुट दे दिया ना भाई खत्म है ये. Senses his Reiatsu inside the building. Satan underneath. अरे ये मार slightly slow on the timing there, and T24 tries to use the DBS. He's swinging around in circles. Satan's not sure where to look on this. The rest of Fourth Rise will come into hold. Finds the first. अरे invite to help. यार पीक कर रहा था. वो पीक की जगह आगे जाता शायद ले जाता. It's an easy revive here on T24 inside the building. Church held. भाई लाइव स्ट्रीम क्यों नहीं कर रहे हो? लाइव स्ट्रीम ही तो कर रहा हूँ भाई. Then get the revive back on T24. Ralph's just had to stay, man. It's where he's been for so long. You'd be furious. Yeah, you'd be fuming. भाई NGX के साथ तो instant कर्म हुआ है. Twice back to back. It happens again. It costs you your game, and not even because of them. Yeah. Oh. Well, that's the thing. It just comes back to haunt you, right? Here we go. This is the full. IDA बाहर हो गई starting में. हाँ, IDA के points भी कम चल रहे हैं. Oh mate, it's carnage from the start. Obviously, we had Coops go down early, and like you say, they pop off to win it. We saw the celebration from Ralph, literally sending a message live in the event, live in the flesh. Said it with his chest. They deserve the drop spot, but Ida don't want to give it up, and it's just really making it uncomfortable for both of those teams to get anything in these games. It's the best Enigma Galaxy's looked in a long time as well. I think that's the saddest thing about it, and now it's happened in finals. It's happened so frequently in the past as well, where Enigma Galaxy's just got to challenge another team for their drop spot. Wait, Power it's knock not हो गया. guaranteed Power theirs for finish? sure, but knock finish हुआ. They've held it the entire कहाँ fight ले रहा है? Come on, guys. No fear getting run down by Aurora, as Top will find him on the move.
Four Fives did peace out, going slightly deeper into the zone to do a bit of loot, and obviously wasting a decent amount of time on that as well for the elim they were able to garner. Vitality. क्वालिटी बढ़ाओ, फुल क्वालिटी पे, मैक्स क्वालिटी पे देखो भाई। वाइटैलिटी हर बार भाई ये वो लूटती है भाई ये fiend as much as they can out from there. हर बार So split between the lake. Yes, Naya on the south side, on School, as well as Severny, shooting range area. Tiamba tightening it in with E-Arena, Aurora, Godlike. Salme currently holding down the gas station, pops up tire. He can't come through here for a ओ फंस सकते हैं ये लोग फंस सकते हैं। ओपन फंस सकते हैं। अरे गोलियां नहीं है इस पे, सोने पे। एमो नहीं है इस पे। Yeah, only 18 left. अरे मानिया देख के भाई। Turn some bodies cold on this push-up. सोमे में एमो कैसे नहीं है? So Aurora taking a fair bit of damage. More reserve taps now. Got to find himself some ammo to play with. Switch it out to the Tommy just to keep the pressure on them. Suppressive fire. Spreading it through. भाई इस पे एमो होती तो बच जाता यार। Not quite finding the shots over towards the मतलब किल निकल players. जाता। एक आधा निकल जाता ना ऑपरेशन बहुत ना। 10 seconds roughly on this one. Aurora still निकल figuring गया out वो। where they want to play. Probably going to be a big old retreat here out. Migrate for a lot of squads. Hard shift potentially. No, actually. Very, very kind. Up towards that north side. Obviously, Lake is a bit of an awkward one to play around. You're going to see a lot of people playing on the rocky outcrops. The staging that goes up towards Stalba. Big old mountainside. OG zone में जा रही है। There is also... Never mind, it's horrible. It's not great. You got the field down towards Yasnaya too, so there's not a huge amount of fun spots to play in. You have to decide a rotation in now and quickly. Do you wrap on the north? Do you wrap on the south? Because you can't really change that as time goes on because of Yas Lake. Mormon from E-Arena once again, being able to throw out some big uppercuts. That's back onto Aurora. So single knock there with the Tianba POV on rotation. Getting themselves into a fair place so far. Mormon keeping it going. That's Vitality as well with Razy hitting a very big blow back onto Godlike. A lot of fights breaking out across the battleground. Individuals being knocked, coming in with some show-stopping rotates. Oh, into the nade. Wiz had that one ready for him. Got it primed. I mean, Aaron comes in swinging. But yeah, got shot down very, very quickly there. Scarface looks to send the nade, but I don't even know if I think it's worth it anymore to go for this. Also deep on the south side of the map. Need to swing back further up in Yazway. Alula instantly takes up the cliffside. Aurora decides they're going to go loot Severny. I mean, to be fair, they had taken quite a fair hit earlier on. Spent a little bit of ammo. Potentially some of the vests are starting to wear down, some of the helmets. Get some resets on that before you get moving. Tiamba tackling against the Vitality Killer Bees once more. And it's Milu that's already showing that consistent form. Putting himself up to 10 elims on the day, I believe, then after that. Nice start for the first 3 games. Milu keeping it a little bit quiet, though. Now playing a little bit of a split on this one. They've got Eagle a little bit further forward, perched up. Over towards Aura. Very much slowing down now at the halfway portion, Jackie. Trying to maintain some of that lead because some teams have struck out in a big way. I mean, Enigma Galaxy absolutely 30 points right now. Aurora at 26. They were able to earn 3 after that last game. The first, I think they got 23 on that one. So last game was a bit of a dud. Find more of this one. Centers up over towards Tiamba, as well as Aura. So two compounds there are going to be a really big deal. Aura actually has the high ground on this one. The plateau that surrounds them. Very nice to be able to take shots out towards teams as they push on in. Sadly, Alula's
much more high ground spot gets pulled off. So you're going to have to move over towards that western side. Yasser pulled away. I like this move from 4 Thrives though, Jackie. This is good. 4 Thrives still looking pretty nice in some of the encounters we've seen individually. Another roster we know that can be very explosive. Let's see if they can bring the boom on this one straight up towards the setup from Alula. Quick on top. Got a pump action in the back pocket ready for it if they can close the gap. Bit of overwatch from R3B on the top side with Claws relatively close to assist. Fast reactions onto the position of Phalag, but the shot's not connecting. 40 versus ULA. Phalag, need to Claws as a nade though, it's not the craziest of sends on this one. Good bounce on it actually. That would have been on target if he hadn't moved. I mean, Phalag just takes the time. Here's the arc on that one. So he doesn't want to have any part of it. Tough circle though, man. Very, very tough circle. The majority of the center is taken up by that water. I actually do really like S2G's position. They're playing over towards those compounds that sit just a little bit east over towards the lake itself. Oh, sorry, the cliff face. You got flash down towards those compounds, but S2G currently playing on that rocky outcrop on the northern side, just holding out teams on the south here. Tiamba's actually even going to crunch in towards that little bank. जोन किलर भाई थैंक यू सो मच फॉर समोसा यार क्या बात है गाइस आप लोगों के पास भी ज्वेल्स वगैरह हैं तो सेंड करो यार अपने भाई को not wanting to risk it too much. Meanwhile, OG crossing past the crosshairs of non-ship Red Force with Zizzy taking the peak over the top. Got the heavy weaponry ready to rock them if they stay close by. And luckily they have at least been able to create some space between the two. Double back over to the bridge where Rolf is stationed. गाइस इसने अभी तक स्ट्रीम को लाइक नहीं करा है, स्ट्रीम को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना गाइस. Struggled versus them earlier on his flying maneuver into the gas station. Tried to go for the movie entrance, but we went straight to credits instead. Yeah, Ulf hoping to hold them on the bridge side. Next circle though, I'm feeling the peaks का एक बंदा अभी भी survive कर रहा है. Aurora currently have a really strong position on it, and we do head over there. In fact, but it's like a case of Aurora holding the central spot. They have a lot of 360 vision, but it's very open. पता है ULF वाले ना OG वालों को bridge cross नहीं करने देंगे. अगले zone में दिक्कत होगी. Radio towers and the square concrete that sit underneath them that end up being like where you play. You literally just lie down next to them, try and set up vehicles. You see Vitality already sending over. But this is quite a nice spot for Aurora. It's a tiny bit of hard cover, a little bit of a crescent lit behind them as well. And that's the last man for Enigma Galaxy, and Ralph trying to stay alive for as long as he can, but finally falls to S2G. S2G possibly being collapsed upon as well by 4 Thrives. They fall next. Yeah, good fight. Very good fight from 4 Thrives. S2G tried to jump the gun there, Jackie, and ran straight into titanium wall. बहुत सही exposing video था players from Aurora though. Another good game here. Sits them a little bit further ahead. Make up for that previous match there on Arundel. Not the greatest of pushes across the bridge to begin. To be fair, with Nigma and S2G going down early, not really acclimating too many points on this one. It could be the dream recovery for Aurora if they can keep it up. Unfortunately for Godlike, Adamino unable to withstand the hit that is thrown towards him. Fury will get their mates back up and live on to fight on this one. Subhagya bhai, thank you so much for samosa yaar. Game so far. आतंकी नॉक हुआ. Nongshim on that south side, actually trying to push on him. There's quite a few teams there. Nongshim's just going to
barge over towards OG. Tanky's already down. Another nade towards the backside here. Good damage from Hyunbin, as always. Looking very, very strong. Hits the deck. Good dodge on that. Oh, nice nade. Second nade's a bit stronger though. Now needs to get back into action. The rest of Nongshim Red Force lagging behind as Flash still continues to nuisance tops. वो इनके किल चोरी हो जाएंगे यार, इनको कंफर्म करना पड़ेगा. Back and forth blows, Orangutan still being able to withstand. Uncomfortable for Nongshim, actually, man. Yeah, that's a nice flick back up towards the अगर ये बाहर जाके थोड़ा सा लेट के अगर करें ना, स्मोक करके, फेंसेस के नीचे से मार सकते हैं. किल कंफर्म करना बहुत जरूरी है यार. I mean, no position to help the rest of his हर बार तो भाई किल चोरी हो जा रहे हैं यार. It's a cool sideswipe caused so many problems on the back line there for Nongshim Red Force, just weren't quite quick enough. बोड़ा भाई, thank you so much for mango लस्सी यार. Deeper look into this. क्या बात है? मैंगो लस्सी पिलाओ यार, लग आएगा गाइस. Investigate. लास्ट टाइम तुम लोग दबा की मैंगो लस्सी समोसा खिला रहे थे तो आ रहा था, लग आ रहा था फिर. He's still trying to get an angle on this. Minute you got to move, he'll be ready for the catch. And Furia over on the other side of the coast have been taking shots over as well, so it's all a little bit uncomfortable for the four squads that have been collapsing in onto that one position. This gas station for OG somehow being a very formidable defensive area. Calling it from left side 3 there. I got a little bit lucky, but yeah, Aurora in a really, really good spot now. This is definitely redeemable city here for Aurora. We just need to not see them go for something silly again. That is all. Yeah, just keep their cards close to their chest and be able to close this one out with some good plays. To be honest, mate, that is kind of Santosh bhai, thank you so much for hiding yaar. WMX Army, thank you for samosa. With the other squads above them falling out early, it has presented that opportunity. And like you say, if they can grab it, you've recovered from that. We can all forget about game 2. Everything looks good for them. They'd actually be on that podium spot in first place come the end of this game. But that's still in the future. Still a lot of other teams that could potentially look to upset them. So we'll stick with the narrative as it develops. This is their position right now. 4 Thrives going in against the arena. Doc looking to decimate some damage out, and he does it nice. Good shot onto Falak, a little bit more they can do here. I like that though. Good smoke. Over towards the rock side to kind of isolate this engagement between them and 4 Thrives in the arena on the northern edge. Makes a ton of sense to me as well. That vitality location is going to be a real problem for you. That's a long nade. Actually hits on target. Great damage. And they just keep on pumping in. 4 Thrives are out. But yeah, I mean, that's some massively long nades on that one. Just chaining them together as well. One after another, after another. They want to go in to grab the bits. Drop the smoke, try and stay alive. The issue is you're now in a position where other teams can take shots onto you for free. Yeah. Good shot. I mean, Doc is holding on. He is holding on. I think he's got that mentality where it's like, well, I'm sorry guys, I ran out that time. I will play anchor for the rest of the day, and I will keep you lads safe. It's a good shot over towards Silence. The rest of Fury, you need to re-angle over towards it, but it takes a gun away from that western side. But Aurora had to do that. They had to push over towards 4 Thrives. They knew that it's not likely in the near future they're going to be getting many more death crates, and they need that util. They need that ammo to carry on inside of this match. Tiamba though looming off in the wings. भाई मैं आपकी स्ट्रीम 4 फोन से देख रहा हूँ. क्या बात है भाई. सब्सक्राइब भी किया तुमने 4 फोन से. Tiamba, they've been doing a pretty effective job of harassing a lot of our other squads from distance as well throughout the past couple minutes, keeping pressure on them. Playing a little bit safer here in their setup. Window peak with good eye line onto some of the other teams. Scarface on the long wrap around back up the coastal ridge over towards the bridge side. Going to be coming in from the back near Vitality and Flash. This is his angle on the move. Ooh, spotted out. Starting to lose his HP bit by bit. Got to drop down to the deck and hope that he can hold on. Kind of unsure how he's lived this long. I mean, Tops has got to know someone's mover here. The pitter-patter of the footfall. Bows at distance. Scarface is instead just going to go for the heel.
Tops pulls the pin. He should know. It should be right on the edge of the blue here. Good airburst will do the trick. Ruins the amount of healing that came through there. Aura from the sidelines, though, will get sleepy and over towards Bose. Top, though, is the one to refrag over towards that. Tiamba, Aching moving forward. Gets behind that radio tower. This is a good spot to aggress over towards Aurora on. But more importantly, hold out on the southeast side. Good nades again. Goodness me, Aurora's having none of it. कोई मतलब ही नहीं है भाई, बच ही नहीं सकते ये लोग। on that one. नहीं बचेंगे, नहीं बच सकते, नहीं बच सकते। Over the top side, trying to arc it round the corner. दूसरी साइड जा नहीं सकते, नहीं बचेंगे। एक नेड और आ जाए ना, फटेंगे। Enough to get the pick up play back on Aching to stay alive. I wonder if they're even going to push this, Jackie. You could. You get the spread on it, just try follow up off the back. You know they're weak. Man, I think they just wanted to get the flush at least, but not meant to be. That's a lot of nades invested there for basically nothing. Aching's going to send back one of his own. Now they're fully set up over here on the radio tower. Good Molotovs, man. A bit more damage done. Chip damage from the nades should be good enough. So start to bombard now. They're splitting the difference on these ones. They know they have to go for one side. It's over towards Dog. Survives the first blaster shrapnel and should survive the second. So many nades though. And Doc, although the shrapnel hits him in the face, he takes that peek and shuts one player down once again. 6 nades thrown out for no real follow-up from it. So it goes both ways for either of these two teams. Top with the instant adjustment back over onto E Arena. No, he's being collapsed upon from 2 sides between this team. भाई अभी 2 दिन बाकी है ना। हाँ अभी तो फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे का भी तीसरा मैच है यार ये। अभी तो 2 दिन बचे हैं। E Arena, you know, actually haven't been too bad. I think for the points they currently have, it's 19, but they've been consistently up towards at least the top 8 every game. Vitality still taking more shots here. Tiamba is the one to take down Tops. Tiamba's playing as a 4-man, and genuinely the way they weather the storm here versus Aurora, they have a place to play inside the circle going forward. It's more about dealing with the couple of players inside of that shack right there, and it's hard to line up those nades past the side. Always have that angle of Doc to worry about. He is so critical to his other 2 teammates living. Schweppes with a bit of a forward scout play in the buggy. Reading onto it. QZZ was not towards the backside. Thing is though, they've been here for so long and they've invested so many nades, so many bullets that they're starting to run dry and can't actually push out to get themselves anything. Availability of crates becoming an all-time premium. The longer this goes on, the worse it gets for Tiamba. Yeah, they needed a break, honestly, and that break was going to come in, be able to get those shots, get those nades over towards Aurora. E Arena making a massive swing. Fame भाई होते तो इन सबको टोपा दे देते. To play around with too. QZZ finds shots over towards Vitality. They are trying to stop 2 teams from squeezing them together. But they will. This is a good play. This is actually a good play. It's a desperation play, but it's what's needed for Tiamba right now as Aching moves in. Where's the rest of the team? QZZ moves up. Oh, this is unbelievable. Razak raising hell amidst the chaos as he stands strong to punish back. Vitality looked like it was all said and done, but they pop off on that one against Tiamba's clash. They needed to shut them down to get themselves any sort of ammunition, any kind of supplies to play on, and it does not work how they wanted. Wild stuff. The Arena now. Joel's the first to fall off the back of that. They have just played this game nice and slow from that northern side, trying not to get involved in things. They've been saving up these nades for that end game. Mormon will move in and just completely cleans them out. This guy's been unbelievable with the S12K today. Finishes off the stragglers. Slowly but surely, the team's exit stage left and the final fight begins to have itself set up. Furia coming back in with some of that firepower we had seen prior. Good damage onto E Arena.
It's Tony K that's knocked behind the hard cover. Joker looks to wrap over to see if he can save his mate and put them back into an equal situation. 3 versus 4 right now. Schweppes warding off Ayala. Igor's Mormon still coming out strong. He wants more on the game, and they are delivering. Igor's down, big player on the squad. Now it's time for the likes of Ayala as well as Chief to stand up tall. E-Arena, they saved all their potential up for that late game, though. We saw how much ammo they still had more, how many smokes they still had remaining. His team basically played this one out for the chicken dinner. For E-Arena, it's sort of not worth it unless they get the chicken dinner on this one. The amount they saved up, 5 nades still in the hand of Schweppes. Getting a second place is nice, though. But yeah, it's this open ground, disgusting to work with. Furia या फिर फ्यूरिया, हालांकि फ्यूरिया के मैं स्प्लिट को देख रहा हूँ, चारों तरफ सिर्फ वही है और वही दिख रहे हैं। हालांकि उनके एक टीममेट जो डाउन है, उन्हें रिवाइव देना काफी डिफिकल्ट। साइलेंस विद एन MG3, एक बार गोली चलानी शुरू कर दी है। जब उनकी मैगजीन खत्म होगी, वो इस चिकन डिनर को एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन सही तरीके से चलानी पड़ेगी। फ्यूरिया के पास इसी चीज का एडवांटेज है, हालांकि मैन एडवांटेज पर वो आ चुके हैं। हिगोर हैज बीन टेकन डाउन। E-Arena फॉर्मेशन के ऊपर ये खेलना चाहते हैं। अयाला, ये अयाला एक विंटेज अयाला देखने को मिल सकता है। टीम क्वेसो का वो अयाला देखने को मिल सकता है जो अपनी टीम के साथ तब भी यहीं था और आज भी यहीं पर है। फ्यूरिया, चैनल योर इनर क्वेसो फॉर अ क्वेस्ट, और वो चिकन डिनर का ही होना चाहिए। हालांकि ये ग्रेनेड्स, E-Arena ने अभी तक जो यहाँ पर बेहतरीन गेम प्ले दिखाया, उसमें ग्रेनेड्स का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। Will they do it again? चीफ थोड़ा सा सेफ साइड रहते हुए वेटिंग गेम यहाँ पे फिलहाल चलता हुआ कि सामने से कुछ गलतियां हों, जितने भी यूटिलिटीज है वो इस्तेमाल में लाए जा चुके हैं। प्लेज उनसे कंफर्मेशन हाँ यहाँ पे आता हुआ उनकी टीममेट का, क्योंकि नॉर्दर्न साइड पे नॉक थे। अब एक प्रॉपर 3v3 की बैटल यहाँ पे होने वाली है। 4v4 के साथ कहानी की शुरुआत, लेकिन अब एक बार फिर से बराबरी पे बातचीत आ चुकी है और E-Arena के पास प्लेइंग एरिया ज़्यादा है। जस्ट फॉर इन्फो, क्योंकि हम फाइनल स्टेज की तरफ जाने वाले हैं और इसके बाद सर्कल का जितना प्यारा एक्सेस आपके पास रहेगा, अपोनेंट के ऊपर आप उतना प्रेशर बना सकते हैं, क्योंकि मूवमेंट की बात आती है कि पहले कौन मूव करेंगे, कवर किन के पास बेहतर है। तो अभी सब चीज़ें E-Arena के फेवर में देख रहा हूँ। कुछ समय पहले यूरिया के पास था, आई डोंट नो वो कैसे टाइम के साथ वो गवाते ही चले गए, वो यूटिलिटीज़ के कारण। बट अब E-Arena इस मैच को अपने नाम जरूर लिख सकते हैं। अगले 6 सेकंड के बाद सर्कल का श्रिंक आने वाला है। जोकर के पास आप देखिए वो ग्रेनेड्स भी है, वो कवर्स भी है। सेम स्टोरी लाइन यहाँ पे बनती हुई और E-Arena के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा यहाँ पे बनते हुए। इस गेम के अंदर वो पेशेंस की पूरी कहानी आ चुकी है। रावण जो पहले उठेगा शायद वो बहुत बड़ी गलती करेगा, क्योंकि उस इंफॉर्मेशन से आप पूरी टीम की इंफॉर्मेशन पर खेल पाएंगे। अयाला, दैट ग्रेनेड इज चेजिंग हिम। ओह, नेट से अगर फट जाता चलती बगी से भी सर्वाइव करते हुए। क्या क्लिप निकल मजा क्लिप निकल जाती, क्लिप कट जाती। अरे बैंक से ब्रूटल कब बन जाए, क्लिप कट जाती है। इस क्लिप के बारे में थोड़ी देर में पता चलेगा। जोकर का इंफॉर्मेशन देखिए, वो बैकएंड से साइलेंस को देख सकते हैं, पूरा इंफॉर्मेशन अपने हिस्से में रख सकते हैं। बट अयाला वो आगे जा रहे हैं, क्या ये गलती बन सकती है? अरे अयाला, और जैसी बात है कि जो पहले उठेगा वो बहुत बड़ी दिक्कतों में आएगा। अयाला का पिक होना ये बहुत बड़ी गलती है। साइलेंस, he might as well just follow, but उस साइलेंस से पहले 2v3 बचा है। बहुत ज्यादा चीखना चिल्लाना पड़ेगा इस MG3 के साथ। 90% रखिएगा, it'll do what it'll do। देखा तो जा चुका है यहाँ पे साइलेंस की तरफ से, लेकिन वो अटैक अभी कर नहीं रहे। मॉली भी है, आपको इस तरफ देखने की जरूरत पड़नी चाहिए। चलिए अच्छी बात है, मॉली वहां से हट गई। जोकर वो जम करके इन्फॉर्मेशन निकालना चाह रहे। ग्रेनेड एक बार फिर से कुक करते हुए, क्या ये साइलेंस को एग्जैक्टली साइलेंस कर देंगे इस एंगल में, या फिर उन्हें मौका मिलने वाला है? क्योंकि ग्रेनेड उसी डायरेक्शन में, लेकिन जो एक्चुअल प्लेसमेंट की जरूरत थी वो नहीं मिली। एक बार फिर से 2v2 पे आती हुई साइलेंस
फ्रेंड्स उसकी पोजीशन यहाँ पे रिवील हो चुकी है MG3 का चलवा उन्हें अब दिखाना पड़ेगा यहाँ पे वो क्या करना चाह रहे कवर में गए और अब फाइट देखिए 1v2 के यहाँ पे होने वाली टीम के साथ अटैक करने का डिसीजन फर्क नहीं पड़ता अच्छा ट्राई करा उसने अच्छा ट्राई करा इतने वियर्ड सिचुएशन में आने के बावजूद चिकन डिनर निकालने में कामयाब हुए और क्लाइंब करने की सबसे अच्छी शुरुआत भाई ऐसी सेम सिचुएशन में वो आईडीए थी कौन सी टीम थी उससे बंदे ने 1v3 करा था कौन सी टीम थी वो जो इन्होंने अपने हिस्से में ला करके रखा है व्हाट अ गेम ऑफ माइंड्स बढ़िया खेले भाई लोग EWC में सिर्फ बैटल रॉयल्स नहीं है शतरंज यहाँ भी खेली जाती है और ये शतरंज इन दो टीमों के बीच में आई आखिरी सर्कल पे आई कमाल का गेम लेकर के आई है ऐसे गेम्स बहुत रेयर होते हैं जहां पर आपको वेपन से ज्यादा अपने माइंडसेट पर जाना है और ऐसे में एक बड़ी गलती वो अयाला के द्वारा हुई थी सबसे पहले जरूरत से ज्यादा आगे जाना अयाला की उस गलती ने ये गेम पूरा पलट दिया हाँ आईडीए थी वो आईडीए थी रहने का होता ही ना बट उन्हें सौंपा गया गाइस देखो जो पहला दिन होता है ना उसमें क्या कमाल अपना जो इंडियन टीम्स का रहता है क्योंकि भाई देखो गेम मैन हो गया था तो इंटरनेशनल लॉबी उतना रेगुलर खेला नहीं है रेगुलर क्या कभी खेला ही नहीं है ना तो उनको नहीं पता बाकी टीम्स की स्ट्रेटजी तो अभी ये लोग क्या करते हैं फर्स्ट डे ना पूरा ऑब्जर्व करते हैं कि बाकी टीम्स कैसा खेल रही है तो जैसे इनको आइडिया लगता है कैसे खेल रही है उस हिसाब से फिर ये अपना स्ट्रेटजीज बनाते हैं अपनी गलतियां नोटिस करते हैं फिर डे 2 डे 3 में कमबैक होता है भाई तगड़े वाला होता है और कोई दिक्कत की बात नहीं है the play almost works but the speed at which they do it like we're getting crunched right now we have to just fly over towards this team and take them out they have no qualms about just fully going for it I really like that and I think that that's the type of play style that's going to win you games more often than it loses them no absolutely I think again that was one where it was like Razak just kind of popped off on the hold yes. It was honestly it was better play from him than it was bad play from them he just popped off on a solo mission where it's like oh fair play you've actually kind of owned us there but what the play was meant to do was great they needed ammo they needed supplies and they went for it so absolutely it was a head-on call it was the right thing to do and the right thing for us to do right now is to go for a little moment with the boys over on the stage and we'll be back real soon Powers here at PMWC 26, joined by John Allen, Kalaris, and Neptura, and we're playing a round of Hot Drop Dance. Ooh, we're going to be getting stuck into the board, hopefully. Maybe not for some. Some are having a bit of trouble during practice, but we're going to be taking some shots at the board. The person with the least score is going to have to give their hot take, so let's jump into it. You guys, I think you two have to go first. I think we get Nep up there first. Let's get Nep's in a prime position for this. I feel like I'm in the danger zone, but let's see. Get ready to dodge. Oh, it's your best one. Yeah, that's it's on the board. All right, Very much. shuffle up. Thursday. And Kalaris up to the bat. Oh, okay, all right. Okay. This is good. This is good. There you go, James. There you go. Shuffle in. Thank you. Don't hit me, please. Oh, it's a 17. Currently, Nep's in last with 6. No way. Oh, a double 17. It's a triple 17. It's a triple one, I don't know. That means Neptura is last. Are you serious? Yep. What's your hot take, Neptura? My hot take is that the Uzi is a bad weapon and shouldn't be played. There you go. That's it. Wait. This one was Neptura. That one was mine. In the bullseye. No, it's in 25. Yeah. Oh. It's you. Well, she's already done a hot take now, so. Wait. You did that on purpose. No, I didn't do anything. All right, here. Go on. John starting us off. Let's see. Oh, hey. A 5. It's Not in. bad. That's all that matters, really. It's on the board. Here we go. I haven't missed. Kalaris now. Forearm strength. It's good. It's good. Ooh. That could be a treble. That's nice. Get out of the danger zone. The splash zone's coming for you, Kale. Good maths. Oh, that's a triple. Okay. Triple 3. God. All right, here you go, mate. Take this. I'm pretty sure it's currently the lowest. Wait, no, it's not. I'm John's on a the 5. lowest. Yes, John's the lowest. Or is that a 2? It's a 5, I think. It's a 5. Oh, and that's a 2. That is a 2. I've been saved by the upside down It's version true. of my own Jackie, number. it's your turn. There you go. Bosh. Okay. Hot take.
Dino Park and Vikendi, infinitely better than Ronda. I miss it. Bring it back. Oh, okay. All right, considering I actually lost the first round, I should probably do a hot take because I cheated you out of it. I'm so sorry. Tiamba will not win PMWC despite looking really good. I feel like I've got to follow in with a hot take as well. Oh, okay. I feel like over-reliance on ARs, nonsense. Hi, sir. Hi, bro. Hi. Give the players a little bit more expression in the secondary. हिंदी वाला लगाऊं क्या? थोड़ा मुश्किल हो जाता। बैक टू बैक पुश आ रहे थे उनके ऊपर। अगर मैं यूएलएफ की भी अगर मैं बात करूं तो उसी टाइम पे वो निकले थे एंड उनके ऊपर टियानबा का भी शॉट्स आया था जिसकी वजह से थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिला था, नहीं तो ओरेंगुटान के लिए सिचुएशन और ज्यादा खराब हो सकती भाई आधे तो बंदे बोल रहे हैं इंग्लिश लगाओ, आधे बोल रहे हैं हिंदी लगाओ। अभी भी होप्स है, बस 3 मैचेस हुए हैं, बस तो नहीं कहूंगा 3 मैचेस हो गए हैं, लेकिन अभी भी होप्स है, मुझे लगता है कि कमबैक आ जाएगा। आई थिंक जैसा आपने कहा कमबैक की उम्मीद तो करी जाए, कॉज अभी ओवरऑल अगर फाइनल्स की बात करें तो 18 में से 3 मैचेस हो चुके हैं, 15 मैचेस अभी भी बाकी हैं और देखना यही होगा कि क्या आज का दिन समाप्त होने से पहले टीम्स रिकवर कर सकती है। बट फिलहाल नजर डालते हैं पिछले मैच के हाइलाइट्स पर। Play is in our DNA. Whenever we let it out, it becomes our superpower. Now कैसे हो सर? मैं बिल्कुल बढ़िया भाई, मैं बिल्कुल बढ़िया। आप बताओ आप कैसे हो? मुझे तुमसे मिलना है, कभी मीटअप होगा तो मिलेंगे भाई, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। भाई जोन का सीन हो रहा है यार, बहुत ज्यादा जोन में फंस रहे हैं बार बार। बिक्सी यार बताओ, क्या बताऊं ब्रो, क्या बताऊं? मैच कब स्टार्ट होगा? अभी हो जाएगा, 5-10 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा अगला मैच। उसको गाइस जितने भी लोग देख रहे हैं ना भाई, स्ट्रीम को लाइक सब्सक्राइब कर देना गाइस। 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं। मैं सोच रहा था गाइस यार मेरे बर्थडे तक करा दो यार तुम लोग। नेक्स्ट मंथ मेरा बर्थडे है 11 सितंबर को, तो तुम लोग करा दो यार 1 मिलियन तब तक। देखिए हाइलाइट्स हमने एंजॉय करे, बट मैं ना यहाँ पे कॉन्वर्सेशन हो रही थी वो भी एंजॉय कर रहा था। आप कह रहे थे कि वेट करना चाहिए और टीम्स को, बाकी टीमें इतना ज्यादा आगे जा रही है, हमारी टीम्स थोड़ा सा पीछे। टीटीआर कितना इंतजार? मुझे लगता है कि आज के दिन के एंड तक तो एटलीस्ट वेट करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट 3 मैचेस हुए हैं, अभी भी एक हिरेंगल 2 मिरामार बाकी है। चेंजेस हो एडवांस हैप्पी बर्थडे ब्रो, थैंक यू। टैक्टिक्स एंड ऑल में वो चेंजेस आ सकती है, तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि लास्ट तक रुकिए। I mean, see, मैं एक ही चीज बोलूंगी कि बूंद बूंद से सागर बनता है करके, ठीक है? तो अगर आपका एक मुकाबला भी अच्छा नहीं जा रहा है तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। तो ऑफ कोर्स आई मीन थोड़ा सा इंतजार करना अच्छी चीज है, बट इंतजार करने के बाद अगर आपको वो चीज नहीं मिलती है ना टीटीआर, तो दिल बहुत दर्द करता है। अभी मतलब बट जितनी बूंदें गिरी हैं उतने में तो पिछला जो ग्लोबल रिजल्ट था वो भी वॉश अवे नहीं होगा। आई थिंक थोड़ा तो कुछ करने की जरूरी है, बट एक बात तो है, हम थोड़ा स्ट्रेसफुल फील कर रहे हैं अभी, बट द फैंस आर स्टिल सपोर्टिंग। आई थिंक हमें फैन से कुछ सीखना चाहिए, तो इसीलिए चलिए स्पेरो के पास चलते हैं, जिनके साथ आई थिंक वो एक फैन के साथ जुड़ चुके हैं वहाँ पे, जो इस समय टीम्स का हौसला बढ़ा रहे हैं, और आई थिंक ये बहुत जरूरी रहेगा इन 3 मैचेस के बाद, ताकि सबका हौसला बुलंद रहे। चलते हैं स्पेरो के पास। मेरे फोन में गेम क्रैश हो रहा है यार, अब इसका तो कुछ नहीं कर सकते भाई। बिक्सी भाई गॉर्डन या ओजी भाई, देखो यहाँ पे इस चीज में फेवरेटिज्म मत करो यार, दोनों इंडिया की टीम से, मतलब इसमें कंपेयर मत करो भाई, कोई भी जीत जाए बराबर खुशी होगी भाई मुझे तो। और मैं जर्मनी में रहता हूँ, बट खास मैं मैचेस देखने के लिए पेरिस आया हूँ। तो मेरे दोस्त ने बोला कि अपन जाते हैं चलो पेरिस, तो उसने मेरा बुकिंग किया था मोनालिसा का, बट मैं बोला कि वो छोड़ के मेरा 2:30 का बुकिंग था, बट मैं छोड़ के मैच देखने को आया हूँ। क्योंकि क्या सीन है कि फर्स्ट टाइम इंडिया की टीम फाइनल में पहुंची है, मतलब वो भी अपन क्वालिफाई करके आए, इस टाइम अपने को डोमिनेट करके आए #2, बट कर्ज तो है #2 का, वो तो उतारना इस बार हुआ।
तो मैं इसलिए आया हूँ कि अपने को ओजी और गॉडलाइक को पूरा दिल से सपोर्ट करना है। और मैं सबको कहता हूँ प्लीज़ दिल से इंडियन फैंस को, मैं जब यहाँ पे घूम रहा हूँ तो बाकी टीम्स के इतने फैंस हैं जो भी यूरोप में है, प्लीज़ टिकट निकालो और पेरिस आओ, अपने टीम को बूस्ट करो, उनको बहुत ज़रूरत है। मेरा घुसबम देख सकते हो कि कितना घुसबम है अपनी टीम को, वो जीतेंगे, सिर्फ तुम उनको बूस्ट दो। इधर इतने फैन चिल्ला रहे अपना क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है ये? इतना मेरे को वो ये लग रहा है कि अपने फैन नहीं, अब हम चलाते हैं, आ जाओ करे क्या दिल से गॉडलाइक हो जी। हां, इंडिया ओपी आखिर में, ठीक है, चलो ठीक है, 3 2 1 गो। दिल से इंडिया ओपी, लेट्स गो, बेस्ट ऑफ लक गाइस। भाई मेनली गॉडलाइक का सपोर्टर है भाई उनका। लेट्स गो मैन, have a nice day. Have a nice day. India OP. Let's go. That's the power of the fans here. Excitement बहुत ज़्यादा है। अगला मैच शुरू होने वाला है। Let's enjoy. आप भी पुणे से हैं? वो इतना मोटिवेटेड कैसे है? आप सुबह हमको चेयर कर रही थी दर्शिता, क्या हो गया? क्योंकि वो पुणे से पेरिस में है, मैं पुणे से मुंबई में हूँ, आपको डिफरेंस नहीं दिख रहा है? वो उन्होंने मोनालिसा देखने से ज्यादा आज इंडियन टीम्स को जीतते हुए देखना प्रेफर किया है। अभी तक तो वैसा हुआ नहीं है, बट उम्मीद है हमारे प्लेयर्स इनको अगले 3 मैचेस जो हैं उसमें एक मास्टरपीस दिखा दें। I mean, देखिए मैं बहुत ज्यादा बताओ क्या बताऊं सुनील भाई, आपका सिर्फ मैसेज आया है, बताओ मैं क्या बताऊं? से कि उम्मीदों पे दुनिया कायम है, क्या बताऊं? उम्मीद रखिए आज के दिन के अंत स्मेल टाइगर क्या बताऊं भाई? आपने कोई स्टार्स देखे होंगे कि कमबैक आएगा करके, तो लेट्स सी कमबैक आता है या नहीं आता है करके। टीटी, आपका तो नाम ही टीटी है। टिकट उन्होंने जाने दिए एक ऐसी। कमेंट्स पर फोकस करो, क्यों नहीं जा रहे तुम? कहाँ नहीं जा रहा मैं? अरे क्या हो रहा है? देखिए मुझे लगता है कि मैं भी होता तो जाने ही देता, क्योंकि हम फिर से पेरिस जा सकते हैं, फिर से हम मोनालिसा देख सकते हैं, लेकिन साल में एक ही बार होता है ये टूर्नामेंट। तो बहुत मैसेज किया हूँ। अरे ये क्या हो रहा है? ये स्ट्रीम अटक क्यों रही है? सपोर्ट तो करना चाहिए। वाह क्या एक्टिंग है। स्लो क्लैप्स। बहुत मैसेज किया हूँ, तुम क्यों नहीं जा रहे, इतना मस्त खेलते हो ब्रो। मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ यार, अब ई-स्पोर्ट्स में खेल के छोड़ चुका हूँ यार, बहुत टाइम हो गया छोड़े हुए। अरे फिर अटक रही है स्ट्रीम। बदलाव। Happy with one game. Yeah, initially I love the way ई-स्पोर्ट्स खेल के छोड़ चुका यार मैं, अब नहीं खेलता मैं उतना गेम। ई-स्पोर्ट्स खेलते, जब मैं ई-स्पोर्ट्स खेलता था मैं दिन का 10-10 घंटा गेम खेलता था, अब तो मैं दिन का हार्डली 1-2 घंटे गेम खेलता हूँ। एक टाइम के बाद थोड़ा आदमी बोर होने लगता है यार गेम में, है ना? पूरा जिंदगी भर नहीं खेल सकते यार तुम, समझ रहे हो? Fully commit to the fight and send it, and hopefully come out on top, but they're very slow to Maybe future में खेलूं मैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खेलूंगा। Yeah, one team talking about aggressive, talking about people committing to a fight. We saw Nigma Galaxy and Ida finally commit to the hot drop, and if I'm being completely honest, I don't want to see it. I don't care about it. Leave that ego to some other time, because right now it's going to be hurting those two teams. Yeah, it is, and we did see Fourth Thrives take advantage of what's been going on there, right? Just dropping in on, trying to get a few limbs, and then move back to their position. They were trying to punish that as much as possible, just कैसा because POV? it's kind of silly. In the finals, maybe day one you kind of get away with it, but keep on doing it. It's not going to work out. Fourth Thrives knew that, and you know they might not be the only team to take advantage of that. If the playing path's a little funny, if that keeps happening, other teams might just third party that. Yeah, they will end up third partying that. We saw there towards the bottom of the leaderboard as well. Bixi game कब चालू होगा? अभी चालू होने वाला है बस। Those are two teams that are looking to bounce back, but right now we are halfway through that mark. Lace, any team that has surprised you so far? I would just like to say that, like, I'm very proud of you, I Furia. I know I was a little bit mad in that situation, and I was surprised about you in the first couple of games, and I just want to make it note that that was a much better performance. But still, I'm taking your driver's license away. That was a good performance. Next time you ever take my mic, Lace, this big old chicken is going to be hitting your head once again. But as we're getting ready here for match 4, let's send it over to none other than Barney and Luti. Luti, yeah, you know how last week we were talking about how to win PMWC? Oh yeah, the big secret I told everyone. You gave everyone some incredible insight for those of you at home that were listening. Teams were listening as well. Aurora they're playing very well at the moment. But let's like break it down into the finer details, okay? So I want to ask you a little bit more, okay? So like, what's the best map to like capitalize on points?
I mean, there is different teams with different play styles, so it depends. Okay. Yeah, that's fair. Okay, it depends, yeah. How about like vehicles for like late rotations, getting into a good position? What's the best vehicle to use? The horse, the buggy, and so different maps, so it depends. It depends. Yeah, as well. Okay, sure. Yeah. Utility, okay, so like end of game, you know, smokes, nades, you know, medical packs, bandages. What's the best to things to have in your arsenal? I mean, depending your situation with the cycle, so I will answer, it depends. It depends. Yeah. Okay. Luti. It's not that easy, you know? Luti. What's the best gun in the game? It depends. It depends. It depends. No, Barney. Everyone knows it's a P90. No, depends. Okay, back to you, casters. I hope you're ready. It depends. And yeah, he's right. The P90 is where it's at, but we are here live in the finals, getting ready for the last 3 matches. Absolutely. We have got a great day unfolding before us. We've had some real step-ups from a lot of teams coming on through, some great rotations, some insertions, some side swipes into those zones. That S2G hovercraft double roll-up, that was looking pretty. We're going to be sending ourselves once again over to Erangel to find ourselves one more chicken dinner. मेंबरशिप ज्वाइन कैसे करूं? मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए ब्रो आपको स्ट्रीम के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, वहां से आप लोग उस लिंक पे क्लिक करके ले सकते हो. Super early in this tournament, but we're already starting to see some teams, right, make some things happen. I was able to talk to one player in particular as we were getting into this game. I happened to see S-Power, godlike, you know, the hair is hard to miss. I went up to the man and said, hey, you know what, give me 3 words before we get into this next match. And he said, domination begins. Ooh, using a whole word on that is bold. That's the sort of confidence that you want to see coming through. For Godlike, they do want to try and push a little bit further up those tables, try and get in the competition for those top spots. Of course, having only seen 3 matches, we are still in a fairly uncertain situation, in a state of flux when it comes to those tables. Obviously some performances standing out more than others, but it's definitely still achievable. और भैया क्या हालचाल? बिल्कुल बढ़िया. Got an 18 match set, right? We've been playing so far on 12 match sets time and time again, but moving over to that expanded 3-day approach, that 18 set, that's where consistency really comes into play. So it's teams that are able to earn 6, 7, 8 points on those games that are going to be the teams that will take those top spots, those podium positions. Yeah, you're exactly right. I mean, this is... It's all about next match timing, please. Next match हो चुका है bro. Start. Consistency is going to be the king here at the end of the day. I mean, we saw in the group stage, right, 39 points in one single game, and they weren't even able to make it. I mean, straight to the finals. They had to deal with the survival stage, and let's be honest, I mean, luckily we're able to get here, right? So, I mean, but they're crushing it now. They did a great job in that last game, right? And so they're off to a strong start. Let's just see if they're able to keep that pedal to the metal. Aurora starting off strong is really good because historically, they've always taken a long time, right, to really get warmed up. But for them to put some points on the board early just goes to show that come finals time, they're adjusting their strategies and it's working out for them. Maybe able to finally claim a title spot, you know, that's what they're going to be looking for. Plenty of other teams looking to do so as well. चिकन मारना ही पड़ेगा यार, वो जी ये गोल्ड लाइक में किसी को. Furia, who were there, मतलब really फर्स्ट डे में एटलीस्ट एक चिकन भी हो जाए ना तो बढ़िया होगा यार. Hopefully they can keep up. ये तो बहुत पीछे रह रहेंगे. फर्स्ट डे में एटलीस्ट एक चिकन तो करना ही पड़ेगा. There is so much on the line. That trophy, a threat to so many, but a promise to only one of our teams. Man, one of the sickest trophies you could put on your shelf. I love every single year I see it. I'm like, oh, you gotta get one. And this is what these teams have been hunting for. They've been working all year long to get here. And we can tell the teams that have prepped, and it's every single one of them. It's wild to see all these names, and the level of competition has never been so even, in my opinion, right? I mean, there is squads all across the board. They get a good couple zones, good couple situations. They're not messing around. They're going to take full advantage of it here. You talked about Furia, right? I think it's only a matter of time before we see them get a chicken dinner. We got to see some keys a little earlier. We saw that Team Vitality key, Tianba, 2 monster squads as well. कितने games complete हो गए? 3 match हो गए, अभी 4th match है ये. That consistently, like you talked about. But you know what? We're in the final Erangel of the day, John. One thing that stands out to me
without a shadow of doubt, is Pachinki, right? What is going on there? That last game has to mean that something's got to switch up, right? It has to. Something definitely has to change. For me, I feel like Enigma Galaxy, they kind of, well, certainly we know how consistently Ralph will just sacrifice tournaments to hold on to Pachinki. For me, I'm just unsure as to why he made the decision to stick to that drop spot. Love you too, mere bhai. There are obviously other opportunities, and it's sort of, it reads ego to me. It reads ego that they aren't disengaging. I liked Fourth Ride's adjustment. They were able to get in. They were able to get, I think, 2 eliminations right at the start of the match. Really, really nice stuff from that very peer position that they normally drop around. They were able to move on up. They exploited that situation. But I think that the second good decision that Fourth Ride's made in that scenario was not to hunt down Ralph, right? Because he's a solo. He's hiding in a corner. You don't know exactly where he is. You disengage. You don't go hunting, because a solo in a corner in Pachinki, you could lose a player to that very, very easily. So I liked their withdrawal there coming on through. The other side of a hot drop in Pachinki that is a massive factor, certainly for later into the mid and later game, is the fact that in a hot drop, you don't get that loot truck, and you can't get it double either, which means that it went over to Vitality during that last match. It goes over to other teams who just sit on that northwest side. It's also an incredibly clear indicator that a hot drop is happening to a team out there, so they can grab that one and send on in to maybe pick up the pieces. Yeah, let's take a look at some of the highlights here before we get started, as these teams are going to get locked and loaded here in just a second here, folks. But yeah, you know, when we go back to that hot drop, it's wild to see. I've been kind of watching these two teams talk to each other all along here in Paris. And I'd see, you know, Enigma Galaxy players walk by AIDA players and kind of have some exchanging of words. And I was hoping they would kind of get this settled before the finals, because I think it's just a devastating loss for this to continue here for both of them. And in the last game, it showed, just like, because guess what? Fourth Thrives, they came to party right after. They were like, oh, you know what? There's a silly fight happening in Pachinki. We'll take those eliminations, and they got some of them, right? So I think now that you have Fourth Thrives, especially now on the hunt for this, it's got to make, you know, AIDA and Enigma Galaxy have to start second thinking, I think, some things. But at the end of the day, like you said it, you know, for those of you guys that don't know Ralph's true name, it's Ralph Pachinki Sanchez Montero III. Okay. Pachinki is in the name, all right? And he will refuse to let it go. And I mean, they've dominated it, right? We saw them be able to take out EWC, but now that you have Fourth Thrives coming into play, it's got to make you second guess things. I mean, I'm pretty sure that dropping in Pachinki is in Ralph's will somewhere. Yeah. For any eventually, hopefully, in the very far future. But if he keeps dropping in Pachinki from North Korea, क्या बात है भाई? North Korea से भी देख रहे हो क्या? Expectancy. Aurora Gaming. आप सब लोग बताओ कहाँ पे देख रहे हो आप the लोग? business, but we are going to head to a quick video whilst we get this lobby ready to rock. आप लोग अभी स्ट्रीम किधर से देख रहे हो? कौन-कौन सी कंट्री से देख रहे हो गाइस? सब लोग बताओ मुझे. स्टार्ट होने वाला है. लव फ्रॉम जयपुर, अर्थ से. अरे अर्थ से देख रहे हो, वो तो मुझे पता ही है भाई, मार्स से थोड़ी देख रहे होगे. लव फ्रॉम पाकिस्तान, लव फ्रॉम बांग्लादेश. ओके ओके. पंजाब, इंडिया, नॉर्वे. ओके. मून से देख रहा है. अरे भाई भाई भाई, क्या बात है, क्या बात है. युगांडा, कैलिफोर्निया, सऊदी अरेबिया. युगांडा वाला कौन है भाई? जुपिटर से भी देख रहे हो. लव फ्रॉम नासा. ओके ओके. लव फ्रॉम बैंगलोर. ढोलकपुर. अरे ढोलकपुर से भी देख रहा है एक बंदा. क्या बात है भाई, ढोलकपुर से भी देख रहे हो. नाइस यार. लव फ्रॉम अंटार्कटिका. ओके ओके. मिल्की वे गैलेक्सी से. अरे क्या बात है भाई, क्या बात है. मिल्की वे गैलेक्सी से देख रहे हो. बहुत बढ़िया भाई. मिल्की वे गैलेक्सी में किधर हो से हो भाई? बहुत बढ़िया वो तो. 여기는 여러 가지 즐길 것이 있는데요. 저희가 한번 다 체험해 보도록 하겠습니다. कनाडा, फुरफुरी नगर. अरे ये कहाँ पे है? पोचिंकी से देख रहा हूँ. अरे भाई
भाई सबसे बेस्ट कमेंट तो ढोलकपुर से देखने वाला बंदे का था भाई, सबसे बेस्ट ढोलकपुर से था एक बंदा। ढोलकपुर वेस्ट बंगाल। बिक्सी के रूम से? अच्छा, मेरे रूम से कहां से देख रहे हो भाई? मोटू परती फुरफुरी नगर, मोटू पतलू जो वो कार्टून आता था, फुरफुरी नगर होता था क्या वो? मेरे को याद नहीं है। रशिया। I mean, if it was going to be possible, now would be the time because it's the last one of the day. But you know what? It's time to see what exactly is going to happen as we get into the map. Final Erangel of day one of the finals. And let's see who's going to be able to put some serious points on the board before we get into the sandy deserts of Miramar. I mean, I'll take non-serious points at this stage. Of course, every single team would as well. Plane path on the west side of the mainland here, coming through from North George to the west point of Sosnovka military base, and it will be going fairly close to Pachinki, so we're not going to be denied it by the plane path. Hora out early over towards Severny, Tiamba over into North George. I'm keeping an eye out to see if any of our teams on the hot drop are going somewhere else, but I'm really not holding my breath. I kind of am here. Oh. You know what? I will say, yeah, you can see already here. Look at that. Recon is right. Thank you so much for samosa, yaar. Kya baat hai? Hot drop. Guys, in भेजो यार आप लोग भी Pachinki samosa, आप लोगों के पास samosa, Ida, mango lassi, chai toast, जो भी है भेज दो यार. Uh-oh. Still on top के घर से. अच्छा I जी. will say though, we got to give massive props to Enigma Galaxy for being so high up on Also the guys, leaderboards. next month मेरा birthday है. उससे पहले 1 million करा दो यार. Subscribe कर दो यार guys जिसने अभी तक नहीं करा channel. That's pretty insane. Sure, I mean they were able to take a chicken dinner. Mera Gaming, thank you so much for samosa bhai. Amit bhai, thank you so much for samosa. Mr. Venom. Do this with, but they could be so Lucard, much thank you so much for ahead. samosa. Without this situation, it looks like we're not going to see a fourth Rives flex out. Kanza bhai, thank you so much for samosa. On the southwest side, Nongshim Red Force have yet to touch the floor off their Rasmalai, thank you so much for chai also toast. flexing from the southeast side, but I feel like S2G are the most likely right now. Okay, bhai, ladai ho gayi. For Ida, Enigma Galaxy on the north side of Pachinki. Ida versus NGX. Split right now, but you can see Rita on that off angle could be quite important. Ralph seems like they know he's in this building, but the nade won't connect. Like, Ida वालों को Yeah, that एक was बार a तो warning मारना nade पड़ेगा for भाई. sure. You can see Satan up on the roof here. We're on this ledge trying to get a little bit of information. He knows exactly where Rita is. It's a big stalemate though. This is the hard part about these hot drops, and I can hear it. That loot truck is now driving on by. The precious loot. Satan's like, that should have been ours. Edos bhai, thank you so much for samosa. Mr. Venom, thank you for samosa bhai. Oh, Lord gets knocked. And did he get thirsty? No, he actually Lord gets beat knock up pretty bad. और रीता भी knock. क्या बात है? What a clutch knock for this team. Able to take out the off angle there, and Ida are going to really struggle to get back to this one. It's across the road, and I don't think you can break past that. The res, though, in the meantime, is going to be there, and because it's so early in the game, it's so much less likely that you've got the nades on side to just completely suppress that res position, which allows Enigma Galaxy to go back to 4 and leaves Ida stranded on 3. Rita getting knocked there is the most crucial part of that fight, Jukes. Man, that was an भाई आइडिया तो फ्री किल्स की तरह खेल रहे हैं पता literally. I mean, that's that game sense, guys. Shooting right through the door. He knew he was there, and he makes the play for his team. It's one of those micro plays, right? That when you make that kind of play, it just changes the entire situation for your squad. And now, because of that, Enigma Galaxy up ahead against Ida. Thank you so much for They still have to get a little bit more pace to it, though. And Ida are retreating now right to the southeast point of Pachinki. They've read that immediately Satan can move out, get this position on the off angle that they were previously in control of. The fact that they're aware of that is good, but you're just going to keep losing players. At this stage, I feel like Enigma Galaxy definitely have had a better result so far in this Pachinki hot drop. They were very ready for it. As you said, they will have known, they will have been aware that this is unfurled.
Yeah, and what are you going to do if you're ETA at this point? I mean, look where they're at on the leaderboards. I mean, this is crazy. PDS का मतलब क्या होता है? PDS का मतलब होता है points, if total I'm point. their coach, anybody that is in the leadership of this team, I'm like, give it up, guys. We lost. I mean, I get it, right? Day one, you're going to battle it out with Enigma Galaxy to see if you can conquer this location, but it's an L. Like, you got to at some point realize that this is not going to work for us. Thank you so much for laughing disco यार. क्या बात है यार? रसमलाई open the chat कर दो guys. The majority of the आप लोगों के पास भी अगर ज्वेल्स वगैरह हैं तो भेजो यार. Continue doing this. Support करो guys अपने भाई को. It is pretty devastating. They have only lost one player this Jitesh time around. Thank you so much for hiding. But the loot is going to be fairly thin on the ground. The vehicle condition, like, I don't know, man. It's really cutting the legs out from underneath themselves. It's terrible. I mean, you're down a player. You don't get the loot truck. You don't get any. You're under looted at this point. I mean, it's just thank you so much for laughing. Disco, क्या बात है भाई? They stand on the leaderboard. भाई open the chat कर दो guys. Reflection of that. So, Rashmalai, thank you so much for finger heart. I always say that when it comes to these kind of hot drops or these situations in general, I really do think these need to be settled in rehearsals. You know, PDS मतलब क्या होता है? PDS मतलब point. It's like, hey, you know what, guys? Total point है ना? सारी matches की मिला के वो है PDS. We're going to drop a Bixi this Total game. points. Whoever wins it gets it. You know. Fair enough. Yeah. Well. I don't think that would ever happen, but yeah, I mean, I kind of understand. Thank you so much for another laughing disco. क्या बात है यार, it is क्या बात है guys? right, भाई open the chat कर दो और रसमलाई भाई भी. Rooted in a lot more, I think, subjective opinion for a lot of people. रसमलाई भाई बहन भी तो हो सकती है. अरे if we give up क्या our बात drop है यार? spot, भाई बहन दोनों are we ही की just going बात to है be यार. easily pushed around in the future, right? Like, are you trying to do रसमलाई that sort of आप thing? I mean, it's like negotiating contracts, negotiating business. पल्लव भाई जानना चाहते हैं. Rashmalai again, thank you so much for sunshine. क्या बात है? We'll go somewhere else. We'll go somewhere else. क्या बात है? You can't Rashmalai hold open your the chat nerve. कर And दो if you guys. guys want to be the best, then you guys need to hold your nerve and you can look good दोनों की doing it race चल रही using है. the Naruto skins here. Make sure you're heading Guys, into आप लोग भी game. race में Get हिस्सा लो that यार. character set. भेजो यार. Get आप लोग that भी Nine gifts Fury, वगैरह हैं. that Ninetales Fury AUG skin. Get that one developing as well, because you can get some variations on that bad boy. Yeah, you want to be maxing that bad boy out and looking real good. As you know, Tiambas have been looking really good today. They're in 4th place, 31 Guys, points. do you think India will come back? Man, the way he started off that Rondo Rondo match was just wild. I mean, this man has been performing all tournament long for his squad. He had, for sure, एक बार right, लकी the play पोनिया of का the नाम ले लो. tournament that लकी 1v4 पोनिया, big earlier shout in out the to group you. stage was so sick. Yeah. And then come finals time, Rocky Whitey the short, way thank you he so much for started 20 out, super chat मेरे they भाई. are looking really good. Absolutely. Balan Sunil bhai, thank you They so are much currently in for 4th place sunshine. right now. क्या बात है? Balan Sunil bhai भी यहाँ पे आ चुके हैं भाई. Looking to try and keep themselves within striking distance of Thank that you for first place another spot, Godlike. sunshine. क्या बात है यार? Would love to Sunil try bhai, and join क्या them, बात है? but they are a Sunil little bhai, bit open more the chat कर destitute दो. Sunil on bhai भी that उधर चुके points हैं front मैदान. with only 8 towards the bottom of those tables. Another circle heading up towards the north side, split by that central river. A lot of open ground south of Severny being covered actually mostly by Aura, who have a wide spread around the river. Are causing a lot of problems. Sunil bhai, I'm thank you for interested another to see how sunshine. many क्या teams look बात to है head भाई, क्या east बात है? of रवि Yasnaya. कुमार, thank you so much Fury for are likely jamming. going to do so. रवि भाई भी आ Potentially चुके see हैं that भाई from मैदान teams में. who are क्या बात still है? on the military island, by the way, Aurora and Sunil bhai, thank you for Al-Ula. another And maybe we'll sunshine. see it क्या from चल one रहा of है the two भाई? teams Sunil who bhai. are still in Pachinki Crazy too, कर रहे हो भाई because तुम तो. well, looks like Ida. Sunil bhai, open the chat कर दो guys. Engaged. Enigma Galaxy have been working the ground in the meantime. लड़ाई हुई. Snaffling up all that loot and checking every corner. Or at least I hope they are. Yeah, they better तो be. आइडिया That's वालों for के sure. पीछे ही पड़ गए हैं भाई. I mean, you can definitely tell they're keeping their head on a swivel here. They got to know that Ida's around here somewhere. They're just clearing building by building with Satan on the other side, rocking a 3-1 split. Got to be careful though. One nade could be dangerous. Oh, the shots ring on out, and the knock on the Coops is huge. He's got another nade as well. Coops is in danger here. Ralph does need to get some healing done before he can go for that revive, but he should be okay to do it. You can't step forwards and go for the cross. And again, Satan is on that off angle, just about. भाई लड़ाई हो गई. That one out. Should have spotted it. आइडिया वर्सेस एनजीएक्स और एनजीएक्स वाले बंदों ने भाई पैनमैन मारे हैं, पता है आइडिया के बंदों को. Beautiful communication. The plays from Enigma Galaxy in Pachinki are just insane. How do they do these wild bounce back shots, nades that just turn the fight in their direction? This just goes to show you, when you know this side of the map, it's going to pay भाई वो छोड़ आइडिया वालों बंदों को चाकू वाकू मारे हैं इन्होंने एनजीएक्स वालों ने. हाँ, कंट्रोवर्सी हो गई दोनों की. In the driver's seat. This is out. हाँ, अभी इसी मैच में स्टार्टिंग में चाकू मार दिया नॉक करके. As we keep going.
पिछले मैच में चिढ़ाया था फिनिश करने के बाद। Yeah, Nongshim Red Force. रवि भाई, thank you so much for jamming यार, क्या बात है रवि कुमार भाई, क्या बात है, रवि कुमार ओपन द चैट कर दो चैट। पिछला मैच में तो NGX जीती थी ना शायद से भाई। लगातार 3 बार। It can happen tomorrow. It would be a terrible idea. I can't stress how difficult this is to do, right? To be able to deal with this hot drop so frequently. कौन सी टीम जीती थी पिछला मैच? Just execute in this perfect fashion. वो थी I शायद mean, ये जीती not थी। losing a single player, getting those four points early on. Raigon भाई, thank you so much for hiding here. Insane. There was a hard north shift on the circle in the meantime. We are watching all of this hot drop unfold, but it is pushing teams now north very, very quickly, which is causing crossings as Coops finds the final player. And down they go. All 4 players from Nick McGalaxy there, and no third party. वही टीम है भाई जिसने लास्ट में बंदी 3 करा था वो बंदे ने पेड़ के पीछे looking to put pressure on up towards the north बताओ side. वो टीम भाई लास्ट में चल रही है 16 नंबर पे। बताओ Zero point निकाला है। One, but they did manage to get the 3 points for that fight. They are both still south of the river. Ulf Orangutan now Aditya bhai, thank you so much for vada pav. Kya baat hai Aditya bhai? And trying to get their foothold to move in towards those shooting range hills, potentially over towards Saverny Way. Yeah, we've been really focused on that Pachinki fight for so long. This zone is all the way up to the north, like you mentioned. We already got Fudia up there in Saverny, E-Arena over by shooting range right now. Taking that Snake Hill position. Yogan bhai, thank you so much for samosa yaar. Now we're going to see a lot of these teams start make that rotation. Sunil bhai, thank you for vada pav. Kya baat hai? Rock. You gotta hit it for good luck. That's a map open right there. Guaranteed. 100% looking at Yeah. No way. I think we're going to go here, guys. Oh, he's going to go again? Oh, no. Okay, we're getting a little replay. This is on the 4th Rise and Nongshim Red Force fight. They'd already lost T24, but the hold from Hazaifa, the angles that he was able to clock, it seems, pretty efficacious on the high ground there. Love to see it for 4th Thrives. Aurora on their crossing, run into Vitality. Looks like they may have run their last across these bridges. This western hold looking quite good for Vitality, who for the time being have been a little bit quieter, I think it's safe to say, than their group stage performances, but they're still very much there. They're still very much present. Certainly their presence is being felt by Aurora on this northwest side. Vitality. Southern shift Southern shift. This actually might be really good for the side of Nick Galaxy, as they're going to be mushing in super. And are you kidding me? This zone actually south shifts. That would be devastating for this lobby. Aurora, I'm trying to figure out, what do you think they're doing here, right? They're over there by North George splitting up, maybe trying to find some late loot. Well, I mean, they were being held out by Vitality, right? So they're just trying to take a turn around the town to maybe allow Vitality to disengage and then maybe re-engage later on, see what they can do with a little bit less pressure from the river crossing on that front. Team Flash over on the east side need to settle their score with Alula to try and get towards the circle. And it is not looking pretty for Alula. They lose a player. Not a good start, but yeah, it would be kind of mental to send all the way down to Rozhok. It'd be great for Nick McGalaxy, right? They're still just on the north side of Pachinki, so they could just take up that mountain and lickety-split, get themselves another chicken dinner. Godlike, in the meantime, on the hunt in the middle. Manya ne Sky ko mara. Out to Aura, and it seems that they are going to be able to take at least one and get the flush for Godlike. Mormon, the nade looks good. Puts them all the way down to 1 HP. Mormon, pow, pow, pow. That's 12K getting the finish. And look at that. I mean, teammate instantly there with the vehicle to make sure that they can get him over to safety. So we're going to have to go out pretty early here in this game. Only one single player up, see what he can do later on. But now we're off to the gas station with a Furia. Keeping their eyes on to Team Flash. Win has the P90 and the ghillie suit. So he definitely won that crate drop. Gameplay जल्दी आता है बूट कैंप में किसने कहा भाई? वहाँ पे मेरे को थोड़ा ज़्यादा लेट हो रहा था। That is a necessary पे ज़्यादा thing to do here, consistent था folks. Yeah, absolutely. Bold just strategy. Little tap on the tree. Little tap, tap, tap. Little shout out to Mother Nature there, just saying hi, and then gotta make sure it's secure. Yeah, and then proceeding to unleash lead into the hillsides around him. Hopefully with that P90. Team Flash
Getting out of dodge from this east side could be tricky. S2G managed to make their way to one of the buildings here that is this lineup from S2G, from Orangutan, from Tianba, and from Ulf. On this lineup, very central on the circle, some very defensible positions, but teams will start to crowd in around them. Vitality and Aurora, this is the re-engage, Jukes. Here they go, they're battling it again, and it looks like Aurora are on top so far with that knock on a Razak. Here you can see Zol driving around, trying to get some information. Federalis up close and personal, having to run back. Oh, it's godlike on the other side. Yeah, that's too dangerous. Vitality need to disengage this, as their 6 is not covered, but Razy is driving up close and personal, giving an opportunity for Reesmus to put some shots onto him. And yeah, it's just down to these 2 players left for Aurora. This fight would have definitely went off earlier, but that third party from Godlike bought Aurora Gaming some time. Thank you so much for finger heart. A little bit, but now they're down to 2. क्या बात है भाई? And Vitality. Open the chat कर दो guys. Do eat a little bit of nade there, not ideal. Arena in the meantime trying to find their way in on the north side, but it's not looking super accessible right now. And now seems like they're engaged with the final player from Horror, Sleepy. Holding it, but in the meantime, a crash. S2G trying to roll across, but Tiamba are holding face against it, and they are not going to let S2G in without a fight. Aurora want to jump in and join the party here, and aid in. Right under his feet. Is it going to blast him down? But there's an answer, and Reefus falls. A third knock over towards Tiamba, but now everybody has been isolated and from this fight. Nobody's left to put the pressure on this triple knock. Are you kidding me? It looked like these guys were fighting in a lake of fire here. QZ in the center of it. And Top could have been there to make that play, but unfortunately, there were too many teams surrounding him. And it's another nade from Top doesn't quite connect. There is an answering nade, and that is going to back Top off nicely. The run around there. Orangutan maybe missing a beat there, maybe missing a trick, not able to flex out, didn't quite have the angles on it. अपने डॉगी को भी खिला के सेफ बनाओ. ये चॉकलेट में प्रोटीन बार है ना, डॉग्स को चॉकलेट नहीं खिला सकते. They know exactly where he is. He's got 2 smokes. Chocolate is like a poison for dogs. Jukes, and that might be a little bit of dog को इतनी सी भी चॉकलेट नहीं खिला सकते. Another team rocks up with nowhere to go. They're going to roll right on top of this guy. Yeah, Top's cooked right now. He's just like, I think I'm just going to lay down right here. He's on the simmer. For as long as I possibly can. No standing up for me. It's straight hit the deck time on the side of Top. But hey, you know what? That's good, right? He's got a good position in zone. They're pretty high up on the leaderboard, so if they can just kind of hang on and get some placement points, that'll be good for him. But meanwhile, I mean, Tianba on a tear. 7 eliminations. Fortunate for them. They're able to get everybody back up here, and they're in a solid position in this circle. As we now look on over to Furia, Igor hopping out the vehicle here, getting punished by E-Arena for it. Oh, it's not going well. It is not going well for Furia. Unfortunate, they're just going to be down to Chief, the other 2 players down on the hillside. Tiamba, by the way, managed to fend off a triple team crash on their compound, right? They're now on 7 eliminations. They have done phenomenal stuff. It's likely they're going to have to fend off at least 1 more, but the number of crates around them is going to be ludicrous. They're going to have to try and figure out exactly what they want to put in their backpacks as Flash try. Thread the needle, but E-Arena are just going to roll it down. Mormon over the top. Doesn't even need to ring the doorbell to open that door. And Tops has to turn tail. Turney K sees to it. He's going to get backed off by a third party. I think that might be Orangutan chiming in. And now Tops has to head towards 4th drive, so nowhere real to go for him, as Hyunbin finally bites the dust, the last player alive for Nongshim Red Force. E-Arena are putting some good points on the board here. I mean, they're having to really battle it out, holding the edge of that circle, because there's a lot of open field in this zone. And now you're going to see 4 thrives. 6 eliminations so far. Falak with 2, Zypha with 3. OG full name. Keeping Rozo good. Oh my, I just saw that circle shift. Are you kidding me? Enigma Galaxy, they'll take that all day long, right? Hey, you know what? Sometimes you got to get a little reward for those crazy hot drop efforts, and they'll definitely take that one to the bank. Yeah, that's going to be friendly for them for the time being. For them, I feel like a good strategy is to start scouting the other side of the river now, though. I feel like you need to get someone in fast. The difficulty, of course, is that 4 thrives, and now Vitality is starting to move in, and they don't have an outpost there. Move over to the bridge, a little bit out of the zone. Yeah. I feel like somehow you've got to find a coastal position on that riverbank. And if you hold towards the warehouse, towards the triple stack,
it's just going to be a bleed out for Enigma Galaxy. The placements aren't really going to be enough. Yeah, I want a little bit more forward thinking there as Aurora lose their final player top. Could not stay in for too much longer. 4 thrives though, getting crashed on. Here they go, E-Arena not messing around here, just full sending it, non-stop aggression from this team. And it's been paying off so far, and that's why you can see them on top. Orban hopping on out, trying to hit that quick shot on Hazaifa. Hazaifa's really hurt here. अच्छा ले गया था वो, अच्छा ले गया था भाई वो, 1 HP मार दिया उसने उसको। वो लास्ट बचा था भाई ये का बंदा रिवाइव दे देगा सारों to deal with, but E-Arena the only team to be able to take him. टॉप पे चल रही है भाई ये, At least 3 of them. Tony K goes down with them, but 10 eliminations now for E-Arena. Very possible to get this res. This is the chance though for Enigma Galaxy to move across, and look at Ralph. He's getting over. Coops is looking to join him. This is the perfect opportunity whilst these teams on the east are preoccupied. A little bit slow to get the third party, but it is a good first step. I like what they've been able to do there. We've seen counterpointed river cross positions in 2-2 splits work well in the past. I'm hoping they can leverage that here. I'm a little bit disappointed in Orangutan on the north side. I feel like they could have poked their noses into that fight and third partied it as well. Moved a little bit further out to the east, been fairly safe from Tiamba and gotten stuck in there, but they hold inside. And I don't think टीम बची हैं और अभी अपनी इंडिया की दोनों टीम्स सर्वाइव कर रही हैं। एक के 4 प्लेयर हैं, एक के 3 हो सकता है कुछ तो भाई। Take those opportunities. It's just kind of surprising to see OG just kind of hold back there for a second. Enigma Galaxy, just due to the terrain, weren't able to even think about getting that third party. But because of that fight, it opened the door for them to be able to at least make that safe rotation and get that 2-2 split going. चिकन आना चाहिए भाई, चिकन आना चाहिए guys. Let's see how they're able to capitalize onto it though. As now is the calm before the storm. We are in stage number 5. All these teams just planning it out, trying to figure out, okay, if the zone goes over here, we're gonna have to make these plays. If the zone stays on us, then GG, baby. We just shoot at everything in sight. Yeah, we're gonna get the next zone unveiling itself in the next 20 seconds or so. It's Godlike try and keep their ridgeline in play. This is a replay of the roll-up. Okay, this is when E-Arena crashed on towards 4 thrives. Falak. Yeah, went down very quickly there to Joker. Not much you can do about that. When the flying vehicle launches over the top, the bunny rabbits bound on into your sight lines. He wasn't ready for it, which is kind of unfortunate. Next circle, though, comes in Jukes, and it will head over to the west. I think the Galaxy do have to get on the road. Ulf fairly happy in their compound, but Godlike are putting pressure on. Yeah, Godlike. Remember, as Power said, the domination starts now. Let's see if they can actually make that thing, though, as they got Ulf right behind them. They're super pinched, making it very difficult for them to make a play from their position. And now you can see Scarface getting up some personal. As Power trying to smoke some things out, buy his teams some time. It's going to be up to him and Edmino, though, as they are just trying to hold this spot. Unfortunately for them, though, it's outside of circle. Yeah, so now Ulf are in a perfect position to gate party this. Nice shots, though, from Edmino. But unfortunately, those smokes are perfectly put, and he's not able to get the third. Quite go the distance. It went completely out of his viewing angle there. If it had been just a little bit further, that could have been a straight knock there. S-Power gets across. And just to get some healing started as well, but that blue zone pressure is coming through. We're looking at OG and E-Arena, as well as Enigma Galaxy, also having to make moves in the meantime, Dukes. And move in from this east edge. Tiamba gonna have to move. There is a lot of teams that have to make some difficult decisions now, and OG are making it right now. They're gonna roll straight on forwards, try and get dead center here, and contest with Enigma Galaxy on the coastline. Into Vitality sightlines as well. They drop down. OG ने तो ले लिया zone, बहुत बढ़िया zone लिया है. Across, not unscathed, but alive. Great IQ of a rotation. They knew that one little plateau was right there. They were able to head straight towards it. They get their safe. Coops in trouble. The closest nade, he's done. Oh, able to get the heal off. Get some shots downrange. Headshot onto Mormon. Joker right there next to him, though. Can Coops get to safety? No, he gets knocked. And E-Arena continue to apply that pressure immediately there onto Coops. Enigma Galaxy just getting picked apart. That 2-2 split not working out.
That was insane for Coops to be able to do so much damage on that angle. He really held Ralph in the game there, and are leaving Enigma Galaxy on 3. Orangutan lost players on the center as well. They are now down to just 2 as the Arena make the same mad dash. The mad crash against Tianba will not work out for them, and the Arena evaporated, and they end up feeding the beast that is Tianba. They did put some good points on the board for them, and I love to see that aggression. Let's see if Tianba, though, can put even some more points and get this chicken dinner. They already have 10 eliminations. They're looking pretty unstoppable. S-Power forced to hit the deck. Just punishing them. I mean, they have this position locked down. You needed Admino to be on an angle there to suppress Ulf, but no, not quite there. Not quite the presence, and it's a difficult spot on the north side, so I can't really blame them too much there. Now the transition to the rest of the circle. A knock over towards Tianba, and the final flush onto Godlike as well. Another nade over towards Tianba. They're getting caught in the crunches. Enigma Galaxy move up the hill. They're challenging Orangutan. They're challenging Tianba. They're doing a lot on this eastern side. Enigma Galaxy strike at the opportune moment. Perfect timing there for Enigma Galaxy. They understand the situation. Hey, we got to push up. We can't just sit back and relax, wait for them to come to us. And you can see Lord with those nades applying the pressure. I think they need to slow things down a little bit, though. The circle is coming. The circle will push these teams out. So you want to make sure you hold on to all of that utility up until that last and final second. And I think they realize that. That's why they're starting to hold on to those nades. But the shots ringing out. Eagle getting a nice knock on the air, and that's their biggest threat right now. Catch, though, with the response over to QZZ. And it leaves Eagle alone. Dropping that smoke, the zone starts closing in 15 seconds, so this res needs to be now. It needs to come through as fast as possible to be able to be in a position to move out. Orangutan lose their final player. Gone. And it is going to go down to Enigma Galaxy, who are now up on 7 elims. Their transition from across the river has gone so well for them. What a game from Enigma Galaxy, getting hot dropped over and over. But अभी अगर ये एक चिकन भी मार लेना सीधा #7 8 आ जाएंगे सिर्फ एक चिकन पे. हम लोग एक चिकन निकालना चाहिए. एटलीस्ट फर्स्ट डे में एक चिकन मार दिया तो बढ़िया है. On this lobby as they take down Eagle from Tianba. Now QZZ will go down too. क्योंकि एक दिन में थोड़ा सा पॉइंट्स भी नहीं निकालेंगे तो फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा. 2 दिन में कमबैक. And they will keep themselves in the running for the podium. Enigma Galaxy looking to join them. There's not enough room for both of you. You've got to organize it. Back to front, stand the line. But Vitality going to have to leave as well from their cover on that south edge. Does Solus not see Satan right there in that corner? He had to see him now. No, he's too focused downhill. Oh, never mind. It's going to be Axel that catches him out. So it's all up to Vitality. Axel, the last player up. Is he able to survive? Oh, Ralph gets knocked as well. Ulf are captaining from this compound for quite a while now. They haven't had to leave it. And when they do, it's against 10 chicken easy 100 point से कुछ नहीं होगा भाई. अगर 18 मैच का ये वो है ना टूर्नामेंट है तो 200 पॉइंट से ये मान के चलो तुम एवरेज. अरे तेरी टीपीएस मारी है. A 2v4 here would be needed for Vitality. They are getting cut across, sliced and diced. हाँ ULF तो easy है तो impossible. Downhill, they roll on in, and it's just Razy to stand in their way. The smoke billows. इसको जोन के बाहर जाके किल देना चाहिए. For a better setup. पता नहीं क्या कर रहा है. Are here, and they have. अबे ULF वालों को ही दिया इसने. पता नहीं क्यों. And that is how you do it, folks. Ulf just taking full opportunity there and capitalizing it on it. We love to be able to see that. That building so strong. It was in circle all the way up there towards the end. But they didn't just sit on their hands, right? They just saw, they hunted down every elimination they possibly could. And then once they realized that those teams were weak, they pushed out immediately and were able to get it done. Some real heads-up plays, some proactive plays during that match. I mean, we focused a lot at the start on the hot drop. But the rotations up towards the north side also came in to be really impactful later on into that match, right? It was EWC final 3 days का है. ये है भाई 3 दिन का है. Highlight of that game was also Tianba holding off against the triple crash. It was Aulula, followed by S2G, followed by Aurora. Everybody wanted to get into that central compound, but they denied them access at every single turn. It was a shame that Tianba couldn't go the full distance. They did get shut out.
and I feel like for Orangutan, they could have had more of an अभी impact. लास्ट के 2 मैच में इनको ना एक मैच निकालना पड़ेगा वरना सेकंड डे ना बहुत हार्ड हो जाएगा फिर ना। अरे निकाल लेंगे यार। At the level we know them to be capable हो जाएगा। from their performance in the group stage, but 20 मिनट में हो looking जाएगा। pretty powerful on multiple fronts. It's so tough. I mean, everybody here is playing just hyper aggression, zero hesitation gameplay here live in Paris. The second you see an opportunity, these teams are taking it. One team in particular, right? We got to talk about it. Is E Arena just straight aggression there towards the end game? They soak up a ton of eliminations. Unfortunately, don't get the chicken dinner. But when you get that many elims, that's a good game no matter what. Yeah, that fight with 4 Thrives over the ridgeline worked out well for them. And again, the lack of third party allowed them to keep in the match for a lot longer. They were down to just a single player standing at one point, but they managed to get back to 3 to recover that pressure without any third party look-ins coming on through. And yeah, for E-Arena, it's a good result. I would even say it's a great result to keep them at the top of the tables, to keep, well, I don't know if they're actually at the top of the tables anymore. We'll have to double check that. बातें करवा लो इनसे बस, गन पावर तो पूछो मत। अबे लोडू चूती है, टीडीएम चल रहा है क्या? गन पावर ये वो चूती है, टीडीएम है क्या? बेंचो गन पावर का गेम जोन भी है, इतनी चीजें हैं, बिल्कुल चूतिया बातें कर रहा है गांडू। So first things first, your previous win going up against Furia. Were you surprised by Furia's approach to the late game? And talk to me about that late game in general after you got the win. जो गेम की नॉलेज है नहीं, चूतियों को आ जाते ज्ञान चोदने यहाँ पे। ที่เราชนะเมื่อสักครู่เนี่ยฮะตอนที่เราเจอเรารู้สึก बेंचो पहले मैंने चीज देखी है भाई, ये आके चूतिए पहले उल्टा सीधा हेट फैलाएंगे, ठीक है? फिर बोलेंगे बेंचो हमारी टीम को सपोर्ट नहीं करते। जो गांडू ही है बल्कि Well, गाली नहीं दूंगा भाई, but still we still छोड़ो भाई। with how they approaching the team. चूतिया ही बंदे हैं भाई। Even though the last result is that they're मतलब winning the game. बात ये है ना, तुम्हारी अगर टीम गलत परफॉर्म कर रही है बेंचो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा भाई, मैं उल्टा नहीं बोलूंगा, बट तुम आ जाते हो भाई अपनी really close to not qualifying via the हेट दिखाने survival आए थे stage. तुम यहाँ पे। So, has there been any difference in approach here to the final? गलत है भाई, What's the team बहुत गलत talked है। about to adjust here coming into चूतिया the गिरी है finals of भाई ये PMWC? लिटरली। या तो मैं भाई बोल रहा होता उल्टा सीधा, तुम्हारी टीम भी उस मैच में खराब परफॉर्म कर दी है, मैंने एक बार भी नहीं बोला भाई। उल्टा वो अच्छा खेल रहे हैं तो तारीफ और कर रहा हूँ मैं, पर अपना गंडजला तो मत दिखाओ भाई यहाँ पे उल्टा सीधा बोल के। ไฟนอลมาได้ใช่ไหมครับ ก็ทุกอย่างก็เริ่มใหม่ครับ ทุกคนเริ่มจากศูนย์เราก็เริ่มจากศูนย์ก็เลยไม่กดดันอะไรกันครับ Well, right now we have zero pressure at all. Like, so we are here to win, of course. And it's like since everyone, this is a new day, new. मेरी टीम गॉडल है भाई, भाई अगर तेरी टीम गॉडल है ना, और तू फिर भी यहाँ पे हेट फैला रहे, तो तुझसे बड़ा चूतिया इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा भाई। Okay, so that does it then. ना तो Thank you तेरे को very much गेम for की the नॉलेज answers. है, That does it down here on the stage. We'll be with you और for ना तेरे अंदर दिमाग PMWC है। in just a moment. तेरे को अगर गेम की नॉलेज होती तो तेरे को ये पता होता कि अगर तुम कोई लॉबी फर्स्ट टाइम खेल रहे हो या तुम्हें किसी लॉबी का एक्सपीरियंस नहीं है, तो शुरू का एक दिन जो टूर्नामेंट का होता है उसमें लगता है बाकी टीम्स की स्ट्रेटेजी ग्रैप्स करने में टाइम लगता है ब्रो। तुम एकदम जाके सीधा नहीं निकाल सकते मैच, तुम्हें देखना पड़ेगा बाकी लोग कैसा खेल रहे हैं। अभी बाकी टीम्स को ऑलरेडी आइडिया है, तो चूतियागिरी मत करो भाई। बताओ बहनचो, इंडिया अगर तुम गॉडल के सपोर्टर हो, तुम इंडिया के ही रहने वाले होगे ऑब्वियसली, और उसके बाद भी तुम हेट दे रहे हो, तो कितनी गलत चीज है भाई। और तुम्हें लग रहा है तुम कूल लग रहे हो, नहीं भाई चूतिया लग रहे हो तुम, लिटरली कूल नहीं लग रहे हो तुम। मैच खत्म किया? नहीं अभी तो बचे हैं 2 मैच हो रहे हैं, मीरा मार के बचे हैं। एडवांटेज है, रिज एडवांटेज है, कुछ हो ना हो एक प्लेयर जाके 1-2 नीड्स। मोजी का मेरा मार थोड़ा ठीक है, लेट्स सी। अभी भाई आईडीए है भाई, उसके आईडीए के सिर्फ 2 पॉइंट है भाई सिंगल डिजिट में। मैं तो आईडीए को भी उल्टा नहीं बोल रहा हूँ। क्या है भाई, ये चूतिया बंदे हैं भाई, हेट फैलाने आ जाते हैं। बच्चे हैं, इनको लगता है कूल लग रहे हैं। टू एक्चुअली सिक्योर द नॉक सर। टीडीएम चल रहा है, बताओ यहाँ पे टीडीएम चल रहा है जैसे कि ना, लेने में थोड़ी प्रोएक्टिविटी पावर भाई, क्या कुछ भी कहीं ना कहीं जो भाई गाली मत दो फुल वॉल्यूम का। अरे भाई जो लोग गाली खाने वाले काम करते हैं उनको देनी पड़ती है ब्रो। देने की बात कर रहे हैं, बात ये ना, कई बार अगर तुम रिएक्ट नहीं करते तो इन चूतियों का लगता है कि भाई सही है ये। ओवरऑल आई थिंक मैच 1 के बाद अभी तक काफी कब स्टार्ट होगा, हो जाएगा 15 मिनट बाद होगा। ओवरऑल लीडर बोर्ड पे अगर आपने गौर फरमाया हो, टियानबा के एलिमिनेशन पॉइंट्स
वो ही चौथे स्थान पे बैठी अरोरा गेमिंग के टोटल पॉइंट से ज्यादा चल रहे हैं। ये टीम सेकंड चल रही है अभी लीडर बोर्ड पे विद जस्ट अ सिंगल डिजिट प्लेसमेंट पॉइंट। 8 मात्र प्लेसमेंट पॉइंट आए लेकिन फिनिशेस 37। दैट इज प्योर डोमिनेशन एंड मुझे लगता है दिस इज अ वेरी गुड साइन। टीम के लिए बहुत बढ़िया बात है कि आपकी जो टीम है बहुत खुल के खेल रही है, कोई सेकंड थॉट्स नहीं आ रहे। मुझे लगता है जब आप एक ऐसे वर्ल्ड कप जैसे स्टेज पे आते हो, आप वहां पे जब अपना बेस्ट गेम खेलोगे, जब अपना बैटिंग पावर, अगर कोई चूतिया हेट कमेंट करते हुए दिखता है ना, सीधा उसकी गांड फाड़ो, ठीक है? आप में आपको सीधा टाइम आउट दो चूतिए को कि हां मैं और खुल के खेल सकता हूं एंड इट्स वेरी 24 घंटे का टाइम आउट दो, सबसे बड़ी बात कर रहे थे टियानबा जैसे टीम को कि हां वो ऐसे खुल के खेलेंगे, राइट? एंड दे आर डूइंग इट। मतलब वो एक्सपेक्टेशंस मीट कर रहे हैं, अपना बेस्ट गेम दिखा रहे हैं, जस्ट सर्वाइवल स्टेज से आए हैं, टेबल टॉप करके आए एकदम। मिरामार में एस पावर तगड़ा है वहां पे। लेकिन चलिए अब हमारे लिए तो सवाल आते रहते हैं। डे 1 है यार, चिल करो भाई। आप लोगों के लिए कैन आईडीए ई स्पोर्ट्स मेक अ कमबैक, ये सवाल आता है सार्थक सबसे बड़ी बात गेम का की तरफ से। गेम खेल रहे हो ना अगर तुम 16 तो सीधी सी बात है, एक ही टीम चिकन निकालेगी, एक ही टीम विनर होगी। जरूरी नहीं है कि भयंकर जो बाकी टीम से वो चूतिया ही होंगी, नहीं है भाई, ऐसा नहीं होता। उस टाइम पे उन्होंने दिखाया था कि 10 चीजें होती है, जोन होता है, इतना कुछ होता है, थर्ड पार्टी हो जाती है। परफॉर्मेंस देख के वैसा नहीं लग रहा। आज कोई भी किस्मत भी तो मैटर करती है, नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि हमारे दो टीम्स के साथ ईडा वो भी कहीं ना कहीं डाउन है, बट उनके पास तो उतने भी पॉइंट्स। ये सवाल पूछने का आई थिंक तात्पर्य यही था कि अगर 16th पे टीम कमबैक कर सकती है तो 15th और 14th के लिए तो थोड़ा आसान रहेगा, बट आईडीए ई स्पोर्ट्स पे और उनके अभी तक के रन के ऊपर आपके थॉट्स? द मेन फैक्ट इज उनको एक चीज रियलाइज करना पड़ेगा दैट दे आर प्लेइंग अ ग्रैंड फाइनल्स। इट इज नॉट अ ग्रुप स्टेज, कोई सर्वाइवल स्टेज नहीं है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट भी उनके लिए रहने वाला है। जो ड्रॉप क्लैशेस उन्होंने 3 बैक टू बैक एंगल्स में लिया है एनजीएक्स के साथ, मुझे लगता है उनको वो अवॉइड करना चाहिए। गॉड लाइक दे लर्नड इट द हार्ड वे, उन्होंने फिर ड्रॉप चेंज किया, उनका गेम बेटर हुआ। ईडा दे आर प्लेइंग द ग्रैंड फाइनल्स, यहाँ पे आपको क्वालिफाई नहीं करना है, यहाँ आपको जीतना है, टॉप 5 एटलीस्ट आपको आना है। कमबैक होगा इंडिया के नेक्स्ट डे, बिल्कुल बिल्कुल। ईगो बैटल जो वो लेके आ रहे हैं, उस 2 मैच बाकी है ना आज के। हाँ, अभी 2 मीरामार की मैचेस बाकी है। जो चीजें आपने बात करी वो चीजें काम कर गई थी ईडा के लिए बैक इन द ग्रुप स्टेजेस, और जैसा आपने लव फ्रॉम स्पेन, लव यू टू मेरे भाई, लव यू टू। अभी फिलहाल एक और अच्छी चीज की तरफ हम आगे बढ़ेंगे और वो है हमारा जो अभी रैंगल का आज के दिन का आखिरी रैंगल हुआ है, उसके ऊपर हमारे कमेंटेटर्स के रिएक्शन। लेट्स हैव अ लुक। Least one elimination. One team that was able to glow in this last match, being able to keep all their 4 players alive, none other than Ulf, Natura. Oh, finally. You said it, right? We're finally getting a play where we actually have all of Ulf still around, still here to fight for the end game, to fight for that chicken dinner coming on through. Yeah, really, really nice to see. I mean, yes, they didn't have to contest it too much. They had 1 or 2 fights in the mid stage of the game, OG more notably. But then they were able to just hold their position, wait for the right time, and then once that time struck, Max, they were all over that final circle. Yeah, and really able to get himself some good presence at the end, keeping 4 players alive, which is my biggest issue with them since PMGO Season 1 in Jakarta this year. And you know what? They're able to finally get it done. I told you they're a slow starting team. We're getting to the finals. We're finally starting to see these more dominant finishes from Ulf. But second place, Nemo Galaxy. I got a segment later on, but you know what? It's good to see that once they do get out of the hot drop 7, they can actually put up big points. They can put up those big points. Talking about big points here for some teams, it was none other than Godlike and OG. This was a match that they really needed laced because the middle of the pack teams were eliminated very early on. They needed to be able to catch up, but they were only able, both teams were only able to catch 5 points apiece. I mean, look, it's still a great improvement from them. And being so, they had like that kind of control in the middle of zone. So they were there for that early rotate. I would have liked to sort of see, I guess, OG apply a little bit more pressure to their eastern side. But still, to get to that point after the first couple of matches is a better thing for them. Obviously, we talk about slow starting teams, and they are one of them. But I do believe that coming into like the next match, we're probably going to see them a little bit more active. I mean, they need to be a little bit more active in that, but to get to that, भाई आपको पीछे का लाइट अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये लैम्प
it's a lot better than the previous match. It is. And one team that was able to, that's also been starting off slow, but finally being able to wake up, Max, none other than 4Thrives. 4Thrives getting 8 eliminations this last match. Good to see. Finally, good to see it, especially a lot of those eliminations actually secured on 2 teams that were interesting. You had Team Flash a little bit early on in that game too. That was fun to see how they won that little bit of an encounter. Huzaifa in particular, he carried that fight from start to finish. Really good numbers from Huzaifa. But they had a very good early rotation, and you could say a bad rotation for Nongs from Red Force, where they catch them off guard. They didn't expect to clash next to Potato Hill. And you know 4Thrives, right, Nipchur? If they can take a fight and you are in a weakened state, they're going to chase you down until the edge of the earth, and that's what they did. And Nongs from Red Force took a massive L there. So 4Thrives, if you know where they're going to rotate, I would try and avoid them because they don't like having neighbors around them. No, they don't. And even in this state of where we're seeing them of just kind of indecision, I think they don't really know what's going on. But it is nice to see that, yeah, they're still a threat even in this state. It's just been really difficult for me to watch 4Thrives because I'm used to a very confident team that knows exactly what they're doing at all times, and I can tell that they're not sure what's wrong, why this isn't really happening. There's a little bit of the old spark there in this last game, but I think really it's just indecision. They're hesitating just too much. Didn't you say like something about T24 going out a lot early recently? Yeah, and he's one of the big fraggers. He's really up and coming as a big fragger for the team. So for him to go out early, yes, Huzaifa is able to clutch, but you know, T24, they need a 4th player. They need somebody like him on that squad to just stay alive a little bit longer. Yeah, T24 was able to start slow during groups as well. Then he was able to pick it up. But right here in the finals, you don't want to be starting slow. So that's one team we'll definitely be looking to see bounce back. One team that has been really consistent, especially with eliminations, we talked about it earlier, Lace, is none other than Tiamba. Tiamba just keeps putting up those eliminations in a big way. They absolutely have, and I also want to add into that, like, keeping up those sort of eliminations. It's also E-Arena. Like, we sort of like look at these 2 powerhouse squads, and we're gonna have to get a mashup with these 2 teams because they are making it in those top 5 positions. They are clearing their space. They're grabbing the eliminations along the way, even in a fight where so PUBG Lite India में आ रहा है क्या नहीं आ रहा भाई कौन अफवाह फैला रहा है भाई BGMI Lite PUBG Lite कौन अफवाह फैला रहा है in their position, but नहीं आ रहा भाई कुछ नहीं आ रहा. For whatever reason, I'm sure Max will cover it. They didn't sort of get into that contention, but E-Arena just kept making power plays for the spot that they want. Tiamba is also making those power plays to get the position that they want. And obviously early eliminations, especially in today, is what will capitalize you for going into tomorrow. So this steady, I guess, excel in eliminations has been awesome from both of these squads. Yeah, especially for E-Arena, right? Remember what we saw of E-Arena in day 1 of their Group B? They were able to get those 29 eliminations in Rondo, and then after that, they kind of just ended up dying off us. We're actually going to be looking at a comparison between Group Day 1 and also what they're doing here in the finals. And something that I want you to keep in mind is the placement that this team is currently being able to put up, being able to survive even longer, and the eliminations are even higher because they have been consistent with those eliminations. Very consistent. It's been back-to-back games of just really good placement, good strategy, good synergy with the team as well. They look fairly confident. The lobby is hard. I'm going to say that. It is a very difficult lobby, night and day from the group stage, from the survival stage, but they are handling it very well. I do want to say very quickly, what I loved about the fight with 4Thrives, right? That dip, the way they use the terrain, because there's a bit of a cliff area there. It's a dip, and then you got those 2 cliffs, and what actually they ended up using is they went off the cliff, back behind 4Thrives, and then used that terrain where they couldn't actually see to move around in front of them as well. So it gave the illusion that they were everywhere at once, when really they weren't. And for a team that is slightly struggling like 4Thrives, that was just the death knell. So very well played by EA, good knowledge of the terrain, and great synergy overall. It was a magic trick almost. It was. It really was. Max, there is something that has been pretty much pissing us off when we talk about Erangel, and that is the hot drops that we're seeing between Nigma Galaxy and none other than Ida. It's good for Nigma Galaxy right now, but Ida is just, they're just squandering their hopes. Yeah, I mean, Nigma Galaxy saw what could do when they can actually get out of the hot drop, but here you go, Pachinki, Nigma Galaxy dropping there since the 1990s at this point, and Ida going to be joining up on this one. And initially I was like, okay, Ida, you should not begin for this hot drop. You know, as a clear up आपका गेम प्ले वीडियो है क्या ये स्पोर्ट्स का वाइटी में? हाँ मैंने डाला क्यों नहीं मेरी प्रीवियस वीडियोस आप देखोगे उसमें आपको मिल I'm जाएंगे. thinking Nigma Galaxy, maybe this would be a good opportunity for you to start leaving, because Ida are not just ruining your entire tournament run so far. Yeah, it's really weird, right? Because for Nigma Galaxy, it's like
Ida is the newcomers. They need to get out. Clearly, it's not 1 working million for them. कब They होंगे have भाई 2 जब तुम लोग points सब्सक्राइब over करोगे the हो जाएंगे यार entire 1 day. million One कराओ to यार two, that's it. at least But 982 you're right. तो करा दो आज Galaxy is ending up ruining their tournament chances as well because we are seeing really good performances from Nigma. I love how they've been playing, but they're just entering the zone way too late because of Ida. Yeah, of course. भाई यहाँ पे ये वाला जो मैच था ना इसमें आईडी रीटा को चाकू मारा था They भाई lose a single player. I promise you, they do not get a finish like that. They do not get that many points. So right now, Nigma Galaxy, I would say there are other options available, and I understand it's your drop. You've been there for the longest time. But I do not care at this point which team leaves. One team has to leave. This is a waste of time, and it's making me angry. And I'm just looking at that on the early game. Can I also just interject here and go, Ida, what are you doing? Because this is a team, remember, that got in through the group stage. They were second in their group. They had a fantastic second day. They won like 3 of the games. They were hyper aggressive. We know this is a team that can play very well, but they're wasting everything on a hot drop 3 times in a row. Yeah. Again, they have 2 points. You're not going to win on 2 points. And teams are starting to notice this is such a waste of time. Like 4 thrives, I think it was on one of the Erangels early in Ipchura, they like just instantly third party it, and now teams are going around Pachinki waiting for the loot truck to come out because they know live point table अभी दिख जाएगी अभी because they're so focused on that clash between Nigma Galaxy and Ida. Of course here, big respect by the way, Nigma Galaxy, the smokes and the way they started pushing solo players, that was very well executed, but one mistake, one slight error, and you lose a player, and instantly your chances of a win dwindle to almost nothing. Well, we know exactly what happened when 4 Thrives joined the party, right? Nigma Galaxy lost a couple of players, and then we didn't really see them in that game. They went out fairly early on. They had to full send game 1. They had to full send to the beach and just kind of stay there. There was no opportunity for them to get any points whatsoever. So यहाँ पे yeah, आईडी ने बहुत बढ़िया नेट करा था, लेकिन इन लोगों ने लेट पुश किया. जब वो ऑलमोस्ट रिवाइव हो गया ना तब पुश किया इन्होंने. Figure out how to adapt to this. Yeah, we'll have to figure out how to adapt to this. If I had to pick one team to stop hot dropping in Pachinki, it wouldn't be Nigma, because Nigma has been getting the better end of this, especially they showcased what they were able to do in the last match. They're getting the eliminations too, so Nigma Galaxy, keep on doing your thing. If you're Ida, get the heck out of town. You need to find a different spot. But when we're talking about someone, you're gonna pretty much see here just the finish of this engagement between these squads. You know what, Max, Lace, who would you want to see just give up this hard drop between Nigma and Ida? It's got to be Ida, right? Like it has to be. Like they're not even getting any further into the late game. They should have just made the decision to sort of rotate from this position. I mean, you know, I was kind of touching on, I think, Nigma Galaxy a little bit later into the zone, how they're making slow decisions. But again, this is slowing their decision. But yeah, Ida just, yeah. Look, by the way, look on the left side of your screen. While they're still in their looting stage, technically, right? So hot drop's a bit weird, it's a bit different. You have Nongshim Red Force fighting 4 Thrives on their first rotation after the looting stage. This is, look, even here, you have to fight Orangutan fighting Ulf. So everything is happening in the game. Teams are not going to wait for you. And while that's happening, you're still in your initial drop location and you have no scouting done. The loot truck, you can see on the left side of your screen. He came back for round 2. अच्छा कौन से साल में थे यार? And the fight is still not हो done. गया वटा मैंने Instagram पे भी तो डाली हुई हैं यार. This is Picado red buildings all over again. It's really annoying. It's Picado red buildings all over again, Max. I mean, we get so mad at that hot drop, and we still have the mirror box to go. So if either of you hot drop red building Picado, I am going to come over to your table, and I'm going to उसके बाद भाई तुम लोग मेरे को कह रहे थे ना e-sports खेलने के लिए, तो मैंने I guess 2025 में भी e-sports खेला था शायद 1-2 हफ्ता खेला मैंने वापस अच्छी खासी स्क्रिम्स वगैरह खेली उसकी वीडियो डाली थी मैंने. Nigma Galaxy currently in third place. You have Arena right now in first place with 48 points. Tiamba continuing those consistency eliminations. This is the main story for Tiamba right now. 45 points, 37 coming from the elims. And if we start going down, we are seeing one team that has been going down as the day has been going on. And it's none other than Aurora. Yeah, unfortunately, I still have not seen the comeback of क्योंकि भाई full time तो मैं नहीं खेलने वाला e-sport क्योंकि मेरे को मैंने YouTube पे बहुत मेहनत करी है भाई. अभी अगर full time e-sports खेलने लगा मैं तो मेरा फिर वो YouTube चैनल में कंटेंट नहीं आएगा और YouTube की रीच गिर जाएगी यार मेरी. वो चीज मैं सैक्रिफाइस नहीं करने वाला भाई. Only 5 placement points after 3 Erangels. But for content I can play. Especially when it's just outside of Ferry Pier. I was expecting way more. They're slipping down, and especially when Ulf now they've just got a 4-man finish. You know Ulf are going to be chasing for that
कंटेंट नहीं रुकना चाहिए। यस भाई, हाँ भाई खेलना चाहिए। फिर ठीक है, ई स्पोर्ट्स की वीडियो डालूंगा मैं अभी। थोड़ा रिसेंटली टाइम नहीं मिल रहा गेम खेलने का, थोड़ा सा ग्राइंड करके, बढ़िया तरीके से ग्राइंड करके थोड़ा सा फिर डालते हैं एक दो वीडियो। We haven't even seen Vitality at their best yet. You know, teams like this that are going to be coming up and gaining that momentum as the ब्रेक days में go दिखाओ on. ना वही वीडियो, उसमें मैंने pretty गाना quickly. लगाया हुआ है मोन्टाज में। अभी इंस्टाग्राम पे तो कॉपीराइट का सीन उतना नहीं है, यूट्यूब पे वो कॉपीराइट हो जाएगा इसलिए। या तो मैं साउंड म्यूट करके तुम लोगों को दिखा सकता हूं। And then you start sounding very worried to me. I'm not too worried. It started to sink in. She's like, oh, actually, this is You just kept saying more teams, more check teams. And I'm like, okay, that sounds like you're है। contradicting yourself here. Fourth Thrives ends up finding themselves here in the first page. But going here towards the second page, we really haven't seen much lays out of S2G. With Furia, it's been a hit or miss, and then we got some of the other squads there. S2G are getting busy, right? But they are sort of like losing the contests on these fights. Music They're है able to इसमें। get the placement points. It's been great. Chicken dinners are coming through, but it's kind of like more of a gifted scenario in a lot of segments. But you've heard me about Fury, guys. I'm not going to go on about that. But what No driver's license, I won't carry on about that. But look, I even just want to touch on like Vitality. We didn't really get to talk about them. They are playing incredibly scared. So Neptura, after your sort of worried statement, I am also worried in that sense because like even in that final zone there, they had the western side to sort of scoop up behind Nigma Galaxy, and they did nothing. Yep. One team that I want to see more out of, especially towards that second page, is none other than Godlike. And I would love. ये दिख रहा है गाइस आप लोगों को? दिख रहा होगा ना आप लोगों को? ये देखो, इसमें आगे थोड़ा म्यूजिक है इस वाले क्लच के बाद, तो मैं वहां पे साउंड म्यूट कर दूंगा मैं। इसी पेड़ पे मार थोड़े मार यहीं पे। अरे डीवीएस है मैं आराम से बिक्सी कॉपी पीछे से आ रहा है। ये था 1v4 यहां पे। बहुत भाई 60 fps का फोन था भाई उस टाइम पे। देखो मैं साउंड म्यूट कर रहा हूँ अभी, गाने पे कॉपीराइट आएगा। खेला है यार एक टाइम पे ई स्पोर्ट, बहुत खेलता था पूरा दिन, स्क्रिम्स वगैरह। ये 60 fps का गेम प्ले है ब्रो। उस टाइम पे नहीं था मेरे पे यार अच्छा फोन, वो तो यूट्यूब की जब इनकम वगैरह आई तो अच्छा फोन लिया बिल्कुल। ये देखो 1v2 भाई, क्या 1v2 था, सीधा हेड ही हेड पे ले हैं। दिख रहा है गाइस आप लोगों को? साउंड में जानबूझ के म्यूट किया, ठीक है? बैकग्राउंड म्यूजिक पे कॉपीराइट आएगा। वो स्क्रीन बड़ा करूं क्या? स्क्रीन बड़ा करते हैं ये लोग, स्क्रीन बड़ा कर दिया, और बड़ा करूं? ये देखो स्टार्टिंग से दिखाऊं? स्टार्टिंग से दिखाना है क्या? अभी स्क्रीन बड़ा करा है, नहीं दिख रहा था। ये देखो, ये देखो स्टार्टिंग से दिखाता हूं फिर। नीचे पुश कर दे गाड़ी को। यहीं इसी पेड़ पे मार थोड़े मार यहीं पे। अरे डीवीएस है मैं आराम से बिक्सी कॉपी पीछे से आ रहा है। बहुत प्यारा। देखो 10 एचपी पे लास्ट के 2 बंदे मारे हैं। बहुत प्यारा रुको यार, गाना है। इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो भाई आप। अब नहीं दिख रहा, कैसे नहीं दिख रहा यार? अच्छा आप लोग उसमें शॉर्ट्स वाले में देख रहे हो क्या? ओ कुछ लोग शॉर्ट्स वाले हैं। ये देखो, ये देखो, देखो दिख रहा है भाई अभी? बहुत बड़ी वीडियो है ये तो।
यार तगड़ा खेल रखा है ना, तगड़ा गेम प्ले है भाई तुम्हारे भाई का 60 FPS पे भी। चलो अभी एक बार इस पे देख लेते हैं ना, टूर्नामेंट का क्या सीन चल रहा है अभी। स्टार्ट हुआ क्या अगला मैच? Milu's been able to do that like two-fold. मैंने ना गाइस इसके बाद वो भी करा था। Really phenomenal to watch so far. के बाद Milu's been amazing. पिछले साल भी Milu's मैंने been really, खेला really था, good. मैं It's अभी fantastic to see. दिखाऊंगा। I mean, you were talking about it was FMVP for PMI, where he was able to get 39 eliminations over 7,000 damage for QZZ. But yeah, they have balanced the load in a big way. I think it's a really, really nice thing as well seeing A King, because it very much reminds me the way that Alpha 7 used to play. They're not playing now. Ignore that bit. Ignore that bit. Let's just put that to the side for the time being. But yeah, A-King's kind of like the Revo of the team. He plays forward, he plays shotgun for the team. Milu's just very good in those clutch moments. And yeah, the load is spread out very, very evenly across the squad. Eagle is also a great survivalist. I think they have all the tools necessary to actually honestly win this at this point. As you're talking, you're getting further away. Come back. रणवीर भाई, thank you so much for chai toast यार, क्या बात है? Okay, so the thing is, I think when you look at Tiamba's performance so far, गाइस अभी ये वाले के बाद ना, ये वाला जो मैच हो जाएगा उसके बाद मैं तुम्हें एक पूरी क्लचेस वाली वीडियो दिखाऊंगा मेरी उसकी huge क्या कहते हैं e-sports की Lazarus moment back on the road. इसमें लिटरली मैंने सोलो 1v4 मारे हुए हैं भर भर के। Yeah, very, very good. I do think that that's what they needed, because the confidence came through. Every time I look down at Milu on the stage, right, it's very... Like Milu. I do like Milu. It's very heartwarming because there's... I like it when players are enjoying themselves, and Milu definitely enjoys himself. He's one of the smiliest guys I've seen. QZZ is a little bit more serious, I would say, other than the winning moments where, you know, he almost breaks his fingers on the high fives. That was funny. But I do think that for Milu, it's just nice to see a guy who's so good at the game, but also very much is passionate and enjoys his time in it. And he should be, because he's having an unreal run. All right, let's move on to another team then, as we have Ulf, who has looked, I would say, towards some of these latest moments, pretty good as well. Obviously, they qualified off the back of having that last game survival win, which was extremely important for their campaign as a whole. And they are one of the teams that a lot of people thought was going to be able to attain those top spots. Right now, their space control is looking good, especially in this last game. Yes, very much so. I mean, I'm one of those believers. I'm an Ulf believer. Okay, Everyone knows that. Everyone knows that Eren is one of my favorite players. Ketch also from way back when, MVP in PMPL Season 1 Spring. He's not quite as old as me, but he is pretty old. He goes way back. He's old, yeah, but he's still got it in him. He's got the grizzled beard, he's a grizzled warrior. But he looks good. And I think that for Ulf, though, that last game was fantastic for me in particular, because we were talking about it backstage, right? And I said, if Ulf wins this game, I want to talk about them. But it was nice for me to be in like stage 6 and really believe in Ulf to actually win the game that they should be winning if they make the necessary movements, which is to take out Yamba and slowly corral the rest of the squad. So thank you so much for chai toast, mate. Kind of a prideful moment for me, because I was like, get in, lads. This is fine. You've got it. And you liked your prediction. I did, yeah. Also, I was quite chuffed about myself. Yes, that is right. Okay, 50-50. Yeah, okay. Great job, lads. Great job, me. I think as well, you know, controlling that compound, it actually has great lines of sight on the south side. Any vulnerability normally comes from the north, which actually didn't really exist in that game due to the way the circles were shifting. So they had to turn all their attention to the east as the next main threat. And I think you're right. They prioritized those threats very well from a compound like that. So good stuff by Ulf so far. And let's turn our attention as well to E-Arena, who has looked... It's funny because I'm a little bit conflicted by what E-Arena's been putting up so far. Because even in this last game, I really appreciate the wide wraps that they're doing. But Fourth Thrives have like almost zero opportunity to be able to react to the snowball coming down the hill and, you know, crushing them all. It was tough. It was tough. I mean, E-Arena's just a strange team right now where I'm not sure if they're really good at the game or very lucky, which even I don't think are very sure about this point in time. I remember a time when Schweppes, you know, was sweeping aside the competition, but again, I think E-Arena just hasn't quite hit that full stride yet, but they do have the massive potential, Kale. He's been able to win twice on the stage in the past, Schweppes, with, of course, Vampire in the past. But anyway, thank you very much, Blank, for joining me here down on the stage. It is time to head on over to Glitter with an update. Because there's a lot going on in chess today, and a lot of it is very start होने वाला है भाई।
भाई ये पीकू वर्ल्ड करके बंदा है भाई, ये घोप घोप मांग रहा है यार, इसको चोको दे दो यार कोई चैट में भाई, इसको मॉडरेटर्स वगैरह या फिर चैट में जो बंदे हैं इसको चोको दे दो यार। ये बेचारा चोको मांग रहा है, बहुत देर से गाली दे रहा है बेचारा, इसको थक गया है, ये कह रहा है कि चोको दे दो कोई तो। देख लो यार पीकू वर्ल्ड नाम का बंदा मॉडरेटर्स। Here this weekend, considering Magnus Carlsen being the chess player that he is, and he is up 2-0. जो गांडू बंदे गाली बकते हैं उनको उनकी गांड फाड़ा करो ना यार मॉडरेटर्स, इतना टाइम क्यों लगाते He'll हो? be progressing to the semi-finals. Earlier today, we had the first quarter-final, which was Denis Lazovic playing against the Na'Vi representative, and he managed to get a win. So that's huge for AGL as well, considering they're trying to keep the top. मिल गया क्या चोको इसको? ठीक है तब दो आराम से चोको दो इसको। Which in itself, you know, it sounds kind of doable, but then you realize they've got two players. One of them's already progressed through, and Ali Reza Farouj is kind of playing now and beating his opponent as well. Okay. So Hikaru Nakamura already through. भाई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में सबके 120 FPS होता है क्या? हाँ 120 FPS guys. AGL versus Falcons in the semi-final. I mean, to be fair, Dennis was trying to almost preempt the when he was practicing, putting the key into the trophy yesterday. So, you know, maybe that's a good omen? I mean, the thing is, he was literally putting his opponent's key that he'd beaten in the winning trophy. So it wasn't even his own key. He was like knocking someone out and then putting them on a pedestal straight away. But yeah, it's been a good one over here in chess. You know, there's so many club championship storylines that kind of lay on chess at the moment, considering, you know, AGL have been knocked out of PUBG Mobile, have been knocked out of several other competitions as well. So Team Falcons have to be outperformed by AGL if AGL want to keep that top spot. But then डिवाइस कौन प्रोवाइड कराता है स्पोर्ट्स में? देखो जैसे जो लैन इवेंट्स वगैरह होते हैं ना, इसमें जो भी फोन का ब्रांड स्पॉन्सर करता है टूर्नामेंट को, तो वही फोन का ब्रांड ही सब प्लेयर्स को देता है फोन खेलने के लिए। आपके पास अगर खुद का भी डिवाइस है तो भी आपको उसी फोन में खेलना पड़ेगा जिस फोन के ब्रांड ने स्पॉन्सर किया है। So as we have some more updates, we'll check back in with you, Trev. For now, we're gonna say goodbye. Shout out to the amazing Glitter Explosion and the amazing Trav as well for the Club Championship update. But now going back to PUBG Mobile's esports here at PMWC at EWC 26, we got to talk about Aurora. I would love to see Aurora player stats because there is one player in particular that you're not happy with his performance. You're over here like George. भाई फूड पॉइजन हो गया क्या उधर बंदों को? किधर हो गया? Sounds like क्या कह because रहे हो for this squad, I mean, they were able to start off hot, but they're just gonna keep going down that leaderboard. Yeah, it's not even just Doc actually. I feel like I kind of want to see more from Reefus as well. भाई कब करेंगे ये लोग स्टार्ट? Underperforming a little bit. Even Ziol. इसमें ज़्यादा टाइम लगने लग रहा है। Some incredible grenades. साले में ज़्यादा टाइम लग रहा है ना? So sure maybe. हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, ऐसे तो हो जाता है 5 मिनट में स्टार्ट। Ziol has definitely also been pulling his weight, but top, it's been the top show. Getting almost 3 average eliminations per game is crazy in a lobby of this caliber. But it's not enough when only one player's putting up those numbers. Niptura, Doc, Reefus, again, Jolly get a pass, but Doc and Reefus. Guys, स्ट्रीम को लाइक कर दो यार जितने भी लोग देख रहे हो। स्ट्रीम को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना guys। 1 million होने वाले अपने। Love from Pakistan, love you too bro। I also want to give Reefus a half pass as well because similarly to Ziol, Player बीमार है किधर? Reefus have some really cool information scouting off angles, like किधर way across certain areas of the zone, really trying to get as much information as possible versus team. So in किधर that बीमार है regard, player? yeah, I do feel like he's kind of pulling his weight a little bit, but yes, overall I do agree with you, Max, that all of them need to really be stepping up to the plate here. 4th place is okay. भाई गोल्ड लाइक का कमबैक पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है ब्रो, अभी तो फर्स्ट डे ही चल रहा है और उसमें भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पता है? अभी एक चिकन किया ना अच्छे किल के साथ तो ये टॉप 3 में भी आ सकते हैं, टॉप 4 तो हो ही जाएगा। MVPs in that squad, so the pressure is on you. Okay, any passes that I had for him was last year. This is a new year. I want to see more survival time out of him as well. But here we go. We're looking at the overall lace. We're talking about Tiamba. We're talking about Flash. We're talking about some of these teams that just we need to see more placement points out of. Yeah, I want to ask Max, Ooh. if he were to be an embodiment of a coach, you pick Team Flash, right? भाई बेरहम गेमिंग को शाउट आउट दे दो। बेरहम गेमिंग बिग शाउट टू यू मेरे भाई। Wasn't that your They're my prediction, yeah. Yeah, your prediction? Yeah. Obviously being 7th place there, not doing terribly. स्पॉन्सर फोन में खेलते हैं तो फिर कंट्रोल मिस्टेक नहीं होता क्या? होता है भाई। अब तुम देखो, ये तो चलो नॉर्मल प्लेयर की बात कर रहे हो, अभी जैसे बीजीएमआई से बंदे पबजी मोबाइल में गए हैं,
भाई कंट्रोल कोड कॉपी नहीं होता बीजीएमआई से पबजी में, तो उनको तो और ज्यादा दिक्कत हुई होगी, उनको तो पूरा जीरो से लगाना पड़ा होगा कंट्रोल कोड। तो होती है दिक्कतें तो यार, क्या करें। I find interesting. That was actually the one that happened last game that eventually was won by Ulf. And I feel like what happened with Team Flash, they got caught off guard and they didn't find a good way to get themselves back up on their 2 feet and get ready for the fight, which under pressure, that is what you need to be able to do. Flash is a great team, right? If they take a fight they're ready for, when they're not ready for it, they just tend to crumble a little bit. So I don't think it's a gameplay issue per se. I feel like it's more of a mindset issue that Flash need to try and resolve. Yes, we're looking at the second page here. I'm also going to be looking at Horror Esports, Neptura. This squad, I mean, they have the fan base here. They have the support from the fans. But right now, in the second page, knowing Horror Esports, they're not going to be happy with this performance. No, they're not. And I think it's a bit of an odd one, right? Because I think it's hard to say, like Max, right? It's hard to pinpoint what exactly is going on with them. But typically, this is a team that likes to play edge, likes to survive, likes to wait until the last few phases of the game to really start spreading out and taking third-party opportunities. They're very good at those third parties, and we're just not seeing that from them. They try sort of half-heartedly making good on some of these plays, but they get overthrown very, very quickly by these more aggressive players and more aggressive teams, and so they just seem to be a little bit too passive. I know Hora tends to be called passive a little bit more, but this is not a passive team when it comes to those fights, and except for today it just kind of feels like that's what they're the name that they're living up to, unfortunately. डिवाइस सेम है तो सेंसी सेम होगी सब प्लेयर्स की। हाँ, सबको सेम डिवाइस पे खेलना पड़ता है, पर हर कोई अलग सेंसी पे खेलता है, पता है? I think they started out incredibly strong, but it seems like obviously coming into these later matches and everybody's reading the zones a little bit better in these positionings, they are getting caught out on that. So I do agree with you in that sense. But look, it's just kind of that balance of mentality that they're sort of struggling later in these matches, but I feel like even though it's just today, I feel like tomorrow it's going to be like a little bit of a different scene from them in the start. I do believe so. I do believe they have it. They got the fans to back them up, of course. I'm backing them up. Maybe not for the rest of today, but tomorrow. I was about to say, you're giving them a break until tomorrow. No, these fans, I want to see it. They want to see it coming up in Miramar. I mean, yeah, the thing is, right, is that, okay, if you only had like your typical rule set, sure, fair enough. You can have one day off. We got Smash ruling. You might just have only 2 games there on that day 3, and you just don't know how it's going to go. If it happens, LAN food issue. अच्छा LAN इवेंट पे हो रहा है कुछ food issue. 5 teams in the Smash zone at the same time. Eventually, Nongshim Red Force इसीलिए break हो रहा है. Stealing it away from Furia. Azan plays, thank you so much for jamming यार. क्या बात है? Guys, आप लोगों के पास भी अगर ज्वेल्स वगैरह हैं तो सेंड करो यार अपने भाई को. ज्वेल्स वगैरह भेजो यार. It might be impossible to come back from in that final day. Oh, exactly. And there's your point So brings Paris में हुआ है teams to mind for me. The first one we've already talked about, Aurora. I said that they typically are ये खबर कहाँ से मिल गई भाई तुम्हें? Which makes things very complicated when you get to that Smash. मुझे तो नहीं पता ये पता चली बात. What day 3, right? The other one is for Thrives because again they do very well. ये food issue वाली बात कहाँ से पता चली? कहाँ आई है ये news? अभी हुआ है कुछ issue. Significantly, and then they can bring it back up on day 3 again. Love from Uttarakhand, Bixi bhai, love you too, मेरे भाई, love you too. Where day 3 is really non-existent. So for those 2 teams in particular, that's really scary thought. Yeah, day 3 will still happen, but depending on how the leaderboard is looking and depending on what other teams end up doing, we could end up just seeing 2 games because Smash Rule is in effect. So just to remind everybody, the way that ends up working out is when we end up going to Smash Rule on the last day, whoever's in first place on the previous day, you get plus 10 points if I'm not mistaken, and then that becomes what we like to call the Smash Zone. Once a team is able to pass that threshold, in the next game, if they do end up winning, or whichever game after that, if they do end up winning, they would end up winning via Smash Rule. And this is something that we kind of be, you were especially कैसे हो brother? मैं बिल्कुल बढ़िया भाई. Because it could come into play. If a team is too far ahead, I mean, they, especially with Rondo starting off as well, it could be an easy 10 points for that squad. And later on, we can see teams just readjusting their playing style because all they have to do is just win, baby. But it also adds so much pressure. Yes. Right? We do have to highlight it. I mean, I want to take you guys back to PMWC Season 1, Jakarta, right, in Indonesia. 4 Thrives. What was it? 50+ point lead after day 1. Like something crazy like that. They just destroyed everyone in those 6 games. And then comes over day 2. They're like, oh, wait a minute. We try and get into the Smash Zone. They get in the Smash Zone very early. Pressure gets to them. Ulf is like, oh, you're crumbling. You're having a bad time. And they catch back up to that team and almost take it away in that last Miramar. But luckily enough, 4 Thrives do maintain that top position. But कितनी देर में start हो रहा है फिर ये Smash मैच ruling अभी? is a blessing and a curse based on how you approach it. And for 4 Thrives, ज़्यादा ही time ले रहा है यार. into the Smash Room once again. How are they going to perform? Because
back in that last event, it was looking shaky. Azan, please, thank you so much for finger heart, यार क्या बात है? Here back to back. Yeah, that team, they ended up pretty much just showing us what we have seen in भाई the past. एक काम करते हैं फिर गाइस, तुम लोग को कंपेटिटिव वाली वीडियो देखनी थी ना मेरी, वही चला दूं फिर तब तक, क्या बोलते हो चैट? मेरी कॉम्पी वाली वीडियो अगर आपको देखनी है तो मेरे को बताओ जल्दी से, तब तक मैं वो चला देता हूं। अजान प्लेस, थैंक यू सो मच फॉर जैमिन यार, क्या बात है। मान्या की तबीयत खराब हो गया बिक्सी भाई, ओके ओके ओके, चलो फिर तुम्हारे भाई के कॉम्पी के क्लचेस दिखाता हूं तब तक, ठीक है? अभी देखो कॉम्पी के क्लचेस, ठीक है? ये पिछले साल की ही है, ये ज्यादा पुराना नहीं है ये। सो गाइस, पिछले काफी टाइम से आप लोगों की मेरे पास बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि बिक्सी भाई ई स्पोर्ट्स भी खेला करो, तो खेलने में तो मजा आएगा ही, साथ 600। तो अभी फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो मैं कूदा था फाइनान में और यहाँ पे मेरे साथ एक और स्क्वाड कूदी थी, तो यहाँ पर ना मैं लूट वगैरह कर ही रहा था, पर तभी बंदे मेरे पे सीधा रश कर देते हैं। और भाई अभी देखना यहाँ पे क्या ही गलत सीन होने वाला है। ये मोमेंट मेरे को याद है भाई, अभी देखना क्या होगा। पूरी स्क्वाड पुश करती है मेरे पे, तेरी ले गया। ओए भयंकर, देखो क्या मारा वे इन लोगों को। देखो अभी देखो, वापस से देखो, अभी एक बंदा राइट से पुश करता है और दो बंदे नीचे लेफ्ट से पुश करते हैं। ये लोग भाई बहुत तगड़ा खेल रहे थे, पूरा स्ट्रेटेजी लगा रहे थे कि एक ऊपर से आएगा, दो नीचे से आएंगे, समझ रहे हो? ये देखो कैसे मारा भाई 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 भाई, देख रहे हो? गन पावर तो है भाई तुम्हारे भाई का। नाइस, कितना मारा? मैं पहले डैमेज टारगेट पीछे आया। और भाई मरने के बाद रिएक्शन सुन रहे हो एनिमीज का। खैर गाइस, एनिमीज भी पता नहीं कुछ तो हैकर है, फाइट होने वाली है। मेरा मार की मेरे को सामने बंदा मेरे पे नेड कर रहा था, तो रश करना पड़ता है इस पे। नेड आया, जैसे ही घर के अंदर कवर में जाता हूं, ये लोग मेरे पे सीधा रश कर देते हैं। ओह ओह ओह, 1 HP, चार उधर चला गया वो। मिड एचपी नहीं है यार, चार हो गए। गए। भाई इस वाले क्लच के लिए एक लाइक तो बनता है। आज की वीडियो का लाइक एम रखता है 40,000 लाइक्स का। अभी गाइस, जो मैं ये वाला मैच खेल रहा था, इसमें मेरे 2 टीममेट्स मैच में एंटर ही नहीं हो पाते, उनका कुछ ग्लिच हो गया था, रूम से एग्जिट हो गया था। तो भाई इसमें मैं डुओ स्क्वाड ही खेल रहा था एक तरीके से। 4 बंदों में पुश कर दिया क्या मैंने? बंदा नीचे जंप कर जाता है और उसके टीममेट्स भी गाड़ी लेके पहुंच जाते हैं यहाँ पे। तो ऊपर जाता हूँ कवर में, और तभी ये लोग नेड्स की बारिश शुरू कर देते हैं। ओ, ये वाली फाइट मुझे याद है। यहाँ पे मेरा टीममेट नॉक खाया गया था। 1v4 की सिचुएशन हो जाती है। ओह, दो बढ़ गए। ओह, भाई बहुत लंबी फाइट चली थी सर, मुझे याद है। ओ, 1 HP। अब 3 बंदे तो मैंने इनके मार दिए थे, पर यहाँ पर मैं 1 HP हो गया था और मुझे यहाँ पे हील करना था, लेकिन इनका आखिरी बंदा रश करने के मूड में था। गन भी रिलोड नहीं है। S12 की मिली। भाई कुछ ज्यादा ही लंबी फाइट चल रही है, ज्यादा इंटेंस होती है। इस बंदे से मेरी यहाँ पे बहुत ही लंबी फाइट खिंचती है, क्योंकि ये बंदा बहुत अच्छा खेला था। एट द एंड भाई तुमने नोटिस किया, तुमने यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा आगे को जाता हूँ, ठीक है, और फिर मैं यहाँ खड़े हो जाता हूँ। अब बंदा जैसे ही सोचता है कि मैं एक जगह बैठ गया हूँ, मे बी मैं कुछ हील करूँ, कुछ भी करूँ, बंदे ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं 2 सेकंड रुका और सीधा जंप किया मैं। ये टेक्निक होती है ब्रो, ये छोटी छोटी टेक्निक ई स्पोर्ट्स में काम आती है भाई।
और मेरे को याद है जब मैंने क्लच मारा था ना और मैंने जब ये वीडियो डाली थी तो यहाँ पे तो नाम गायब है, पर जब बंदों को पता था कि जब बंदों को मेरी वीडियो से पता चला कि ये मैं था तो बंदों ने मेरे को इंस्टा पे अपना पीओवी भी भेजा था। कॉम्पी के बाद मैंने भाई ये कॉम्पी को क्लासिक क्यों बना रहे हो भाई? बहुत गंदा मारा था। इसके बाद अच्छा आगे भी कंटिन्यू है। ओ अभी कुछ देर बाद सामने वाले बंदों के ऊपर से जोन हट जाता है एंड देन वो लोग मेरे पे सीधा रश कर देते हैं। तो सबसे पहले मैच चल गया क्या? ये मैच देख लेते हैं। नहीं चला ना, चेक कर लेते हैं। नहीं चला, चलो देखते हैं आराम से। कॉम्पी की वीडियो देखते हैं भाई तुम्हारे भाई की। मैं भी जोन के बाहर था तो फटाफट से नीचे आके स्मोक्स करता हूँ। ओ पुश आ गया। जोन देखो कितना छोटा है। ओए क्या नॉक था ये? क्या नॉक दिया मैंने? अबे ये क्या नॉक दिया था मैंने इधर? ये देख, वो बंदे को देख, समझ ही नहीं आया कहां से उड़ी उसको। ठीक है ये देख। ओए भाई, ओए बैंकर क्रेजी नॉक था। हेड आया ये कैसे? ओए 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 लेफ्ट से उड़ी। ये सोलो चिकन आएगा क्या इधर? नेड रुकी नहीं। हिल करने की कोशिश करता हूँ लेकिन लास्ट बंदा रश कर देता है मेरे पे। ओ चिकन नहीं हुआ, सॉरी। अच्छा ये भी आया, इसको भी मारा। तो अभी चलते हैं अपनी अगली फाइट पे। तो उसके बाद आई गेस मर गया था मैं जोन में। यहाँ पे मैं जोन का सर्कल होल्ड करने की कोशिश करता हूँ, तभी यहाँ पर एक पूरी की पूरी स्क्वाड आके हम लोगों पे रश कर देती। अबे शैनोक होता था यार पहले, कितना मजा आता था भाई शैनोक में खेलने में यार। ई स्पोर्ट्स से पहले शैनोक हुआ करता था। ओ और इसी के साथ लास्ट वाले बंदे का भी खेल खत्म कर देता हूं। तो गाइस अपनी अगली फाइट होने वाली है मेरा मार की। तो मैं इधर सारे ओजी मैप्स पता नहीं लोग खेलते ही नहीं। हां यार शैनोक, वीकेंडी। हां वीकेंडी में कितना मजा आता था भाई। वीकेंडी तो भाई तो खेलता ही नहीं भाई। अमील कर रहे जा रहा है, पहले आगे जा। अभी जैसे इनको मारता हूँ जोन काफी छोटा हो चुका था तो मैं निकल जाता हूँ सीधा जोन की तरफ। और भाई चल गए यहाँ पे मैं अकेला बचा था। क्लच आ रहा है क्या? तो मैं जस्ट अभी यहाँ पे लैंड होता हूँ फाइनान में और यहाँ पर एक पूरी की पूरी स्क्वाड आई हुई थी। तो मैं इधर आता हूँ लूटने के लिए, पर तभी बंदों के फुटस्टेप आते हैं। भाई नेड मुंह पे करा था उसने, अच्छा हुआ हट गया मैं। कब स्टार्ट होगी मैच? हो जाएगी थोड़ी देर में हो जाएगी। एंड गाइस जल्दी से कमेंट करके बताओ कि मेरे नए वाले एक सूट का किल फीड कैसा लग रहा है आप लोगों को। खैर यहाँ पे 2 बंदे मार देता हूँ, इनके बाकी बंदे पानी के उस पार थे। तो मैं पानी में स्मोक करके अपने टीममेट को बोलता हूँ आगे जाने के लिए। और अब सीधा रश कर देता हूँ बंदों पे। भाई देख रहे हो ऐसे फ्री फायर मारना पड़ता है स्मोक के अंदर से ही। अब बचता है इन लोगों का आखिरी बंदा, तो उस पे भी सीधा रश कर देते हैं। ओह ये भी हुआ था। क्या क्लीन स्प्रे था ना। कब की वीडियो है ये? पिछले साल की है। मैं ई स्पोर्ट्स खेला था उसमें। अब मुझे लगता है मैंने 3 नॉक कर दिए और आखिरी बचा है।
लेकिन भाई इनका चौथा बंदा जिंदा था। खैर यहाँ पे उसको मेरा टीममेट मार देता है और यहाँ पे मेरा 1v3 हो जाता है। खैर अभी यहाँ पे जस्ट लैंड हुआ था हासियांडा में और यहाँ पे एक स्क्वाड आई थी। ये वाला मैच मैं एनोनी के साथ खेल रहा हूँ। सामने पड़ी हुई थी M4, तो चलते हैं बंदों को पेलने। भाई फंस गए यार हम एनोनी। भाई कुछ ज्यादा ही लेट नहीं हो रहा है, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ यार। कुछ लगता है इशू आ गया है, क्या पता। गेमिंग बोलते वाइटी वाला हट जा। हट गया। अब मैं सीधा सामने बंदों पे रश नहीं करता, मैं थोड़ा सा घूम के आता हूँ ताकि बंदा फुटस्टेप में कंफ्यूज हो जाए। साथ में चले जाओ इसके। ये उधर टीवी भी लेकर आएगा, उसको लगा उधर से आऊंगा मैं। ओह 1-4। अभी सामने से मुझे बंदों की गाड़ी का साउंड आता है। अब प्यार है। और भाई अभी देखना कितना खतरनाक बेट करने वाला इस बंदे को। मेरे पास नेट नहीं था तो स्मोक पिन करता हूँ। पकड़ा गया। मजा आ गया बे। अरे क्या बकचोदी है। मुझे लगा बचते हैं लोग आखिरी बंदा, तो सीधा रश कर देता हूँ। बिग फैन बिक्सी भाई, लव यू ब्रदर, लव यू टू मेरे भाई, लव यू टू। लेफ्ट वाले पेड़ पे है पृथ्वीराज भाई, लव यू तो टू। गाइस अभी ये वाला होने वाला है पूरा फुल गेम प्ले। तो मैं जस्ट अभी यहाँ पे लैंड करता हूँ और उसके बाद जोन की तरफ को निकल जाते हैं पैराडाइज की तरफ से होते हुए। तो यहाँ पे भाई एक बंदा था सोर्ड ओपी नाम से, वो खेलता था लाइव पे। वो कहाँ है? सोर्ड ओपी जैक गेमिंग है ब्रो, जैक गेमिंग का पहला नाम था सोर्ड ओपी। और अभी उसकी जॉब लग गई है तो वो जॉब ही कर रहा है यार। में एक स्क्वाड होती है। हाँ क्या करेगा, इस करना पड़ता है यार मजबूरी में। चलो एक था राइट से प्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पर मैं अपने टीममेट्स को बोलता हूँ कि भाई रुक जाओ, मैं एक नेड कर रहा हूँ, पर एक टीममेट घुस जाता है पता नहीं क्यों। यहाँ पर मैं इनके 3 बंदे नॉक कर देता हूँ। इनके लास्ट वो बहुत एंटरटेनिंग था यार। हाँ था तो बढ़िया बंदा था यार। सीधा जोन की तरफ। हाँ क्या मतलब है यार, अभी भी है वो बंदा, पर वो गेम नहीं खेलता बस। अभी डिस्कॉर्ड बुलाता मैं उसको, अभी वो जॉब पे होगा अभी। अब यहाँ पर हम बहुत ही गलत जगह फंस चुके थे, तो यहाँ पर फटाफट से मैं अपने टीममेट को रिवाइव देता हूँ। गाड़ी पे स्मोक करके सीधा हम लोग निकल जाते हैं जोन की तरफ। अबे ये गाड़ी मार कसम भाई, हट आराम से। ये बंदा रह जा, आवाज ही नहीं आ रही मेरे को। तगड़ी लोबी है भाई, तगड़ी लोबी है। आगे खतरा। ओह कॉम्पी में तो शॉटगन ही चलानी पड़ती है। गाड़ी ले और मेरे पे यहाँ पे एक फ्री किल है। मेरी सारी टीम नॉक पड़ी है, अकेला बचा। अब यहाँ पर जोन काफी छोटा हो चुका था और अभी भी 31 बंदे अलाइव थे इस छोटे से जोन में। तो फटाफट से पहले अपने टीममेट्स को यहाँ पे हाथ लगाता हूँ और उसके बाद जोन हमारे ऊपर से भी हट जाता है। तो निकलते हैं जोन की तरफ। एक बंदा थोड़ा आगे चले जाओ ना। जाओ आगे चले जाओ। स्पीड ब्रेक से जैसे तो नहीं आएंगे लोग। आएंगे। ओ पड़ी पीछे से। अब यहाँ पर मैं रिवाइव तो हो जाता हूँ, लेकिन भाई यहाँ पे समय के साथ साथ जोन छोटे होते जा रहा था और बहुत सारी टीम्स अभी जिंदा थी जोन में। तो यहाँ पे थोड़ी सी किल्स निकालने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट हुआ है नहीं, अभी नहीं हुआ स्टार्ट मैच, अभी नहीं हुआ। लेफ्ट से किल हो रहे मैंने, सॉरी राइट से। अपने को मेरे पे जोन है, ठीक है मेरे पे जोन है, पहले उसको मारना है। बढ़िया गाइस 2 बंदे यहाँ पे मैंने नॉक कर दिए थे, बट अनफॉर्चुनेटली उनको मैं फिनिश नहीं कर पाता हूँ और उनके किल मुझे नहीं मिलते और जोन भी अपने ऊपर से हट चुका था। और एक गाड़ी के स्मोक के अंदर से मार रहा हूँ। हेलमेट भी नहीं है यार। देखो राइट देख, जो ना टच हो गई उससे वेस्ट है तो हील बटन। 20 आउट ऑफ 64 प्लेयर्स गॉट फूड पॉइजन। अरे यार क्या करें। पता है जब मैं अभी उधर था ना, पता है जब खारगर में था उधर मुझे भी थोड़ा हेल्थ इशू हो रहा था। पता नहीं कैसे उधर का पानी का दिक्कत था क्या था, मेरे को हेल्थ इशू हो रही थी तो मैं इसीलिए घर आ गया।
मैं काफी टाइम से उधर बीमार था मैं, तो क्या करें यार। ये न्यूज़ कहाँ से इसको पता पड़ा है, मतलब कहाँ बंदे दिख कह रहा रहे हैं लोल्स की स्ट्रीम से पता चला। अभी पेरिस में भी बंदों को 20 बंदों को हो गया, बताओ यार 20 बंदे। प्लेयर्स को? हाँ प्लेयर्स को फूड पॉइजन हो गया है, ऐसे बंदे बता रहे चैट में। किसकी लोल्स की स्ट्रीम से पता चला? कहाँ से पता चला आप लोगों को? स्ट्रीम से उसकी तो नहीं पता चला होगा यार, क्योंकि स्ट्रीम तो वो भी वही कर देख रहा था जो हम देख रहे हैं। कहाँ से पता चला? ऑफिशियल्स के उधर से पता चला गया। Probably would have got crushed anyway. थे अपने ये हिंदी वाले को पता चल रहा है। जी हाँ। बहुत अच्छा स्नैक्स उधर ही है ना, तभी। देखिए मैं पहले भी जीत चुका हूँ उन लोगों से, और शायद वो स्पीड हुई थे जिससे मैं जीता था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। एक बार हम गए थे। तो अभी मैचेस होंगे कि नहीं होंगे? अभी मैचेस होंगे कि नहीं होंगे? फूड पॉइजन ही हुआ है चैट में बोलते हैं। मैच फिर क्या सीन है? पोस्टपोन्ड होगा क्या? किधर से? पता अचानक से फूड पॉइजनिंग हो गई क्या? अचानक से मैच कैंसिल नहीं हुआ है अभी। अभी तो फूड पॉइजन में कैसे खेलेंगे वो लोग? मैंने स्मोक पाथ बना दिया, ठीक है। इतना डिलेड क्यों है? अभी फूड पॉइजन हो गया उधर बंदों को, मैच कैंसिल हो गया। सेकंड मैच 8:30 पे स्टार्ट है, 10 मिनट बाद। दे कोई कह रहा है कैंसिल हो गया है, कोई कह रहा है 8:30 पे होगा। वो बाहर गया, एक जोन के बाहर है, ठीक है। ओह मैं जोन में हूँ। विस्की तो राइट देख, बेटा है बंदा। अबे कौन है ये भयंकर? विस्की बोल रहा है, इसने क्या बोला मेरे को? टीममेट अबे नशे में है क्या टीममेट? विस्की तो राइट। अबे विस्की बोल रहा है मेरे को वो, भयंकर। बेटा है बंदा। एक और अंदर मार दिया मैंने। नेट मार रहा हूँ। और इसी के साथ यहाँ पे अपना हो जाता है चिकन डिनर। और गाइस इसके आगे एक और फुल गेम प्ले रहने वाला है अपना मीरामार का, जो कि मैं आगे तुम्हें दिखा दूंगा। बट उससे पहले कुछ और क्लिप्स देखो तुम लोग। At a global event, especially in finals, and well, during group stages, it ended up happening. But maturity out of that player for S-Power saying we don't want to continue with the hot drops. We want to stop that. We see that it's going to end up hurting. मान्य को भी इशू हुआ है, उसकी जगह गोड्स खेलेगा। I want you to put your mindset into a coach right now. Into the biggest hype coach for some of their squads. Godlike and Hora, which team are you going to be picking, and what are you going to be telling them if they do decide to hot drop or if they don't decide to hot drop? Just get it together, man. No. Look, godlike, and because we were just saying as power, their adaptation to each and every game deserves to get a little bit further, and I just hope that you guys can find that great little key that you need to be able to push through into those final zones and capitalize on those eliminations. They have it in them. You've got it in you, and I believe that you will be able to do that. Obviously, we may need a little bit more time to sort of get 20 बंदों से ज्यादा पॉइजनिंग हुआ है बिक्सी भाई। मतलब अचानक से हो गया क्या? अचानक से बोल रहा है कि अगर आज मतलब रिस्पॉन्ड होता है तो कल 8 मैचेस होंगे ऐसा। So look, I think they can do it. Yeah, especially for both teams being in the second page. You want to be able to build up the momentum. We've seen some teams being able to build up momentum and just carry it on. अचानक से कैसे? Only 3 days here at PMWC at EWC 26 the finals. We've been सब एक साथ कैसे हो गया भाई? over and over again. अचानक से। Then I want to see what hot juice. मतलब या तो फिर स्टार्टिंग से ही मतलब मैच 1 से ही वो थोड़ा लो फील कर रहे होंगे ना। ये तो गलत है भाई। अब जैसे आधे प्लेयर्स को वो सही से फुल पोटेंशियल से खेल ही नहीं पाएंगे जो उनको फूड पॉइजन हो गया। तो honestly in Paris, very fun. I mean, we're here right now in the players lounge, which is honestly ginormous. I think the first place we saw when we came in. I'm trying to hit some trickies right now, but it ain't happening. Also, I just want to let everyone know that I play pool, but I don't really. I play snooker, so this is very different for me. It's not the same thing. Not the same thing at all. Matter of fact, I've never even seen a snooker table in real life.
This is the बिक्सी भाई game to ट्रस्ट play. There was only one scene भाई in the ये game. सब मत करो भाई, आईडी के चक्कर में मत Okay, पड़ो what are भाई. you thinking? What are you thinking? मैं ऐसे कुछ रिकमेंड नहीं करूंगा और ना ही मैं ऐसे जानता हूँ किसी Looking to take the को. shot. आप लोगों के Will he साथ hit the किसी strike? ने कुछ कर दिया तो भाई मेरे को बुरा लगेगा Shot, फिर ना, there we go. तो इसलिए मैं नहीं प्रमोट करता Figured out here. आईडी वगैरह का. Okay. So you thought about the tournament It so is far? I mean, it is for me, illegal. the tournament's been great. You should I've really enjoyed it. not It's buy been ID and all. insane. There's been some crazy अगर कर रहे हो moments. तो That's a फिर good भाई shot. अपने It's रिस्क a पे good करो, shot मेरे से too. मत पूछो भाई. Fourth Thrives look fantastic. I mean, Orangutan, Godlike coming in over towards that top 5 is just some crazy stuff. Couldn't believe it. I think everyone I've talked to whilst they're being here saying they're having a really good time. Again, everyone's really taken care of here as well. Plenty of stuff that we're taking advantage of as well. Honestly, that's the big thing. Like, we're having actually kind of a pretty damn good time here. All right. Yeah, we got 3 games in. I do watch the other ones, but afterwards I like to come chill. मैच होगा कि नहीं होगा? A lovely spot. This place is stupid, to be honest. It's भाई ridiculous. लग तो नहीं रहा होगा. The by far some of the best food I've ever had at an event ever. And this place really does have it all, dude, right? I mean, like every game you can imagine. Manicurists on stage, and dude, that lady's insane. Like, I've seen some of the girls walking out of there, and now she's like booked out for 2 weeks, which is wild. But I might even get a haircut in a second. I love it. I love it here. We're so hyped about you taking the mic back off me as well. Yeah, I know. I'm about to get a manicure, dude. I'm getting ready. I'm getting ready for mine. Yeah. But overall, genuinely, the PUBG Mobile is all, I think PUBG क्या हो गया है Mobile भाई, मैं अभी आया हूँ. might be the greatest event at EWC. अरे अभी PMWC, फूड पॉइजन हो गया है EWC, वहाँ so पे कुछ good. प्लेयर्स को. We're कुछ biased नहीं as मतलब hell बहुत about प्लेयर्स that, को हो गया है. But we do get like 2 good कितने weeks प्लेयर्स out को हुआ here है? Around to enjoy the 20 vibe. plus. You know, it's been in Riyadh quite a few other times. फूड but पॉइजन even मींस there, it's been फूड very, very पॉइजन fun मतलब coming नहीं to पता Paris. तुम्हें? For me, सर्च करो, Paris गूगल is करो, good गूगल करो. because it's a 1-hour flight as opposed to an 18. But I'll still take the 18 to go to Riyadh. Very, very good time. But it does mean I don't have to किसी go को to कुछ Saudi. नहीं हुआ है Also, भाई, झूठ है my ये. back is not अच्छा ruined. ऐसा है. Yeah, I'm in the same dang boat. I mean, when I heard that there was massage therapists news है. actually available, I was like, please, where पता नहीं भाई, मेरे को नहीं पता, मैं कुछ नहीं बोल was a सकता भाई. whole lot longer than कंफर्म that. नहीं है. कुछ लोग But कह रहे yeah, हैं man, हुआ so है, far कुछ लोग this कह has रहे हैं just नहीं been हुआ a है. crazy journey. And the survival stage just finished. It was tough. हाँ पता पड़ गया क्या रीजन है. मतलब 4-5 20 लोगों का तबीयत तो नहीं खराब है, बट लेकिन 4-5 लोगों का सीन हो रखा है, तबीयत थोड़ा सा डाउन है. बाकी कोई और ही रीजन है कि इसका डिले होने का, कोई और रीजन है. अच्छा. हाँ कोई और रीजन है, ये रीजन नहीं है. I saw him shoot 2 different color balls. He really does play snooker here, folks. भाई तो अच्छा खेल रहा है यार स्नूकर. That was close. That was close. I like it. Look, I'm just hitting balls in holes right now. Okay, I'm playing the equivalent of golf, just with a long stick. I hope that's fine with you, dude. I don't know the rules. Tell me the rules. Right? That's fine. I got you, bro. ओह अच्छा खेल रहे लोग तो यार. Yeah, I heard you like stop. I heard you stop. You kind of confused what was going on. That's fine. Yeah. So you're solids, I'm stripes. Is that how that works? Or the numbers? I just know. I just go for colors. That's where I'm from. It's just colors. It's so much easier. Black goes in last. Boom. It's easy. That's all I need. So I'm stripes. Okay. Okay, he's locked in now. Okay, but what's one thing that you IDA really need to make post. sure whenever you're playing any game is understanding the rules, right? But देख even रहा if हूँ. you don't understand the rules, sometimes you just send it, baby, right? You just put it in the work, and you might come out on top. Like, ah. अच्छा हाँ इसने आईडीए में That's what I'm talking आईडीए ने पोस्ट में about. डाला You see हुआ what है I'm कि एक प्लेयर है उसको हुआ है You, I like it though. You know what I'm तो saying? उसकी जगह पे दूसरा प्लेयर खेलेगा. उसने एक प्लेयर का बोला है ना, अभी पता चल रहा है कि Yeah, बहुत सारे sometimes you लोगों को help हुआ other है. teams. That's kind of rough. Okay, I respect it. Sometimes you gotta make some difficult shots in your life. I trust you. It's a long reach. It was close though. It was that. I thought you were gonna really ruin that. I thought you ruined that. Here, like, tell me something. 4 thrives, overrated or not? Hell no, dude. Thor Thrives is insane. I mean, they are coming in champions of PMGO Season 1.
I didn't think we were going to see a Pakistani team be our champs, not this soon. And this guy's giving me a chance. I really, really appreciate it. And hopefully, start कर दो try to भाई. give some of these guys a chance, because in Group A, these guys look like they were unstoppable. They look really good. I mean, they were beat out points-wise by Vitality. कद्दू कोई हैकर पकड़ा हुआ होगा. भाई मुझे थोड़ा एक बात बताओ, तुम कमेंट करने से पहले थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करते हो. वो अपना पर्सनल फोन लेके नहीं गए वहाँ पे. वो लैन इवेंट है ब्रो. वहाँ पे डिवाइस खुद दिया जाता है. Oh, almost. But yeah, big return for Indonesia. It like feels like the spiritual success. लैन इवेंट में कौन करेगा भाई चीटिंग? There's no BTR pranks happening, no jokes, just gameplay. Just gameplay indeed, dude. The whole Vitality Day was absolutely insane. I just kept on talking to some of these dudes backstage, and I was like, guys, what do you think about? फूड पॉइजन हुआ है, कंफर्म हुआ. हो रहा प्लेयर नो फियर वॉमिट कर दिया स्टेज पे. अरे भयंकर. And it was like filled in by any word you could possibly imagine. ओह क्या शॉट मारा है. That's what I'm talking about. That was good. That was good. I like it. Bixi भाई ऑफिशियली मैच कल होंगे ना मतलब. Let's see how this one goes for blank. मानियो मिट के चलो फिर गाइस एक काम करते हैं. You know what, dude? That's the I one guess thing about I love about PUBG. कल ही होगा ना. Sometimes you get put in some beautiful situations, but the कल ही best करते हैं teams फिर ना always स्ट्रीम. find themselves a way out. I mean, AJL is a good example of that. They got themselves in a real good situation. I mean, top चलो team guys. Yammer going for the crown, and मिलते हैं अगली स्ट्रीम पे. honestly, they completely flubbed it. That was a love.